इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था। ना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज अगली गेंद फुल टॉस पुल किया इस वक्त लंगोल पर और गेंद लंगोल सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। तो किरण जो बल्लेबाज थे, फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस गेंद को डिस्पैच करने में असफल, ऐसा कहना पड़ेगा। नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद में इतना पर्याप्त दम भी नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और लंगोल सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर गेंद की ताक में खड़े हुए थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ किरण का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। किरण कोडिकल आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 9 रनों के योग पर यहाँ पर मास्टर बैटर्स का। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 MPL 2022 के नाम पर यहाँ पर खेला जाता हुआ। सुबह का वक्त 10:15 यहाँ पर बचते हुए धूप धीरे धीरे अपना कहर यहाँ पर ढाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि मैदान पर कई मात्रा में दर्शक इस वक्त मौजूद है, वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाज दाईना तो बढ़ता विकेट फुल टॉस, गेंद को इस वक्त स्वीप किया खूबसूरती के साथ, पैडलिंग स्वीप और गेंद इस वक्त पहुंची है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर जब तक गेंद को रोके, लंबे दौड़ के बाद तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और तीसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाला था स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से और लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को रोके फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. 7 runs scored in this over. 7 रन इस ओवर में बने और 2 ओवर के बाद 2 पावर प्ले ओवर के खत्म होने के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मुंडाला मास्टर बैटर्स के बल्लेबाज सही राह को तलाशते हुए। तो इस वक्त सुपर किंग्स के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज यानी खुद कप्तान अश्विन इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए और नया ओवर यहां पर प्रारंभ करेंगे। और जहां तक सुपर किंग्स का सवाल है, पिछले रविवार को सिर्फ 1 मैच उन्होंने खेला था और उस 1 मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था। अगर सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से यहां पर बचे हुए 2 मैचेस को उन्हें जीतना होगा और यहाँ पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सुपर किंग्स के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अश्विन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट कर चुके हैं और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। स्क्वायर लेग मिड विकेट वाइड स्पीड ऑफ और पॉइंट इस वक्त मौजूद। ओवर की पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों से मिस फील्ड होते हुए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 22 का इशारा अंपायर का, 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और एक बार फिर से अश्विन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में हर गेंद के साथ इस वक्त फील्डिंग में वो जमावट करते हुए वो जानते हैं इस वक्त उन्हें रन से रोकने हैं और विकेटें उखाड़ने हैं और उसकी पूरी कोशिश यहाँ पर इस वक्त गेंदबाज करते हुए दाईना तो ऊपर द विकेट इस बार अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना था प्लम, एब्सोल्युटली प्लम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो बिल्कुल सही निर्णय अंपायर हरीश पटेल ने इस गेंद पर दिया था। गेंद लाइन पर टिप्पा खाए, मच स्ट्रेटर लाइन, मिडिल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कराती हुई गेंद और इस गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बैकलेग पर गेंद टकराई और शक की कोई गुंजाइश नहीं थी अंपायर को आउट देने से। तो इस बार यह विकेट गिर चुका है और लेग बिफोर विकेट पगबाधा के रूप में विकेट गिर चुका। 13 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है। मुंडाला मास्टर बैटर्स इस वक्त कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ।
तो नए बल्लेबाज द नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल फॉर मास्टर बैटर्स। और जहां तक मास्टर बैटर्स के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप। अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। और जहां तक सवाल है इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों का, तो एक साझेदारी निभाने की इस वक्त पूरी कोशिश में। और अश्विन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया। विकेट कीपर चूके बल्लेबाज ने रन लेना चाहा, लेकिन सही तरीके से उन्हें वापस भेजा नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने। और स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अगली गेंद लेकर अश्विन दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि एक बार फिर से विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ अश्विन तमन्ना इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ और एक रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो में इतना दम नहीं कि वो बल्लेबाज से पहले स्ट्राइक एंड पर पहुंच सके, ऐसा कहना पड़ेगा। बल्लेबाज ने पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट। गेंद के घुमाव को भागते हुए गेंद को ऑन द स्पॉट इस वक्त पिक कर लिया था। ऑफ द टोस गेंद को स्कूप कर दिया डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान 2 रनों के लिए। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अश्विन ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड में सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी, लेकिन गेंद की उछाल को भागते हुए विद अ ट्विस्टेड बैट तिरछे बल्ले के सहारे गेंद को स्कूप कर दिया खाली क्षेत्र चुनते हुए। और कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं और गेंद आसानी के साथ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, हाफ द वे मार्क, आधा सफर तय हो चुका। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट स्कोर्ड बाय मास्टर बैटर्स। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। और 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि अगला ओवर यानी चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं अंग्रेजी में आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखाल चुराने के लिए माइक्रोफोन पर सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So 19 for the loss of 3 wicket. After that slow start and slowly and suddenly these two batsmen tried to get some runs on the board, especially that the previous over they got 7 runs and because of that they got now 6.33 runs per over. 19 for the loss of 3 wicket. Now Yatiraj brought into attacks, most experienced campaigner as far as Mundala Super Kings is concerned, as first ball of the over number 4. This time went for the reverse stroke, not quite getting that one right from the middle of the bat, and no bat involved. In fact, it's the leg of Nitin has got involved in that, so that umpire Roland Pinto and signals it's a leg by. One more addition, 20 for the loss of 3 wicket. Still, it's a condition looks to be not that much of a bright shiny out here in the morning. It's hide and seek is going on between the clouds and sun. And still it's a little bit cloudy weather condition. This time straight to the hands of short mid-off. The batsman tried to go over the top of that mid-off region, but not really getting that one right from the middle of the bat. The intention is to go over the top, but ball is just gone into the hands of that short mid-off fielder. The wicket number 4 is back into pavilion of Master Blasters. 20 for the loss of 4 wicket. Yatiraj strikes in his first over. Yatiraj. This time again looks to be wicket number 2 here. Yes, it does.
The fielder from deep long off now, I think is a good thinking from the point of view of the captaincy is concerned from Ashwin, seeing that now actually the previous delivery, the mid off inside the ring, and for this they put that fielder into back towards the long off. It's only the reason behind that. The batsman just came into middle, is too good in hitting the ball down to long off. So he's sending that fielder into long off, and he got the reward for that. This is what you're talking about, all about the captaincy. The captain is the one you need to know the what could be the what was the weak point, what was the strong point of the incoming batsmen. So as for that, they need to set a field for that. Even Yatiraj, I think so, he is the one. He's just suggesting the captain to I want one fielder from mid off to long off, and he got the wicket for that. Now is opportunity to pick the hat trick. There is one hat trick so far in this tournament. That is in the name of Yadnesh. And now golden opportunity for Yatiraj to pick the hat-trick, and all in sudden we can see that Ashwin tried to put some pressure onto the incoming batsman, putting some closing fielder to get that hat-trick wicket. Yatiraj this time down the leg stump, opportunity of run out in the non-striker's end, but not a good throw from the fielder. There's a golden opportunity for that fielder. I think is a brother of Yatiraj is standing out there in the short backward point region. He tried to return the ball towards a non-striker's end. By doing that, he's hitting the ball hard into the ground, and the batsman Avinash survives from that run out. 21 for the loss of 5 wicket. Yatiraj beautifully bowled. Nitin tried to break the shackle in the relegation. You know exactly this is a quiet over. He wanted one big stroke in this over, but Nitin need to see that they lost the wicket as well. The 21 for the loss of 5 wicket. Shuffled across the line of the delivery, and rightly so umpire called it a wild. Good throw! Oh, my goodness! Now umpire Roland Pinto have to see that towards the square leg umpire is walking to us, because you want to see whether the ball is hit directly or not, because Roland Pinto is not really having a good view of that throw. Yeah, because bowler coming right in front of umpire, even the batsman, so that Arish Padil, rightly so, it's gone. Direct hit. Absolutely fantastic piece of fielding there by the fieldsman. Beautiful throw. This is what we're talking about, the quality of umpiring. Once if you are not in a good, someone is coming in front of you, I think the square leg umpire always been a good view to see that whether, this is what you call the presence of mind from the umpires as well. Sometimes you need to see, if it is not your decision, but you have to see the what really happening in the non-strikers end. The Arish Padil has got a good view, good eye, observing that and saying to umpire, yes, ball is hit the stumps. It's a bails. So good over from Yatiraj. Excellent over. 2 wickets in that over. Altogether 3 wickets. 1 is run out. 2 in the account of Yatiraj. Magnificent over this comes to an end. After completion of over number 4, it's a 22 for the loss of 6 wicket. Still, Master Blasters are struggling in the middle against the disciplined bowling performance from Super King. So Super Kings really knows that the importance of this match. They lost their first match. And first day, and if they wanted to be in the competition, they need to open the accounts in the points table. Ashwin, the master class, and the magician came into middle and came into ball from the commentary box, and first ball a little bit down the leg stump, not that much of turn in that delivery. The batsman picked up a single in the form of leg by. 23 for the loss of 6 wicket. Now Ashwin, beautifully bowled again, the quicker delivery indeed, but ball definitely going down the leg stump again. Leg by call by umpire. One more addition to total 2 leg buys in that over. Whatever the runs are runs here for that team, batting team. Master Blasters going to enjoy.
especially in this over. This time, loud appeal for leg before wicket. Umpire Arish Padil says that ball is not little bit going down the leg stump, and leg by call by umpire. The might be it's not a leg cutter. It's a little bit straighter one, and ball is might be going to miss the leg stump a little bit, and benefit of the doubt is always going on to the batsman. Again, the leg cutter, bought that much of a big leg cutter where Ashwin is knowing for, because we can see that the hardness of the ball sometimes is difficult for the bowler to get some extra turn. Again, Ashwin bowls a quicker one, and wicketkeeper behind the stump. Anish fails to collect the ball. One more extra here, more than from the batter. Lot of extras in this over. Leg buys in this time by 2 leg buys and 1 by, 3 leg buys and 1 by. And 26 for the loss of 6 wickets in this over number 5 in progress. Ashwin, one over represents young friends Urwa, one of the top team as far as Underarm cricket is concerned. A beautifully balled Yorker line delivery outside the line of off stump. Over number 5 completed, and searching for the right track, still struggling in the middle. Master Blasters are 26 for the loss of 6 wicket. You are having a live telecast of this cricket tournament through Bedra Media, one of the most popular YouTube channels in cricket. Not only cricket, but all the weekend sports activities, sports and games. Even they are now entering into the world of kabaddi as well. Even for the volleyballs, kabaddi, the events, the Bedra Media, the leading from the front, having a lot of subscribers behind. Bedra Media, only reason behind that the quality is maintained by Bedra Media, getting that much of the fans, the followers and subscribers. 26 for the loss of 6 wickets from the far end. Praveen brought into attack. The last over, Praveen. Appeal for leg before wicket, pitching outside the line of leg stump. No question of leg before wicket, but question of leg by here. So with the addition of that single, scoreboard moves on to 27 for the loss of 6 wicket. Praveen went for the big shot, not quite able to get that one. This time good throw, absolutely great throw coming from Yatiraj from the deep mid-wicket region, and Praveen, just to see that where he was collecting the throw from Yatiraj is not really impressed with the bowlers, because if the batsman, if able to run a little bit hard enough, they can complete that couple of runs, because Praveen is not in their good position to collect the throw from Yatiraj. And he was not really behind the stumps, he's just collecting the throw in front of the stumps, but still he managed to get the wicket for this team. Went for the blind stroke, missed it completely. Excellent over there from Praveen. So far 28 for the loss of 7 wicket. Praveen again going for the big shot, not really able to get that one from the middle of the bat. Just a single. The captain Ashwin will not going to bother about that single. 29 for the loss of 7 wicket. Not a bad run in this condition. 30 is the good score. Praveen drives that one powerfully down to deep long on one bounce, collected by the fielder, and little bit fumble, giving opportunity for the batsman to come back for the second, and they completed easily in the end. 31 on the board for the Mundala Master Blasters are now scored 31 runs. The last delivery of their innings is coming up. Using his feet, bowled him, cleaned him up. So last delivery is a wicket here for Praveen, and 31 is the total score of Mundala Master Blasters, and they set a target of 32 to win this match for Mundala Super Kings. If this Mundala Super Kings so wanted to register their first win of this league matches, they have to get 32 runs.
Royal Army Mundala. Fifth match. Oh, Mundala challenges. So thank you very much. So Mundala master batters and mentioned about Mundala master batters scored 31 valuable runs and they set a target of 32 to win the match for Mundala. Super Kings, they have to get 32 to win this match. Wait and see the kind of reply coming from the batters of Super Kings, and before their innings will go into start, changing commentary box as well here. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 32 रनों का लक्ष्य इस वक्त सुपर किंग्स के लिए मास्टर बैटर्स ने रखा है और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है 6.40 रन प्रति ओवर की, माफ कीजिए 5.40 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं उन्हें 32 यानी 6 ओवर में 32 रन 5.34 रन प्रति ओवर के औसत से। और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो देखना यह है कि वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो जहां तक सुपर किंग्स का सवाल है, जो कि अपने पहले मैच को हारने के बाद इस लीग स्टेज में बचे हुए 2 मैचेस में विजय दर्ज करना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला पे अपना अस्तित्व बरकरार रखना है। तो देखते हैं इस मैच में वो क्या करते हैं। दाहिना तो ऊपर द विकेट, पहली गेंद ये गेंद इस पास करो, विकेट गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। यतिराज हालांकि अपना बल्ला बैट खो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन प्राप्त करने में वो सफल। और जहां तक का सवाल है स्कोर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, कुछ हद तक फिसल गए थे वहां पर, लेकिन दूसरा रन अपना प्राप्त करने में सफल। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है सुपर किंग्स का, तो ये दोनों सलामी बल्लेबाजों की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है लंबे समय के लिए। और खासकर जहां तक यतिराज का सवाल है, काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं, खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में वो माहिर हैं। और यहाँ पर देखना है कि उनकी उपस्थिति कितने देर तक यहाँ पर क्रीज में होती है, और ऐसा कहना पड़ेगा उनकी उपस्थिति जितनी ज़्यादा क्रीज पर होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनकी टीम सुपर किंग्स के लिए। दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाज की गेंद इस बार यतिराज के लिए उछाला एनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन वहां पर गेंद कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जैसा कि पिछले गेंद
इससे पहले मैंने फरमाया था कि यतिराज पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इनफील्ड क्लियर करते हुए उन्होंने गेंद को स्कूप कर दिया, लेफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए और पावर प्ले का फायदा उठाने में सफल इस गेंद पर। तो 2 गेंदें उनकी पारी में फेंकी जा चुकी है, 6 रन बन चुके हैं। यतिराज काफी हद तक आत्मविश्वास भरे यहाँ पर नजर आते हुए और अब बातचीत यहाँ पर चलते हुए मास्टर्स बैटर्स के खिलाड़ियों के बीच में गेंदबाज को टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए कि यतिराज को अगर आप गेंदबाजी करनी है पावर प्ले में तो किस तरीके की गेंदबाजी आपको करनी चाहिए, ये बात वो समझाते हुए इस वक्त गेंदबाज को, और गेंदबाज एक बार फिर से कुछ बातचीत के बाद अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। गुरुराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यतिराज के लिए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, धीमी लकटर ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को उछालना चाहते यतिराज ने, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पावर प्ले इस वक्त जारी है, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और गेंदबाज गुरुराज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद का मोड़ा, अश्विन को बिल्कुल सही तरीके से यतिराज ने वापस भेजा क्योंकि गेंद सीधे पहुंची थी इस वक्त मिड विकेट पर और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 2 बेहतर गेंदें, आखिर के 2 बेहतर गेंदें गेंदबाज इस वक्त फेंक चुके हैं, यतिराज को खामोश रखने में सफल इन 2 गेंदों में और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार यतिराज के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, यतिराज ने गेंद तक पहुंचना चाहा था, चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट हैंड फील्डर के हाथों में, विकेट कीपर को वंचित करने के बाद रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 बेहतर गेंदें लगातार फेंक चुके हैं, पहले 2 गेंदों में 6 रन प्रदान करने के बाद गेंदबाज गुरुराज अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार यतिराज के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, अंतिम गेंद इस ओवर का इस वक्त गुरुआ द्वारा दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ा इस वक्त, बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग, डाइविंग लगाते वहां पर फील्डर ने गेंद को रोका वरना कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त हो सकते थे। अंतिम क्षण में अपने शरीर को बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद की लाइन पर लाए और अपने हाथों से गेंद को रोका डाइविंग स्ट्रोक के जरिए और इस बीच सिर्फ एकमात्र रन यतिराज को प्राप्त हुआ। ही कीप्स द स्ट्राइक, यतिराज स्ट्राइक को खुद अपने पास रख चुके हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 रन, एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है सुपर किंग्स पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और जहां तक सवाल है जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, मुंडाला चैलेंजर्स विल टेक्स ओवर मुंडाला स्ट्राइकर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ दीस 2 टीम्स टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली टू मेक अ साइन इन द ऑफिशियल चार्ट। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಡಾಲ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ವೇದಿಕೆಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ धन्यवाद. तो दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ यतिराज, दूसरा पावर प्ले ओवर शुरू हो चुका है. दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी अंतिम क्षण में और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाई यतिराज और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुकेश गेंदबाज है और अंपायर रोलैंड पिंटो ने कुछ कहा इस वक्त नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अश्विन से. और इस बीच ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त, नो नीड टू रन फॉर दैट, और गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद थोड़ी सी निकलते हुए जगह बनाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त निकाल दिया. खूबसूरती के साथ स्क्वायर ड्राइव चली है और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर थे डाइविंग लगाई जरूर, लेकिन लगभग गेंद उनके हाथों के उंगलियों पर टकराने के बाद अपने रफ्तार को खोई जरूर, लेकिन सीमा रेखा को पार कर गई और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 11 रन बिना किसी नुकसान के. यतिराज पावर प्ले का भरपूर फायदा यहां पर उठाते हुए अब तक 2 चौके वो झड़ चुके हैं और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. मुकेश की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त मुकेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद यतिराज के लिए ड्राइव किया लंगोर पर, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहली बार इस पारी में अश्विन इस वक्त स्ट्राइक लेंगे.
जो 9 गेंदे अब तक फेंके गए हैं उनकी पारी में, वो 9 गेंदे यतिराज सामना कर चुके हैं। अब पहली बार उनकी पारी में अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मुकेश दाहिना हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद निकली शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन्स नहीं मिलेगा। कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की और गेंद नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से मुकेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए अश्विन जानते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्राइक पावर प्ले में यतिराज को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा, तो इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया था। स्टंप्स को कवर करते हुए बल्ले पैर को एक साथ लाते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर तेजी के साथ 1 रन के साथ अपना छोड़ दोनों बल्लेबाज बदल चुके हैं। यह गेंद यतिराज के लिए उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 14 रन बिना किसी नुकसान के। लेग पाई का इशारा, पहले ओवर में रन्स बने थे 7, दूसरे ओवर में भी रन्स बने 7, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बन चुके हैं। एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ सुपर किंग्स। और जहां तक रिक्वायर्ड रन का सवाल है, लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 32 - 14, दैट मींस 18 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs and the asking run rate is now coming down to exactly 4.5 runs per over। और इस वक्त कुछ हद तक तख्ता सुपर किंग्स का यहां पर भारी लगता हुआ। काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में, मास्टर बैटर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और बातचीत इस वक्त जारी है। बदली भरा वातावरण, सुबह का वक्त, नीला आकाश को घने बादल इस वक्त ढक चुके हैं। सूरज बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है और पूरी तरह बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका। कल रात को काफी वर्षा हुई थी और उसका असर हमें यहाँ पर अभी भी दिखाई देता हुआ, जो कि क्लाउडी एटमॉस्फेयर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बदली भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाज का, तो गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए और यतिराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। विजेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और यतिराज माफ कीजिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग के दरमियान एक फील्डर मौजूद। मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन स्टैंडिंग इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल टू प्रोटेक्ट द सिंगल्स। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार काफी ऊंचा उछाला यतिराज ने, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल गेंदबाज नहीं बल्कि स्लिम डाउन के फील्डर। एक वक्त ऐसा लगा था जब गेंदबाज स्वयं लपकेंगे लेकिन कैच को लपकेंगे, लेकिन अंतिम अक्षर में स्लिम डाउन फील्डर आगे की ओर दौड़ कर आए और उन्होंने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। यतिराज का विकेट गिर चुका है, 14 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है और यतिराज एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए। कुल मिलाकर 12 रन यतिराज ने बनाए 2 चौकों की मदद से। यतिराज को 12 रन इनटू हिज क्रेडिट, including 2 boundaries, and after playing a good knock of 12 runs, he is back into pavilion and the Super Kings are lose their first wicket. It's 14-1. संदीप का आगमन होता हुआ as a number 3 batsman, he is now coming out to the middle to joining अश्विन और वो इस वक्त सामना करेंगे विजेश की गेंदों का। तो यतिराज जो कि काफी खतरा पैदा कर रहे थे मास्टर बैटर्स के लिए, उनका विकेट यहां पर गिर चुका है पिछले गेंद पर और मैं समझता हूँ यही एक सही वक्त है गेंदबाजों को कमबैक करने का। यहाँ पर चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटें वो उखाड़ते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वो वापस आ सकते हैं। फिलहाल अभी भी इक्वेशन सीम्स टू बी प्रीटी क्लियर, 18 टू गेट फ्रॉम 23 डिलीवरीज और 9 विकेट्स दे गॉट इन देयर हैंड, 9 विकेट सुरक्षित। और इस बीच फील्डिंग में जमावट विजेश इस वक्त करते हुए पॉइंट फील्डर को इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है पॉइंट और गली के दरमियान
और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त विजेश तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंदबाजी और ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा नहीं, और गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर भी नहीं निकल रही थी, और सही निर्णय अंपायर द्वारा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर। विजेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद को खेलना चाहता, कुछ ज्यादा उछाल लेती थी गेंद, अंतिम क्षण में टिप्पा खाने के बाद और बल्ले के बाहरी किनारे पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्ट्राइक रोटेट कर चुका है इस वक्त दोनों बल्लेबाज, और अश्विन इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त अश्विन तैयार, फील्डिंग का मुआयना यहां पर करते हुए, और एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए विजेश, हर गेंद के साथ फील्डिंग में तब्दीली वो यहां पर करते हुए, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा आज के इस दूसरे मैच में विजय के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है। विजेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा कलाइयों के सहारे, चूंकि विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया विकेटों के पीछे, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और फिर से एक बार विजेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस वक्त, और अगली गेंद विजेश की ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, स्पेक्ट्रा वाइड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से एक बार फिर से अब काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का। तो अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए लगातार 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर वाइड के इस रन के साथ। और एक बार फिर से विजेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट अश्विन के लिए, यह गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को ड्राइव किया जरूर बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन जगह नहीं बना पाए, और गेंद पहुंची सीधे स्लिमी डाउन पर जो फील्डर तैनात थे उनके हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार विजेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेला गेंदबाज के दाईं ओर से, गेंद पहुंची स्लिमी डाउन पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 7 रन बने थे, दूसरे ओवर में भी बने रन 7, तीसरा ओवर बेहतर रहा पहले 2 ओवर्स के मुकाबले, जिसमें सिर्फ 4 रन विजेश ने प्रदान किए, और जहां तक सवाल है विकेटों का, तो 1 विकेट भी इन्होंने इस ओवर में प्राप्त किया। 14 रन चाहिए 18 गेंदों पर, 14 विकेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में यहां पर सुपर किंग्स की पारी में क्या होता है, और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much. Very popular, fantastic all-rounder Santosh of Mangalore cricketers. He is famously known as Jack Callis of Underarm cricket. One of the great all-rounder, the legendary player. And on behalf of all cricket lovers and organizer, we'd like to welcome him for this prestigious MPL Mundala Premier League 2022. And coming back to this match, just 14 runs away from the victory. 18 on the board. They lost one wicket. They're in a commanding position, and almost looks like Super Kings are the back in this tournament. But still, job is not yet over. 14 to get,
and Mundala master batters have to pick some wickets if they wanted to win the match. Ashwin swept that one, not quite able to get that one right from the middle of the bat. He wanted to sweep that one, but the line of the delivery is outside the line of off stump, so that he couldn't manage to sweep that one well. But quite enough for him to rotate the strike in that occasion. 19 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Sunil bowling with a short run up to Sandeep, far away outside the line of off time. Nothing much to do with the delivery. White call by umpire. One more addition to total scoreboard. Now moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket. Sunil. Wow, beautifully played that one. Very well played. The long chase here for the fine leg fielder. Will it go into the ball winning the race or a fielder winning the race? The fielder winning the race against the ball, and just inside the boundary line he managed to cut it off, and ample time for the batters to complete that couple of runs. Excellent improvisation here from the batter Sandeep, using the pace very well and get that one very fine down to fine leg boundary. Couple of runs. With that couple of runs, the scoreboard moves on to 22 for the loss of 1 wicket, just 10 runs away from the victory target. Outside now, first time, little bit registration for the run. Oh, directed, that is gone. This is what you want to say, that the cricket is the kind of effort there from the fielder been outstanding. Picking the ball in the right hand, it's not a good position to hit the stump, because he is just seeing the only single wicket in that direction. The angle of the throw is not that much of easy for the fielder, but he just hits the stump. Once ball hits the stump, and then very difficult for the batters to survive from the run out. 22 for the loss of 2 wickets. So new batsman in is Guru Prasad, the brother of Yatiraj, smaller brother. Elder brother, smaller brother. 22 for the loss of 2 wicket. Ashwin drives the run, nice looking drive down to a long off region. So 23 for the loss of 2 wicket. Someone doesn't know about some history of this UCG cricket ground. Ashwin is the batsman one who got the highest score in this particular cricket ground. One who scored 161 runs. That is a Metro Trophy, which is organized by Roland Pinto. One of the highest total score, individual score ever recorded in this UCG cricket ground by Ashwin. Nicely driven off the toes, beautifully played it down to deep long on region for a easy single. So with that single, scoreboard moves on to 25 for the loss of 2 wicket, chasing 32 to win this match, just 7 runs away from the victory. 100 and we are talking about that history. Sometimes it's very necessary when you're having that much of a crowd here in UCG cricket ground, when you're having a live telecast of this cricket tournament in Bedra Media. A lot of viewers they're watching this cricket tournament, and I think it's better to talk about some history of this UCG cricket ground. What we're talking about, that centuries in this UCG cricket ground. Altogether 4 centuries recorded in this UCG cricket ground. 2 in RR Prime Memorial Trophy, which is organized by UFCA. The first century, which is scored by Sridhar Kumar of Vijayalakshmi Cricketers. The first century is scored 108 runs in 84 deliveries, way back in 1998. And afterwards, after the 15 years, Shivaraj in 2013, he scored 100 plus runs, and he just broke the record of Sridhar Kumar. After that, in Metro Trophy, one more century came from the bat of Sadiq of NM Cricketers Manglore. One he recorded a century, and
Then this man, Ashwin, is on strike. He scored 161, one of the highest individual score by any batsman in this UCG cricket ground. So that's what want to see, want to know about the history of this UCG cricket ground. 26 for the loss of 2 wicket now. Just 6 runs away from the victory. Going for the cut shot, missed it completely. Beautifully bowled there by bowler in the occasion. Vijesh is a very good all-rounder. He's bowling his second over. He wanted to do something special if they wanted to win the match. Vijesh. That was a good technique, very good technique there from Gururaj, using the depthness of the crease, just going back, allow the ball to turn, coming into his bat, just in the roll of the wrist comes into play to pick the single down to square leg, and scoreboard now moves on to 27 for the loss of 2 wicket, 5 runs away from the victory. Got the outside edge of the bat, Ashwin. He's playing the kind of delivery which he we like to bowl to the batsman, just a leg cutter. Just try to make a little bit room to play down to extra cohesion. Didn't got that much of enough pattern to that. Beautifully bowled. Equally well played there by Gururaj. Tried to yoke the batsman. Negotiated very well by Gururaj, saying that this is the one delivery, need to be very careful. The last moment he got a bat onto that. 29 for the loss of 2 wickets, just 3 runs away from the victory. Bowled him, cleaned him up, left a huge gap between bat and bat. Maybe Ashwin thinking about wanted to finish the match in a style by getting bounded down to deep extra cover. But this is a cricket. The even bowler is always thinking about the wicket. And this is a fantastic incoming delivery there from Vijesh to pick the wicket of Ashwin. 29 for the loss of 3 wickets after completion of over number 5. So last over remaining. 3 runs required for the victory. You cannot underestimate cricket. Cricket, everybody knows, this is a game of glorious uncertainty. If you review the pages of the history of the cricket, you will find so many examples. Even less than 3 runs also depended in the last over. If the bowler has got a 10 to bowl some good deliveries, he can do the magic. They can win the match. That's why the cricket you cannot underestimate. It is unpredictable game. Ashwin really aware of that, because he is the one who back into ball in the last delivery of the over. Now 3 to get from 6 ball. Now Nitin, we're coming back to the Nitin is going to bowl the last over. He's so experienced campaigner. If you look at him, his history, the Nitin who represented a challenge bowler, sometimes he bowled and a fence bowler as well, one of the key player for the side, so much experience behind him, and now experience always counted. Now want to see the strategy of the fielding team, how well they wanted to defend these 3 runs in the last over. Just as a good strategy, you can see that putting all fielders inside the ring. 4 fielders inside the ring in the onside. Another 4 runs, 4 fielders inside the ring. But very, very risky one, I must say. There is no protection has been given in the offside region. There is no fielder deep in the offside region. But Nitin is so confident. 3 to get. Oh my goodness. This is that was direct hit. Direct hit, wicket is gone. But 1 gifted runs. I think the fielding team is not really bothered about that wicket. Batting team not bothered about that wicket, but they know only bothered about that 3 runs what they wanted to get in the last over. Not a good start there from Nitin. When you're depending 3 runs in the last over, it's not a good kind of delivery. The experienced bowler is bowling. Now 2 runs required from 6 ball. One more experienced campaigner, Anish, came into middle. Tremendous performer who represents HFC Oige Bazaar. Anish will going to take strike against the bowling of Nitin. Single-handed sweep shot, nicely driven, face field there by the fielder. This is enough for
Mundala Stars to register victory against Master Batters. The last over victory, but comprehensive victory in the end. And they won the match by 6 wickets. And they're registering their first victory of this MPL league match. They opened the accounts in the points table and they're in the competition now. Little bit frustration here for Mundala Master Batters, as not quite enough runs on the board to depend, and they lost this match. Thank you very much. Man of the match award of this match, which is goes to the all-round performance by Yatiraj of Mundala Super Kings. Picked up 2 valuable wickets for excellent economical over, and then he scored 12 valuable runs, and he's deserved this man of the match award. So I request Mr. Yatiraj to come and collect your man of the match award. It's really good to see that 2 very good friends, Yatiraj as well as Santosh, is 2 very good friends and very good players of Mangala Devi cricketers. 2 very good all-rounders, and it's very good to see that Santosh presenting the man of the match award to Yatiraj. Thank you very much, Santosh, for coming here and spending your important time in this MPL 2022, and we are back to this match, and I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone before the match will going to start between strikers versus challengers.
धन्यवाद सतीश. So the match number 3 of the day is now going to start between Mundala Challengers versus Mundala Strikers, and Mundala Strikers after won the toss they elected to field first, and because of that the openers of Mundala Challengers are the crease, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया था और गेंद जब तक फील्ड हो पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का. तो तीसरा मैच मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 MPL 2022 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है और एक रन यहाँ पर बन चुका है सौरव के बल्ले से, और इस वक्त शिवरंजन सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी अश्विन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाईं राउंड द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त गेंद तक पहुंचना चाहता चूके और गेंद इस वक्त पहुंची शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो एक रन बिना किसी नुकसान के. एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, डाइविंग लगाकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर. एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए तब तक गेंद को रोके बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त लॉफ्ट किया था और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे दाई और डाइविंग लगाकर उन्होंने कैच को लपकना चाहा जरूर, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर. 3 रन इस बीच मिले और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. स्कोर विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्वीप करना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 4 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद. ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, much straighter line, has got a gap between his bat and pad and the ball passed in that gap and stuck to his off stump. और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उछालना चाहा चूंकि गेंद पैरों और बल्ले के बीच से निकलती हुई, चीरती हुई कहना पड़ेगा, सीधे स्टंप से ऊपर जा टकराई. ऑफ स्टंप पर गिल्लियां बिल्स ऑफ होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और सौरव की पारी समाप्त और 4 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है मुंडाला चैलेंजर्स. So the batsman wearing number 66 is now comes out to the middle as a number 3 batsman for Mundala Challengers is निखिल बेंगरे. और इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज अश्विन की ओवर की अगली गेंद का. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त अश्विन गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद निखिल के लिए. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड विकेट पर नजदीकी मामला हो सकता है. थ्रो काफी ऊंचा और इस बीच बल्लेबाज बाल इस गेंद पर बच चुके हैं. स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े थे. अगर थ्रो जो शॉर्ट मिड विकेट फील्डर ने फेंका था सीधे स्टंप्स के कुछ ऊपर आता तो शायद कुछ बात वहां पर बन सकती थी, लेकिन थ्रो आया थोड़ा सा ऊंचा और जब तक थ्रो को गैदर करने के बाद विकेटों पर निशाना दागे, गेंदबाज उनका निशाना भी चूका और बल्लेबाज सुरक्षित अपना बल्ला खोने के बावजूद, बैट खोने के बावजूद अपना वो क्रीज पर पहुंच चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. मिक्स स्टार्ट फॉर मुंडाला चैलेंजर्स. After first over, they managed to score 5 runs on the board for losing a single wicket. And just talking about the next match, Mundala Royal Army will take over Mundala Master Batters in the next match. One more match coming up for Master Batters right after the previous match, and because of that I request all the players of Mundala Royal Army and Mundala Master Batters to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सूरज. दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ. 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर अभी भी तैनात. मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडर, कवर पॉइंट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक फील्डर मौजूद. गली, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, माफ कीजिए शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन. मिड ऑफ से फील्डर हटाकर इस वक्त मिड ऑन पर तैनात किया गया है.
20 गज के दायरे के अंदर। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त सूरज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन फील्डर वहां पर मौका जरूर था, गेंद तक उन्होंने गेंद पर अपने हाथ जरूर अड़ाए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। तो निखिल बी इस वक्त सामना करते हुए सूरज एम की गेंदों का। सूरज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर रोलैंड पिंटो द्वारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर। बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीमान रोलैंड पिंटो के सारथ्य में श्रीमान हरीश पटेल और श्रीमान श्रीराज, काफी अनुभवी अंपायर अपना किरदार बाखूबी अदा करते हुए रन के लिए दौड़ पड़ी है। इस वक्त 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रन। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट आप YouTube पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेद्रा मीडिया द्वारा जो इस वक्त बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, श्रीमान जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और निस्संदेह जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए MPL 2022 मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया, शॉट फॉर लेग पर, फील्डर चूके और रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। वाइड का भी इशारा यहां पर हो चुका है और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर, 2 अंकों पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को गेंदबाज यहां पर तराशते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और हर गेंद के साथ जो यहां पर कप्तान है मुंडाला स्ट्राइकर्स के जो विकेट कीपर है इस वक्त प्रताप करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर के बल्लेबाज पर गेंद को टकराई। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस गेंद पर मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए, वो जानते हैं इस वक्त उन्हें एक बेहतर साझेदारी निभानी है और अपनी टीम को एक सुस्थिति पर पहुंचाना है जहां तक एक अच्छा स्कोर तक पहुंचने का सवाल है। और ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली गेट, गेंद पहुंची इस वक्त सिली मिड ऑन पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। सुबह के 11:15 इस वक्त बच चुके हैं और धूप का अस्तित्व संपूर्ण तरीके से इस वक्त मैदान पर नहीं दिखाई देता। वह ये गेंद को खेला असली मिड ऑफ पर, वाइड थ्रो, लेकिन बल्लेबाज को मौका था कि 1 रन बल्लेबाज इस पिच पूरा कर सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट राइट आर्म का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार, राउंड द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया, बेहतर फील्डिंग, फॉलो थ्रू में बल्लेबाज ने 2 कदम आगे जरूर निकाले रन के लिए, लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को रोक लिया और इस बीच ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। कुल मिलाकर 9 रन इस ओवर में बने, 9 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। 2 ओवर के बाद कुछ हद तक संभल चुका है। आरंभिक ओवर के बाद मुंडाला चैलेंजर्स 14 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 for 1 आफ्टर 2 overs। प्रताप जो कि स्वयं कप्तान है मुंडाला स्ट्राइकर्स के, इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करके दाहिने हाथ के बल्लेबाज निखिल लब्बी के लिए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर मैदान पर छा चुके हैं। प्रताप अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर फुल टॉस, गेंद को इस वक्त और इस बार प्लम इन फ्रंट। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, स्लोवर डिलीवरी और इस धीमेपन को समझ नहीं पाया। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली विद अ ट्विस्टेड बैट, लेकिन बल्ला पहले अड़ा गए, गेंद बाद में आई, फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद उनके पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर सीरज को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, 14 रनों पर 2 विकेट गिर चुका है। इट्स 14 for 2।
the number 5 batsman is now comes out to the middle. Number 4 batsman in fact comes out to the middle wearing a 555 jersey, and he is now going to face Pratap. और प्रताप यानी पातू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ उभरता विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी इस वक्त फुल लेंथ गेंद लगभग बल्ले का 3 विकेट टिप्पा खाती हुई गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ प्रताप इस वक्त गेंदबाजी करते हैं अपनी और की अगली गेंद। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अपनी ओर की अगली गेंद प्रताप की ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला सीधी मैदान पर मिसफील्ड रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। हालांकि मिसफील्ड जरूर हुई थी लेकिन थोड़ी देर से दौड़े थे स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज और इससे पहले कि वो नॉन स्ट्राइक रेट पर पहुंचे दोबारा गेंद को फील्ड करने के बाद फील्डर ने थ्रो किया गेंदबाज प्रताप के हाथों में और प्रताप ने तेजी के साथ विकेट उखाड़ दिए थ्रो को रिसीव करने के बाद। तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड दिस इज द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು सोनू का आगमन हो चुका है। शिवरंजन स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए और प्रताप ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा विकेट कीपर चुके शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को हालांकि थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा अपनी दाईं और लेकिन गेंद को रोकने में सफल 20 गज के दायरे के बाहर कुछ बाहर और इस बीच वाइड का इशारा 2 रन 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ वाइड और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। प्रताप नए बल्लेबाज सोनू के लिए फुल टॉस ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धूप कुछ हद तक इस वक्त मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज कुछ हद तक आसमान नीलाकाश को जो बादल घने बादल ढके हुए उन बादलों से कुछ हद तक निकलकर अपने किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ यहाँ पर यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर रुक चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और प्रताप एक बार फिर से ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाह नॉट क्वाइट मिड गेंद डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची फील्डर ने गेंद को फील्ड किया क्लीन कलेक्शन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति 3 overs completed. It's 19 for the loss of 3 wicket for Mundala Challengers with average of exactly 6.33 runs per over they scored and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो 3 ओवर का खेल बाकी है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों दे काल सुनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। So thank you very much, Gopi, and 19 for the loss of 3 wicket, and a good start for both the teams, and especially the strikers actually striking very well from their bowling. They are able to pick 3 wickets in 3 overs, and just 19 on the board for challengers. So left-hand batsman will going to take the strike of the bowling of Akshat. And first ball down the leg stump going to be a punishable, not from the batter but from the umpire. And Roland Pinto signaling towards Sachin Kamath, our scorer. Scoreboard is 20 on the board for the loss of 3 wicket. Shivaranjan facing next delivery. Again, not able to time the ball properly, but here is the opportunity of run out in the non-strikers, and bowler on his follow through fields the ball, try to hit the stumps, miss the stumps, and batsman just survive from the run out. Shivaranjan.
Lucky there. If it is direct, it is all over for his innings. And just a risky run taken by these two batsmen. 21 for the loss of 3 wickets. Sonu Amrit will go into face. Left arm down the wicket. Went for the big shot. Again the chance of run out. Misfield there by the fielder. Opportunity of second run, but good backup there by Ashwin Kumar. Is a very good fielder, very good outfielder. Very athletic, energetic. Ashwin from deep wideish long on, charging to the ball, denying the second from these two batsmen. The batsmen have to settle for the single. 22 for the loss of 3 wicket here in over number 4 in progress. Again, outside edge of the bat, but ball landed safely between wicket-keeper and the short third man region. Shivaranjan not really getting that much of enough timing every time when he was looking for the big shot. Maybe he's a little bit early into the stroke, and might be couldn't manage to get the timing what he's looking for. 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Akshat. That one, a slower one, he hammered that one, but fielder in the deep long off region, making no mistake at all. He's in the right position, but it's not a right stroke coming from the blade of Sonu Amrit, as he wanted to break the shackle in this particular over, and he just pays the penalty for that. He didn't got that much of distance was what he's looking for. 23 for the loss of 4 wicket. So new batsman in is jersey number 2. As per the new rules of International Cricket Council, the new rules is implemented that every time when wickets are falling and even the batsmen are crossed, but new batsmen have to take a strike. Akshat bowls. Batsman drives that one, again off stop by the fielder at short mid-wicket. A very young cricketer out there in the short mid-wicket. Not that much of experience behind him. But they need to grab this all opportunity which is provided by Akila Bharata Mundala Yuva Vedike. Set a fantastic stage here for the talents from the communities to come and perform. And here is the next one. Down the leg stump, well within the reach of not within the reach of the batsman, and umpire Roland Pinto just observing the line of the very last moment. That ball just suddenly out of the reach of the batsman. Wide call by umpire. 25 for the loss of 4 wicket. Akshat pitching outside the line of leg stump, and no question of leg before, but certainly it's a leg by. One more addition to total after completion of a very good over, very decent over there from Akshat, and 2 wides in that over. So 4 over completed. It's 26 for the loss of 4 wicket. The captain himself is a so first delivery of the over number 5, and leg by call by umpire Pratap, the captain of Mundala strikers, brought into attack from the far end, and first ball it's a single in the form of leg by for challengers. So 27 for the loss of 4 wicket. There is a short extra cover. There is a backward point,
And there is one fielder at a deep long off and one deep cover point. Offside region in onside deep long on deep mid wicket, deep backward square leg. And appeal for leg before wicket. Again, umpire not interested. Maybe Shiraj is thinking about the turn of the delivery. It's a too much turn as a leg cutter is bowling. Might with the ball is just going to miss the off stump. Just looking at the turn of the delivery. One more addition in the form of leg by 28 for the loss of 4 wicket. Shivaranjan. And being there for a long time, came as an opener for the side. And need to deliver some scoring strokes if they wanted to win, wanted to get some good score. And one fielder from mid off is long off is coming inside the ring from extra cover to short extra cover. This time full toss delivery, lofted that one, not enough bat down to that. Pays the penalty for that. Fielder is underneath it. The deep mid wicket fielder takes the catch. That's the end of Shivaranjan's not a good innings actually. And the full toss delivery, but he couldn't manage to capitalize that one, and pays the penalty for that. Wicket number 5 is back. 28 for the loss of 5 wicket. Challengers. So Pratap from the far end, right arm over the wicket delivers. Oh, that was a flum, absolutely flum. Look at his back foot where it is, right in front of middle stump. So easy decision there from Shiraj to raise his finger, and Pratap picked up one more wicket, 2 wickets in a row. That means he's on hat trick. 28 for the loss of 6 wickets. Challengers are looks like they're in a deep trouble. The hat-trick opportunity. There is 2 hat-tricks already in this over. 1 hat-trick in fact, and that is in the name of Yajnesh. Pratap in hat-trick delivery. Chip that one. Ball is in there. Opportunity, but the fielder there a deep mid wicket as he was trying for the catch, but lost his balance, slipped out little bit, greasy out there in the deep mid wicket. The green grass out there in the deep mid wicket, and he couldn't manage to grip that one properly, and just survived Pratik from that opportunity of catch. Half opportunity, and 30 for the loss of 6 wicket. Here is a Pratap. This time Pratik drives again, a loose delivery down the leg stump, swings that one, but not really getting that much of enough bat onto that. Pratik might be not impressed with himself. He can deliver that one out of the park if it's properly. And good over there from Pratap. And 2 wickets in that over. Altogether after completion of over number 5, it's 31 for the loss of 6 wicket. So thank you very much, and back to this last over of the innings of Mundala Challengers, and last over, 6 balls remaining, excluding wides and no balls, and Pratik is on strike now. That's number 1. This time along the stroke, he went for the single off stop by the fielder at short mid off. A very experienced campaigner out there in the short mid off,
stops the ball, stops some runs for his team. One more addition, 32 for the loss of 6 wicket. Nitish bowling away from us. Pass down by Roland Pinto. Right arm over the wicket. This time he lofted, it might be the opportunity for the fielder there in the deep long off to take the catch. This time he had to move a little bit towards his left to take the catch. But in the end, he completes a very good catch, and wicket number 7 is back into pavilion of Mundala Challengers. It's 32 for the loss of 7 wicket. The full toss delivered outside the line of off stump, and that's it. One more wicket is back into pavilion. This time is stump out. The batsman well outside the crease, and wicketkeeper behind the stump. Pratap completes the job is in a fraction, and it's a 32 for the loss of 7 wicket. So wickets are tumbling here of Mundala Challengers because they're dealing with some the final overs. So each and every batsman looking for some acceleration of run rate. By doing that, they're cheaply throwing away their wickets. 32 for the loss of 8 wickets. Ronson is our scorer. Please correction there, 8 wickets. So a very young talented Ronson out here in the scoreboard. The son of Roland Pinto. Here is the next one. Right arm over the wicket. Full toss. Negotiated very well. Need to see the height of the delivery. It looks like it's a delivery where the batsman might be very enough to tackle with that full toss. And pushing that one down to short cover point region for a couple of runs. 34 for the loss of 8 wicket. Nitish. 5th time in this over. Right arm over the wicket to Manoj. Bowler's back drive, and they tried to stop that one on his follow through, but ball just going away from his trying hands on his follow through. And before that, deep long on fielder Ashwin Kumar to run across to field the ball. Ample time for the batsman to complete the single. 35 for the loss of 8 wickets. Last over is in progress. Not a bad score. It's a good score on the body of our challengers, considering the condition is of course a little bit overcast. Still, it's a cloudy weather condition out here in UCG cricket ground. Lovely shot, beautifully played, but the placement is not right. The placement is not right. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. The fielder in the deep backward square leg is taken that very good catch. Actually, it's a really good catch indeed, because ball travels very quickly from the bat of Manoj, and the fielder then the deep backward square leg have to move a little bit quick. Pratik Little is picked that one from the light spot, but little bit unfortunate for him. That ball went straight to the hands of that fielder. So that's the innings is completed of 6 overs quota, and Mundala Challengers, they got 35 in their stipulated 6 overs by losing 9 wickets, and they set a target of 36 to win the match for Mundala strikers to win the match at the required run rate of exactly 6 runs per over. And it's absolutely it's a 6 runs per over, 6 overs game, and wait and see how well Mundala strikers will go to get this runs, and wait and see how well the fielding team Mundala Challengers will go to restrict the opposition. It's going to be a very interesting session, and for that I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you.
धन्यवाद सतीश. So 36 the target for strikers set by challenges at batting first. They managed to score 35 runs on the board for losing 9 wickets in the stipulated 6 overs, and they set a victory target of 36 for Mundala strikers, and their innings now going to start. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 36 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में 36 गेंदों में, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और पावर प्ले पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. अभी भी बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है. सुबह के 11:40 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का नामो निशान इस वक्त मैदान पर मौजूद नहीं, और इस बदली भरे वातावरण तले यहाँ पर इस मैच का द्वितीयार्ध प्रारंभ होता हुआ. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, और गेंद को इस वक्त जब तक पॉइंट पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. स्ट्राइकर्स के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के. इट्स 1 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है जहाँ तक स्ट्राइकर्स को 36 रनों के विजय के लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो निखिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, और प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अक्षत का खाता पिछले गेंद पर खुल चुका है, और 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, गली, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन थोड़ा सा वाइडर, और इस बीच गेंदबाज तैयार. निखिल दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, शॉर्ट टर्नमैन की दिशा में गेंद पहुंची काफी तेज दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच, और 1 रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं. इससे पहले की गेंद को शॉर्ट टर्नमैन पर फील्ड किया जाता. पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग गिवन बाय अंपायर टू द बॉलर टू एंटरिंग इनटू द डेंजर जोन, और इस वक्त स्कोर रुक चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला MPL 2022-2022 मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 विच प्राउडली प्रेजेंटेड बाय अखिला भारत मुंडाला युवा वेदिका रजिस्टर्ड मैंगलोर, और ये श्रृंखला का आज दूसरा रविवार यानी दूसरे दिन का तीसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर. यह गेंद ओवर पिच, गेंद को ड्राइव कर दिया जगह बनाते हुए मिड ऑफ की दिशा में गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और गेंदबाज निखिल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपने पहले 3 गेंदों में 3 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं. प्रताप सामना करने के लिए तैयार. निखिल की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद चूके और गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, और बाई का इशारा अंपायर का, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और निखिल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षत के लिए. लेफ्ट राइट आर्म का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस वक्त मौजूद मैदान पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद धीमी गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद को निकाल दिया इस वक्त पॉइंट और गली के बीच में से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे. गेंद को पीछा करने के बाद डीप पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाता फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर स्ट्राइकर्स, और निखिल एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए. अक्षत
एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल और गेंद बल्ले पर ठीक तरह से लिया नहीं था और इस बीच ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन पूर्ण हो चुका। गेंद स्टंप्सों को बिखेर कर इस वक्त चली गई थी विकेट एरिया पर, गली क्षेत्र पर। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता वहां पर दूसरा रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। 2 रनों के साथ 8 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, chasing the victory target of 36 in 6 overs. Steady start for strikers. Scored 8 runs, yet to lose any wicket after the completion of first over. रिकेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए नया ओवर प्रारंभ होता हुआ स्ट्राइकर्स की पारी में और प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो प्रताप इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद। ओवर की पहली गेंद रिकेश गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रताप के लिए। पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, फाइन, दिस इज एन एब्सोल्युटली फाइन, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट। और इस बार गेंद हिमालय को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। He just played that one with a delicate placement and he finds the gap as well. Delicately played by him. और गली और पॉइंट के बीच जो फील्डर है, गली और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच जो फील्डर खड़े हुए थे उनके बीच से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ। गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक रिवर्स शॉट प्रताप द्वारा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 विदाउट लॉस। एक बार फिर से रिकेश गेंदबाजी करते हुए ये गेंद प्रताप के लिए ऑन साइड पर गेंद को खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षत इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। रिकेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त जान चुके हैं कि एक बेहतर शुरुआत उन्हें देनी है, अपनी टीम को अपने सही मंजिल की ओर अग्रसर करना है। क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए लेग स्टंप से बाहर और इस बीच रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। देखा कि गेंद शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा फील्ड की जा चुकी है और रन इस बीच नहीं मिला बल्लेबाज को, लेकिन टीम को मिला 1 रन और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रन बिना किसी नुकसान के। रिकेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम रन से पूर्ण कर चुके हैं। वाइड का भी इशारा यहां पर हो चुका है तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। प्रताप सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की गेंद ड्राइव किया, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। He just smashed that one through the offside and finds the gap as well between cover and extra cover and the ball passed between the 2 fielders and it stuck into the wall of a deep extra cover boundary. एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्राइक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। प्रताप काफी आत्मविश्वास भरे यहां पर नजर आते हुए 2 चौका अब तक इस ओवर में वो झड़ चुके हैं और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पावर प्ले का भरपूर फायदा यहां पर वो उठाते हुए और
अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, इस बीच चूके लगभग बल्ले के बैट के अति निकट गेंद टिप्पा खाती हुई, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। इट्स 20, द स्कोरबोर्ड स्टेज 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची थर्ड मैन पर, एक रन मिलेगा। थोड़ा सा दाईं और दौड़ लगाना पड़ा इस वक्त बल्लेबाज को, माफ कीजिए फील्डर को। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन पर। इट्स 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल 3 overs to go after this one and just 15 runs more now they have to score for victory। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त रिकेश काफी महंगे इस ओवर में वो साबित हो चुके हैं। कुल मिलाकर 13 रन 13 रन ही कंसीडर्ड इन दिस ओवर सोफा। ये गेंद इस बार ऑफ से बाहर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ द सेकंड ओवर हैज बीन came to an end। 2 overs completed and after completion of 2 overs they are looking in a commanding situation। 21 without loss they scored with the run rate of exactly 10.5 runs per over। जस्ट 15 more runs now they have to score for victory। सिर्फ 15 रन चाहिए विजय के लिए, 4 ओवर का खेल बाकी। जो रिक्वायर्ड रन रेट है इस वक्त तो सीधा इस वक्त घटकर आकर रुक चुका है 3.75 रन पर ओवर। एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 3.75 रन पर ओवर। और तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ मुंडाला स्ट्राइकर्स का। Pratik, the bowler is now brought into the attack and a fresh over starts. And the first ball of his over is now coming up to the right-handed batsman Pratap। तो प्रताप इस वक्त जहां तक प्रताप का सवाल है 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए he is batting on 12 including 2 boundaries। the first ball of the fresh over from the bowler is now coming up। और गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। सिर्फ 4 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, शॉर्ट फाइन लेग मिड विकेट मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडर और एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के दरमियान एक फील्डर मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, माफ कीजिए हल्के से गेंद को पुश किया डिलिकेट। इस वक्त प्रताप हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया और रक्षात्मक तरीके से बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए गेंद को हल्के से पुश कर दिया शॉर्ट मिड विकेट पर, और 1 रन के साथ तेजी के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 22 रन 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए प्रतीक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद नहीं। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। और प्रतीक इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यो अच्छी गेंद, परफेक्ट ऑफ कटर, रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर का थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को ठीक तरह से गैदर करने में असफल गेंदबाज, और आखिरकार जोखिम भरा ये रन यशस्वीतम यहां पर दोनों बल्लेबाज बैट्समैन पूरे कर चुके। 1 रन बाई के रूप में, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और प्रतीक एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद, कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद तैयार प्रताप इस वक्त सामना करते हुए प्रतीक की गेंदों का। ये oh that is an absolutely beauty, this is an absolutely beauty, just turned a little bit at the last moment after pitching। गेंद घुमाओ टर्न लेने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी प्रतीक का, एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ लेकिन मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं है। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बारिश की चंद बूंदे इस वक्त मैदान पर गिरती हुई और खेल इस हल्के से वर्षा तले यहां पर आगे बढ़ता हुआ। प्रतीक का दाहिना बाएं हाथ, ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहता, गेंद
टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा घुमाव ली, जितना बल्लेबाज ने पूर्वानुमान लगाया था उससे ज्यादा गेंद टर्न होती हुई सीधे बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है प्रतीक का, जिसमें सिर्फ 3 रन अब तक वो प्रदान कर चुके, एक विकेट प्राप्त करने में सफल अक्षत के रूप में, और यहां पर ये पहला विकेट गिर चुका है 24 रनों के ऊपर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। अश्विन दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रतीक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट प्रतीक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। Again, absolutely beauty, and a fine over came to an end in challenger's point of view. Just 3 runs came from it. Single wicket for Pratik. And after 3 overs, after half a, they are still looking in a good situation, except this over which conceded by 3 runs by Pratik. तो 8 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में भाग ले रही है। 4-4 टीमों का 2 ग्रुप इस वक्त बांट दिया गया है। अगर पॉइंट्स टेबल अगर देखा जाए तो ए ग्रुप में मुंडाला स्ट्राइकर्स ने 2 मैच खेले, जिसमें एक में वो विजय दर्ज कर चुका है और एक मैच टाई हो चुका, 3 अंक उनके पास है। मुंडाला स्ट्राइकर्स प्ले 2 मैचेस, दे won 1 and tied 1 and they got 3 points. Mundala Challengers also played 2 matches. They won 1, lost 1 and they got 2 points. Mundala Stars also played 2 matches. They won 1, lost 1 and they also got 2 points. And Mundala Lions played 2 matches and they lost 1 and tied 1 and they got only 1 point. And straight away coming back to the B pool, Mundala Royal Army with a better run rate, 2-1, 2 they played 2, won 2 and they got 4 points. And Mundala Attackers won 2. In fact, they played 2 matches, won 1, lost 1 and they got 2 points. Mundala Super Kings also played 2 matches. They won 1, lost 1 and they got 2 points. And Mundala Master Batters, they played 2 matches and lost all the 2 matches and they have got no points. So these are the league stage, and this is the 3rd match of the day 2 of MPL 2022 is now progressing here. In fact, first ball bowled by the bowler and the scoreboard is now moving up to 25 now. The single taken by the bowler, batsman in fact, and the next one, good one from the bowler और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहां तक नेट रन रेट का सवाल है, ए ग्रुप में मुंडाना स्ट्राइकर्स दे गॉट अ बेटर रन रेट विद अ प्लस 1.88 एंड इन द बी ग्रुप मुंडाना रॉयल आर्मी has got a better run rate, second better run rate 0.96 and Mundala Attackers got a better run rate with plus 0.97 और इस बीच इस गेंद पर रन से बने 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, वर्षा कुछ हद तक तेज हो चुकी है। यह गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में, ठीक तरह से खेल नहीं पाए गेंद को और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो जहां तक सवाल है अगले गेंद का, तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज अक्षय गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को खेल नहीं पाए ठीक तरह से, रन के लिए दौड़ पड़े, फॉलो थ्रू में अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड तो जरूर किया गेंदबाज ने, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो सब 8 टीमें 2 पूल में अपने 2-2 मैचेस यहां पर खेल चुके हैं और पॉइंट्स टेबल जैसा कि मैंने आपके सामने इस वक्त रखा है, तो यहां पर ए पूल में कड़ा संघर्ष जारी है 4 टीमों के बीच। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद गली की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई MPL 2022 के नाम पर जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है अखिला भारत मुंडाला युवा वेदी के रजिस्टर्ड मैंगलोर ने, और निस्संदेह आज बदली भरा वातावरण सुबह से है और अब कुछ हद तक वर्षा मैदान पर गिर रही है
लेकिन खेल इस वर्षा तले आगे बढ़ता हुआ और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं जब तक ये श्रृंखला समाप्त ना हो, वर्षा तेज रूप से ना आए। और इस बीच गेंदबाज प्रतीक जो कि अपना पहला ओवर बेहतर फेंक चुके हैं, सिर्फ 3 रन प्रदान कर चुके हैं, 1 विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं, अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। और गेंदबाज प्रतीक इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए स्ट्राइक। प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी, 7 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स। प्रतीक टू प्रताप, फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर कम्स, बाएं हाथ अराउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, अपने बल्ले के मुंह को खोलते हुए अंतिम अक्षर में फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह आसानी के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए प्रतीक की गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द विकेट गैप, 1 रन मिलेगा। बैकवर्ड थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 31 ना 5 टू गेट, 10 बॉल्स रिमाइनिंग। और प्रतीक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट प्रताप के लिए। यह गेंद हल्के से स्टीयर किया, बल्ले के मुंह को खोलते हुए खूबसूरती के साथ निकाला, थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा। दौड़ लगाने के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे 20 गज के दायरे के बाहर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 32, just 4 to get now in remaining 9 deliveries. प्रतीक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्विन सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ अराउंड द विकेट, ये गेंद हल्के से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट वर्क अवे ऑफ द ऑन द वन साइड आफ्टर कवरिंग द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट बाय द बैट्समैन एंड ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट। और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड जस्ट 3 टू गेट। निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही यहाँ पर फील्डिंग साइड को इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिर से एक बार सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए प्रताप, 1 रन का इजाफा, 34 और जहां तक सवाल है रनों का तो सिर्फ रन इस वक्त चाहिए 2 विजय के लिए। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार ऑन साइड पर जस्ट ओवर द फील्डर्स हेड और they got a couple run for that. That's it for this match. Mundala strikers won the match by 9 wickets with 8 balls to spare against Mundala challengers in the match number 9 of MPL 2022, and with that victory they got the complete points. And the next match is now coming up between Mundala Royal Army versus Mundala मास्टर बैटर्स एंड दैट मैच स्टार्ट्स विद जस्ट शॉर्ट व्हाइल। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब अगले इस श्रृंखला का 10वां मैच 10th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट की शुरुआत यहाँ पर होगी एक चंद लम्हों बाद, राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम उपस्थित होंगे आपके सामने सतीश के साथ अंग्रेजी में जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So time to announce the man of the match award. Once again, the consecutive second time, captain of Mundala Strikers winning a man of the match award. Pratap, may I request Pratap to come and collect your man of the match award for your all-round performance. Unbeaten 19 runs in 16 balls. And he picked up two valuable wickets. His captain leading from the front, and he is an inspiration for all his teammates. Leading from the front, once again performing for his team. Congratulations, Pratap, and I request Pratap to go and collect your man of the match award from our MPL VIP stand. The chief guests are waiting for you to present the man of the match award. बाहर से लिया बक्का अब वायर वायर उधर बोल पड़ा Thank you very much. Welcome back for the match number 4 and 10th match of the tournament. Mundala Royal Army versus Mundala Master Batters. So after winning the toss, selected to field first, Master Batters and bowling their first ball. Right bowls, and Yajnesh tried to sub that one, chance for run out there, but quick running beneath the wicket by call by umpire, and the first run in the form of extra here for Mundala Royal Army. Mundala Royal Army, they won their first match. Yajnesh picked up a hat-trick of this tournament from his bowling. He's a very good all-rounder actually, very young talented player and got experience of representing one of the top team of Underarm cricket, young friends Urwa. Gururaj bowling away from us. Right arm over the wicket, delivers. Chip that one, and fielder there in the deep long on will go in comfortably, will going to take the catch.
It's not a good start there from Raghu, and one of the top performer of their team, but quite unfortunately, as he played very loose strokes and he faced a penalty for that. Tip that one, not a full-hearted cricketing stroke, and a half-hearted chip there from Raghu, and he pays the penalty for that. One for the loss of 1 wicket. So new batsman in is Kishore. One more very talented player, Kishore, experienced cricketer. A very good rotator of strike, and Kishore will going to face Gururaj. Right arm over the wicket delivers. This time appeal for leg before wicket. Half-hearted shout, but might be that ball just going down the leg stump, outside the line of leg stump. Leg by call by umpire Sriraj, and one more addition to total score. But Namuzan to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Very good addition from Sriraj. And ball is certainly going to miss the leg stump, and fractionally, not too much. And now left-hand batsman Yajnesh is on strike. For him, on short third man, backward point, short cover point, short extra cover. Short mid-on, short square legs, short fine leg, and one at deep long on. Gururaj. Beautifully bowled, and ball is almost nipped back into the batsman, and Yajnesh tried to force that one, got inside edge of the bat. Luckily ball didn't went to hit the stumps. The ball missed the stumps and missed the wicket keeper as well, and he got opportunity to cross over for a single. 3 for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. Gururaj with a short run off, right arm over the wicket. Nicely turns that one down to find Agri, and long chase here for the fieldsman before the fielder to run back to return that one. What a good throw coming from the fielder, but not quite enough to make the run out, because Kishore, I already mentioned, is a very good athletic player. It's a very good runner between the wicket as well. Even the second is so difficult to complete, but because of his very good running between the wicket, he completes that second run. Good piece of fielding there by the fielder, and good return as well. But and at the same time, it's a very good running between the wicket. 5 for the loss of 1 wicket. Gururaj bowling away from us. Nice. Look at that one. Absolutely magnificent stroke there from Kishore with the full face of the bat. And technically it's a good looking stroke off dry there from Kishore, and he retains the strike. 6 for the loss of 1 wicket after completion of over number 1. Just reaching for the delivery, Kishore this time wanted to cut that one, but a little bit away from his body, just couldn't manage to get the timing what he's looking for, but managed to get the single for that, and with that single scored Namuzan to 7 for the loss of 1 wicket. Nitin. So Mundala master batters, they lost their match in the morning match, and they need to come back strongly if they wanted to be in the competition. So Nitin bowling from the far end, Sri Rama Bhajana Mandira end. Oh, that was a really not a good stroke there from
Yajnesh again against the line, against the turn of the delivery. He wanted to play across the line, tried to swing that one, but missed it completely. Wicketkeeper behind the stump. Kiran did the rest. Back to bowler. Kiran. Pass umpire Harish Padil down the leg stump and misfield there by the fielder Vijesh, and they got opportunity to cross off for a single. 2 wides. With the help of that 2 extra score, but now moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. 9, little bit correction. 9 on the board. Kishore is batting on 4 out of 4 deliveries with a strike rate of exactly 100. This time again, seeing that, wow, that was not a good piece of work there by the fielder. Ball running down to deep third man boundary for 4 runs. This is a lucky boundary, but absolutely it was a frustration for the fielding team. And always is a frustration for the fielding team when you are conceding runs in the form of a bye. But not that much of good effort there from the fielder, Pradeep, who is standing at in a short fine division. Might be not a Vijesh actually, they're exchanging. Vijesh was standing in a short fine, not good moment from quick moment from that fielder, and score jumped into 13 for the loss of 1 wicket. Again, Kishore went for the big shot, not quite getting that much of placement. He's looking for good work by that short mid wicket fielder. There is no question of any run there, so score remains at 13 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Nitin again back to his bowling mark, right arm over the wicket. Went for the reverse sweep again. Vijesh is in the picture. This time he's standing in the short third man region. He wanted to play the reverse stroke, but not quite able to get the enough bat onto that. So completion of over number 2, and it's good going. 1 ball remaining in this over. 1 ball remain, not a completion of over. The bowler himself thinking about the actually it's leg before wicket. Leg before wicket. Little correction. We're not observing umpire Harish Padil raise his finger. It's a leg before wicket, I think so, because Kishore is played at reverse stroke, reverse sweep in fact, and a reverse sweep, but ball is pitched in a line. I thought it's from the bat, but it's not from the bat. If it is not a bat, it's a plumb in front of wicket, and the wicket number 2 is back in the pavilion. It's 14 for the loss of 2 wicket, and Kishore is back in the pavilion, and Nitin strikes. Nicely bowled, perfect delivery to ball any incoming batsman, new batsman, and it just depended very well too. So 2 was completed, and after winning the toss, elected to field first. The batting team are looking pretty good as far as the run rate is concerned. Royal Army are 14 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 7 runs per over. A little bit correction in the scoreboard. It's not 14, it's 13. 13 for the loss of 2 wicket. And for the latecomers, you're watching the match number 4 of the day, number 2. And altogether it's the 10th match of the tournament, organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedika registered Mangalore in this most beautiful UCG cricket ground. And all set now for the big day, the final day and the decider day of cricket. Who will going to become the champion of this prestigious MPL under the leadership of President of EAB MY Register Jaya, and of course the sports secretary. All the organizing committee has done a fantastic job to organize such a wonderful cricket tournament in this most beautiful UCG cricket ground. Vijesh is a very good all-rounder for the side of Mundala master batters. So we wanted to reach some runs. So 6.5 runs per hour. It's a run rate progressing here for Mundala Army. Vijesh right arm over the wicket delivers outside the line of off stump leg cutter again. Yajnesh looks that much of comfortable in the middle, as he was every time looking for some drive, but not really able to move his feet and not really getting the ball into the bat.
Vijesh again, right arm over the wicket delivers. This time again he wanted to play the reverse wave. Good change of line there by Vijesh. With a very good thinking indeed. After seeing that Vijesh is looking for the reverse stroke, he just changing the line cleverly and pitched outside the line of leg stump and beats the bat. Two very good deliveries to start with. Vijesh. Right arm over the wicket. This time pick that one towards the deep backward square leg boundary. One bounce over the row for 4 runs. The waiting and waiting, trying and at last Yajnesh just breaking the shackle, picking that one and outside the line of leg stump, dispatching that one. Even the fielder then the deep backward square leg. It's not a quick mover in that deep backward square leg region, and ball is just defeating that fielder and got a very important boundary of our Mundala army. So score jumped into 17 for the loss of 2 wickets. Vijesh going for the one more big drive. This time again lit early into the strokes, not really able to read the line of that delivery, which is around the leg of Yajnesh, and score remains on 17 for the loss of 2 wickets. Again, Sammy lofted, but straight to the hands of deep mid-wicket, between deep backward square leg. There is a fielder is situated, and Yajnesh is back into pavilion, tried to hit one more big shot, but this time he didn't got enough bat onto that, and placement is not good. 17 for the loss of 3 wicket. Mundala Royal Army, the over number 3 in progress. Oh, one more wicket. The new batsman just walking to middle, now is walking towards pavilion, and the first ball is a golden duck and played at loose strokes, not any control over that strokes. It is a well pitched up flighted delivery there from Vijesh, and batsman played it straight to the hands of short mid-off region, and he's making no mistake at all. 17 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. 3 completed in fact, and Vijesh picked up his wicket number 2. Excellent over from Vijesh. 4 runs and 2 wickets for Vijesh. Mundala Royal Army now looking in deep trouble, deep trouble. So over number 3rd will going to start from the far end. Shailesh Kodikal brought into attack from the far end. Right arm over the wicket balls. That was a sensible batting there from the batsman Rakshit, as he pushed the ball quite gently down to short mid-off region, and he picked up a single for that, and with that single scoreboard numbers on to 18 for the loss of 4 wicket. Right arm. Shailesh balls, batsman went for the big drive, not a real control over this match, and one more addition to total with the addition of that single scoreboard numbers on to 19 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. 19. Shailesh, nicely placed that one by Rakshit. Both the batsmen are dealing with the singles, rightly so. After losing 4 wickets, both the batsmen realizing that is a partnership which is much required here.
nothing wrong with the runs, but they wanted to get some good score. This time meant for the big shot. So 20 for the loss of 21 for the loss of 4 wicket. Over number 4 in progress. Before the next delivery will going to start, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 21 for the loss of 4 wickets. Still the batting side searching for the right track और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूंकि विकेट कीपर चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट टर्न फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर. Royal Army, it's 22 for the loss of 4 wicket after 4 overs. So 23 in fact for the loss of 4 wicket after completion of 4 overs. 2 overs left in overall calculation in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 2 overs. और जहां तक सवाल है आज का मैच नंबर 10 यहां पर खेला जाता हुआ और इस मैच के बाद 11वां मैच इसी श्रृंखला का खेला जाएगा मुंडाला स्टार्स और मुंडाला लायंस के बीच में. तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें. द नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड बिटवीन मुंडाला स्टार्स वर्सेस मुंडाला लायंस, एंड because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. I request the captains of Mundala Stars and Mundala Lions to please report to the stage immediately for toss procedure. तो ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा और नॉट क्वाइट मिडली गेट द लास्ट मोमेंट और गेंद पहुंची इसी लिमिट ऑन पर. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर. इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress. In fact, at the beginning of the 5th over, ये गेंद ऑन साइड पर सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा लेकिन चूंकि गेंद उनके पहुंच से बाहर वाइड का इशारा. 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard is now moving up to 26 for the loss of 4 wickets. और निस्संदेह इस वक्त रॉयल आर्मी को चाहिए रन्स. वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है. इस बार करारा प्रहार लेकिन फील्डर मैं समझता हूँ वहां पर मौजूद है. थोड़ा सा सीधे वो तैनात है और गेंद को उछाला तो थोड़ा सा वाइडर. और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को मिले 2. तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 28 रनों पर पहुंच चुका 4 विकेट के नुकसान. दूसरी चेतावनी, द सेकंड वार्निंग given to batsman by umpire Siraj to running on the wicket. विकेटों के ऊपर पिच के ऊपर रनिंग ऑन द पिच, इन फैक्ट पिच के ऊपर पिच के मध्य भाग में दौड़ने के कारण इस वक्त दूसरी चेतावनी इस वक्त दी गई है बल्लेबाज को अंपायर श्रीधर द्वारा. और अगली गेंद लेकर तैयार, ड्राइव किया. इस बार फॉलो थ्रू में मौका जरूर था कॉटन बॉल का लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद को अपने दोनों हाथों में पकड़ नहीं पाए. और जब तक गेंद को बैकअप किया तब बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान. इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद टॉप एज लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात डीप कवर पॉइंट पर. जब तक गेंद को आगे की ओर दौड़ कर आकर वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान. इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद ड्राइव किया, खाली जगह ढूंढने में सफल. बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. विजेश इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए डेलिबरेट, एब्सोल्युटली डेलिबरेट. और गेंद को इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया गया था. एब्सोल्युटली परफेक्ट डिसीजन गिवन बाय द अंपायर. डेलिबरेट इस गेंद को डिलिबरेटली इस गेंद को खेला था. कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था और सही तरीके से अंपायर ने इसे डेड घोषित किया. कोई रन जोड़ा नहीं जाएगा. इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 5 overs had been bowled.
सो लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन द रिंग्स, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में रॉयल आर्मी के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल मास्टर बैटर्स के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, जहाँ तक मास्टर बैटर्स का सवाल है तो अटैकर्स के खिलाफ उन्हें, माफ कीजिए, सुपर किंग्स के खिलाफ उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था अपने पिछले मैच में, तो इस वजह से इस मैच में विजय दर्ज करना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें अपना अस्तित्व इस श्रृंखला में बरकरार रखना है। तो ओवर की पहली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, मिस जजमेंट, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर, इनफैक्ट 32 इनफैक्ट। 2 रन इस गेंद पर बने, 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बार स्वीप किया टॉप एज, लेकिन फील्डर मैं समझता हूं वहां पर मौजूद है, डीप बैक नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हैं फील्डर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ा था, फाइन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान जो लंबा अंतर गैप है, और गेंद सीधे सीमा रेखा की सीढ़ियों पर इस वक्त टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, बेहतर स्ट्रोक रक्षित के बल्ले से लगता हुआ, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराए, रन से नहीं मिलेंगे, बेहतर गेंदबाजी, डॉट गेंद, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। सुनील गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके वाइड का इशारा, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुका है। 2+1 3 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल एंड द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 39। तो कुल मिलाकर 13 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में अब तक प्रदान कर चुके हैं। तिगनाई एक हिस्सा जिसे कहते हैं। 13 runs in the extras conceded by the bowlers of master batters at the situation out of their 39 runs which opposition side scored. That means 33% of their total runs which scored by master batters, they got 13 extras because of the bowling mistakes of the bowlers of master batters. तो रॉयल आर्मी जो 39 रन इस वक्त जोड़ चुकी है, उनमें से तिगनाई एक हिस्सा अतिरिक्त के रूप में आ चुके हैं। रॉयल आर्मी आर नाउ 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्टिल 2 balls now left in their innings. Gone for a mighty heave, not succeeded, just a single. Leg by extra number 15. 36% of their total runs came in the face of extra. That means the bowlers of Master Blasters conceded 15 extras of their 41 runs total score conceded. इस बार bowled out और इसी के साथ stipulated overs are completed. And Royal Army finished well after being a shackling start. They finished well with 41 for the loss of 5 wickets in their stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 42 for master batters. And 42 they have to score with the required run rate of exactly 7 runs per over. If they have to reach the target, they have to bat like masters in this match. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಡಾಲ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಪಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 42 the target and their innings are going to start. Exactly 7 runs the present required run rate for them, and let's see can they reach the target or not. और देखते हैं 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो कौन सी रणनीति यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. मुंडाना
मास्टर बैटर्स के बल्लेबाज उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ जब मास्टर बैटर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome back again. Thank you very much, Gopi. So 42 is a very good total to depend here for Mundala Royal Army. So Vednesh will going to start the proceedings from the commentary box, and Shrikant Bolur will going to face his first delivery as a striker in the non-strikers and Kiran Kodikal. And it's going to be a very good contest between these two teams, and wait and see how well the team will go and fight for the victory. First ball, Yorker line delivery outside the line of off stump. Quicker one from Ednish, and batsman tried to make a cover drive but not able to touch the ball, and ball misses his bat, and the third man fielder, short fine leg fielder, if in fact fields the ball back to bowler Ednish. Again, this time Shrikant picked up a quick single. Oh my goodness, it's an opportunity of run out because Kiran is not the good quick runner between the wicket. Almost is struggling to reach his home, and if it is a direct hit, I think it's all over for Kiran. A lucky escape for Kiran there. And Shrikant has got his first run and for his team as well. Chasing 42 to win the match. They off the mark with a single. One without loss of any wicket. This time swept that one over the top of the infield ball, running down to deep square leg region, and before the square leg fielder to run back to field that one, ample time for the batsman to complete that couple of runs. So not really controlled over that stroke there from Kiran, but he's a very good slog sweeper of the ball. He loves to play that shot, but as a fact that he's got enough bat onto that, able to deliver that one over the infield. Yagnesh. What a shot! Magnificent struck. One bounce over the rope for 4 runs. He's a master of reverse sweep. And how quickly he managed to pick that line and length there from Yagnesh. It's a clever ticket there from Kiran. You know exactly what bowler will going to do in this particular delivery. He knows that he will going to bowl outside the line of off stump. And he picked that one beautifully by playing that reverse stroke down to deep third man boundary. One bounce. 7 without loss of any wicket in the over number, the first in progress. Sometimes it's very difficult to set a field when you are playing when bowling in the power play overs. Only 2 fielders allowed to stand outside the circle. Nicely bowled there by Yagnesh. Equally well played there by Kiran. The slower one there from Yagnesh, negotiated very well by Kiran. Quickly seeing that slowness of the delivery, just tabbing the ball down to point region to pick the single. So with that single, scoreboard moves on to 8 on the board. 7 runs per over is the required run rate. They're going exactly what they wanted to do in the first over of the power play. Yagnesh. This time appeal for leg before wicket, but might be the ball little bit going down the leg stump. Quicker one there from Yagnesh, and Yagnesh completes his first over. It's a very good reply in the first over, chasing 42 to win this match. And looks like both the opening batsmen are given a very good start here for Mundala, a master
batters got a very good start, 9 without loss of any wicket. So next match, Mundala starts. Will going to take Mundala Lions. The captain of Mundala starts after winning the toss. They elected to field first. That is the next match will going to play after this. Still showering out here in the middle. So condition is not improved out here in USC cricket ground. A little bit showering out here. Not that much of huge rain here. It will not going to disturb the interest of the players as well as the spectators as well as the organizers. And captain brought himself from the far end. Raghu will go to bowl his first over. And went for the reverse stroke, missed it completely. Wicketkeeper also missed out, but a short third man fielder, fine leg fielder in fact, fields the ball quite beautifully, and there is no possibility of any run. Raghu fails to contribute from the bat, but he's a very good all-rounder who can contribute from the bowling as well. Raghu. Right arm over the wickets. Nice leg cutter again from Raghu, but equally well played there by Srikanth in the negation. Just seeing the turn of the delivery, it's a leg cutter. And he's just pushed the ball down to a short mid-off region, and before the bowler ran across to his right to field the ball, ample time for the batsman to complete a single. 10 without loss of any wicket. Raghu setting a field here because he know exactly the caliber of Kiran. He's a very dangerous batsman. He is very destructive batsman. Once he get in, he's been the man who can change the complexion of the match. Deep long on is there. One deep mid wicket is there. Two fielders in the onside region. This time top edge, but ball is traveling. Oh, the fielder is in that fine leg region. Tried his level best to take the catch. In fact, that before the throw coming from him, the ample time for Kiran to complete that couple of runs. Once again, this is the second time we are seeing that Kiran fails to control over that slog shape shot. But there is opportunity of the catch there. The short fine leg fielder tried his level best to run back. It's not so easy for the fielder when you try to take the catch running back. They need to keep the eye on the ball for the last moment. But this time he missed it completely from his hand. Raghu. That was a sensible bowling there from Raghu. There's a very good thinking. Seeing that the Kiran is going for the reverse switch it, changing its position. He's bowled outside the line of leg stump. Excellent thinking from Raghu. 12 without loss of any wicket. Raghu from the far end. This time he lofted beautifully down to deep long of boundary. One bounce, two bounce, and excellent piece of fielding there by the youngster there in the deep long on. The appeal for another is gone. Srikanth is short of his crease. What a great piece of work there by the fielder. Just I want to see it in the replay. Look at that one in the replay. The fielder, how quickly he is moving towards his right. It's sudden boundary. It's absolutely to a sudden boundary. But the fielder in the deep long on jersey number 31, I think so, is run a very good moving from moment there from the fielder. He collects the ball at the same time. Very good throw coming from the fielder in the deep. And the batsman finding himself well short of his crease. Excellent piece of work by the fielder. This is what you're talking about, the fielding unit. If you have got a very good fielding unit, then it is definitely going to always, it was a positive for any team. Having some good fielders in our side, you can depend the totals like this. What could be a couple of runs, what could be a boundary because of the athletic work by the fielder in the deep long on. They converted that boundary into run out. 13 without loss of any wicket. Kiran once again back to strike. But I think at the same time you need to say that it's a poor running between the wicket. That was certain couple of runs, but the batsman thinking about that could be a boundary. And that's why he runs slow
and he pays the penalty for that. This time, oh my goodness, that was a very dangerous indeed. There from Kiran, is tried to swing that one. The ball is just passing his wicket and between bat and pad, and then we missed the wicket as well. And after completion of over number 2, it's a good over there from Raghu. Just 4 runs coming from that over of Raghu, chasing 42 to win this match. It's 13 for the loss of 1 wicket. So a lot of dignitaries out here in the commentary box as well. We are having a very senior umpire, Mr. Rajeshwar, just joining in our commentary box. The very good quality umpire. More than 20 to 25 years of experience he's got. So new batsman, little bit correction, change in bowling. Rakshit brought into attack. Rakshit brought it attack. Gururaj is on strike. Beautifully. Oh my goodness, this looks like it's a big nick. The batsman tried to cut that one. He got outside edge of the bat, and the wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. The sharp chance here for the wicketkeeper behind the stump, as Rakshit off the back foot, beautifully played by Gururaj, just waiting for the turn of the delivery. It is like an away going delivery. Just got a deviation in irrigation. Rakshit tried to defeat the batsman by bowling a leg cutter, but this time Gururaj, I think he did a good job by going back and pushing the ball right in the gap down to deep cover point region for a easy single. 14 for the loss of 1 wicket. Rakshit bowls the slower one. Is looking for some extra turn. When the bowler is bowling a slower one, that means he's trying for some big off cutter, but this time Kiran is well watched and watching the turn of the delivery quite beautifully, and drives that one down to deep long off for a single, and scoreboard moves on to 15 for the loss of 1 wicket. One more single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. One more delivery, which is going to be a white, and back-to-back white deliveries. 17 on the board. Rakshit might be a little thinking about he wanted to bowl away from the bat of the batsman. So when you are bowling a leg cutter, if you bowl outside the line of off stump, that ball going further away. So need to be see that where you need to pitch the ball when you're bowling leg cutter. This time off cutter, wrong one. And batsman Gururaj once again so good on the back foot, and again just is implementing the tactics of going back and off the back foot, plays it down to deep cover point region for a easy single, and the scoreboard was on to 17 for the loss of 1 wicket. Rakshit back to his bowling. 18 on the board, 18 for the loss of 4. Oh, what a shot, but straight to the hands of fielder. This is a frustration for the batsman. He picked that one right from the middle of the bat, but not a right placement from Kiran there. Good strategy, good technique from the fielder, the captain of the opposition, keeping one fielder in the deep backward point, seeing that he's so good in the reverse stroke, and they got a big fish in the net as Kiran walks back to pavilion. It's a 18 for the loss of 2 wicket.
Nitin is a new batsman in one more experienced campaigner. Delicately played off the back foot and just steering that one down to backward point region for a easy single. So Nitin picked up just retained the strike by picking up a single then. So over number 3 completed, chasing 42 to win this match. And I think the Mundala master batters are still not in a commanding position, but they can bounce back in the remaining overs. That means in 3 overs they have to get another 23 runs to win this match. 18 ball 23 to get, and just under 8 runs per over the required run rate. And wait and see how well they manage to get those runs. And before the next over will go into commence, it's time for a change in commentary box as well. It's over to my close friend, long time partner, Mr. Gopi will going to take the microphone in our national language, Hindi. Shukriya Satish. So the testing time is now continuing here for the batsmen of master batters. They scored just 19 runs on the board after completion of 3 overs for losing 2 wickets, and in overall calculation it's going to be 23 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. And the asking run rate is now gone up to exactly 7.66 runs per over. और जहाँ तक सवाल है नए ओवर का, तो नया ओवर लेकर इस वक्त रघु गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। यह गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद में ज्यादा रफ्तार नहीं लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, वहां पर मिसफीड हो चुकी है शायद, और इस बीच बल्लेबाज तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। स्ट्राइक रन पर मौका, लेकिन नहीं, अगर नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करते तो कुछ बात जरूर बन सकती थी, लेकिन स्ट्राइक रन पर विकेटों पर शाइन करना चाहा, उनका निशाना चूका, और बल्लेबाज सुरक्षित तीसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके थे। तो रन इस वक्त चाहिए मास्टर बैटर्स को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। 3 रन बन चुके हैं, 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 20 रन न चाहिए, गेंदे बाकी हैं 17। 20 runs to get from remaining 70 deliveries. The match is now equally balanced. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, रघु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गुरुराज सामना करने के लिए तैयार। रघु की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, हालांकि कुछ हद तक अपना संतुलन नियंत्रण खो बैठे थे शरीर पर, लेकिन अंतिम क्षण में अपने आप को संभालते हुए उन्होंने गेंद को ठीक तरह से फील्ड कर लिया। बेहतर फील्डिंग, और इस बेहतर फील्डिंग की बदौलत एकमात्र रन बल्लेबाज को इस गेंद पर प्राप्त होता हुआ, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यही गेंद रिवर्स शॉट, फाइन गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और दूसरा रन भी पूरा यहां पर कर चुके हैं। डिलिकेटली प्लेड एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले को तिरछे अड़ाते हुए गेंद को फाइन इस वक्त निकाल दिया, शॉर्ट थर्ड मैन और गली के बीच, और कम से कम 2 रन अपनी टीम के लिए बटोरने में सफल, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 7 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं पहले 3 गेंदों में। एक बेहतर ओवर मास्टर बैटर्स की पारी में साबित होता हुआ। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, इस बार विकेट कीपर नहीं, मैं समझता हूं गेंद लेग स्टंप पर टकरा चुकी है, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, शफल होते हुए पूरी तरह गेंद को स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकले। मेरे ख्याल से जिस तरीके से बल्लेबाज ने पेविलियन की ओर अपने कदम बढ़ाए थे, उससे हमने अंदाजा लगाया कि शायद गेंद स्टंप्सों पर टकराई है, लेकिन नहीं, अंतिम क्षण में विकेट कीपर ने कहा कि जी नहीं, गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई है, स्टंप से कुछ दूरी पर निकली थी, शायद विकेट कीपर का हाथ स्टंप्सों पर टकराया था, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अगली गेंद का सामना करने के लिए खुद वही बल्लेबाज इस वक्त तैयार, नितिन
एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना नहीं चूका, विकेट कीपर ने विकेट चटकाया, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अपने हाथों से। और इस बीच बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं सफलतम, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 15 टू गेट नाउ एंड बॉल नाउ रिमाइनिंग इज 13। 15 रन चाहिए, 13 गेंदें बाकी। 15 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरी, स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। और इस बीच गेंदबाज रघु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुरुराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दोनों बल्लेबाज गुरुराज और नितिन आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और इस बीच गेंदबाज रघु गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद है। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को मोड़ा, फाइन इस वक्त निकलती हुई, फाइन लेग पर गेंद का पीछा करते हुए, लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करते डीप फाइन लेग सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। काफी लंबा दौड़ यहां पर लगाना पड़ा था डीप फाइन लेग फील्डर को, और इस बीच 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों के ऊपर। एक बेहतर ओवर अगर मास्टर बैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 10 रन बने, 10 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर आई थिंक मास्टर्स बैटर्स आर नाउ बैक इन द गेम। 13 runs to get in remaining 2 overs, that means in 12 balls, and the asking run rate is now straight away coming down to 6.50, right from 7.66 before the beginning of this previous over. और जहां तक सवाल है, अब मैच बराबरी पर आकर रुक चुका है, और देखना यह है कि अब मैच किसकी ओर पलटता है इन बचे हुए 2 ओवर में। तो कड़ा संघर्ष यहां पर चलता हुआ, और जहां तक अगले मैच का सवाल है, पूल ए का लीग स्टेज का अंतिम मैच, अगला मैच खेला जाएगा मुंडाला स्टार्स और मुंडाला लायंस के बीच में। और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार है। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और यहां पर गेंदबाजी संभालते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से 31 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज मेरे ख्याल से शायद उमेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नितिन। 13 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी। 13 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। हियर वी गो। पहली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके रन नहीं मिलेंगे, तो नाम इस वक्त है उनका गेंदबाज, नाम जो भी हो, इस वक्त गेंदबाजी वो आगे बढ़ाते हुए। तो 31 नंबर की जर्सी वो यहां पर पहने हुए हैं। तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की है गेंद, इस बार टॉप एज सीधे पहुंची गली फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 2 बेहतर गेंदें गेंदबाज फेंक चुके हैं। इस बार गेंद कुछ एक्स्ट्रा बाउंस, कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक को उन्होंने कुछ हद तक रोक लिया था। हाफ माइंडेड स्ट्रोक खेला, और गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद आसानी के साथ गली फील्डर के हाथों में पहुंची, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। अब 13 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 10। लतीश जो गेंदबाज 2 बेहतर गेंद इस ओवर में फेंक चुके हैं, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है, और लतीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज विजेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद लतीश की गेंदों का सामना करने के लिए, और लतीश अपनी ओवर की तीसरी गेंद
लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर गेंद पहुंचती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और थोड़ी सी हड़बड़ाहट के बाद, थोड़े से टटोलने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 11 टू गेट नाउ एंड 9 बॉल्स टू गो इन देयर इनिंग्स। और एक बार फिर से लतीश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, बट आई थिंक इट मिसिंग जस्ट आउटसाइड द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने का हर तरीके का प्रयास यहाँ पर करते हुए मास्टर ब्लास्टर्स के बल्लेबाज, जबकि रन रोकने का हर तरीके का प्रयास यहाँ पर करते हुए रॉयल आर्मी के गेंदबाजी। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को खेला गली फील्डर के हाथ में, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और कोई मुश्किलों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा 1 रन प्राप्त करने में। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। और अब चाहिए रन्स 9, गेंदे बाकी हैं 7। तो लतीश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछला जा चुके, बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ यह बेहतर ओवर की समाप्ति कर चुके हैं लतीश। सिर्फ 4 रन इस ओवर में प्रदान किए उन्होंने, 1 विकेट भी प्राप्त किया और इस ओवर की बदौलत मैं समझता हूं रॉयल आर्मी इस मैच में वापस आ चुका है। अब इक्वेशन कुछ हद तक कठिन मास्टर बैटर्स के लिए। 9 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, 9 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज। So last over starts, match deciding over in fact starts in this match और किशोर गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त गुरुराज के पास, जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। और इस बीच पहली गेंद लेकर किशोर फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात ऑन साइड पर। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को उछाला है, नॉट क्वाइट मिड विकेट और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। सिली मिड ऑफ फील्डर ने कैच को लपक लिया है और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिर चुका है। अब मंजिल कुछ हद तक कठिन होती हुई, 9 रन चाहिए 5 गेंदों में। और जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं पिछले 1.1 ओवर 7 गेंदों में बेहतर कमबैक किया है मास्टर्स बैटर्स के गेंदबाजों ने, फलस्वरूप इस वक्त उनका तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ, लेकिन मौका यहां पर जरूर है रॉयल आर्मी को बाउंस बैक करने का। 9 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, 9 टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज। मास्टर बैटर्स को इस वक्त चाहिए कि गेंदबाजों को इस वक्त चाहिए डॉट गेंदें, जबकि यहां पर रॉयल मास्टर बैटर्स को इस वक्त चाहिए रन्स, जबकि रॉयल आर्मी के गेंदबाजों को चाहिए डॉट गेंदें।
मास्टर बैटर्स के बल्लेबाज इस वक्त रन से बनाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को झालना चाहा, बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, इस गोड़ा इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 34 रनों पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 8 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज, 7 फॉर टाई, 8 फॉर विन एंड 4 बॉल्स टू गो इन द इनिंग्स। और गेंदबाज किशोर दो बेहतर गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद इस बार धीमी गेंद, ढीली गेंद भी थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल लॉन्ग स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं। हालांकि बल्लेबाज के पास काफी वक्त था इस गेंद को उछालने का, लेकिन अंतिम क्षण में गलत लाइन पर खेल गए और इस ढीले गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और अब द इक्वेशन सीम्स टू बी मच स्टिफर नाउ फॉर मास्टर बैटर्स, 8 टू गेट, 3 डिलीवरीज टू गो। और अब ऐसा कहना पड़ेगा एक करारा स्ट्रोक उन्हें लगाना होगा चौका या छक्के के रूप में इस मैच में वापस आने के लिए। तो कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी गेंदबाज से और उन्हें कुछ सलाह इस वक्त देते हुए कि किस तरीके की गेंदबाजी बचे हुए गेंदों में उन्हें अपनानी है। और इस बीच गेंदबाज तैयार, 8 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज, हियर वी गो। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद फुल टॉस और कॉट बिहाइंड द विकेट। He just played that one too early and got the penalty. टॉप एज पर गेंद टकराए और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की विकेटों के बीच और इसी के साथ विकेट गिर चुका। अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौका या छक्का ही मास्टर बैटर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। 8 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी, 8 टू गेट फ्रॉम 2 balls. So what a fantastic comeback made by the bowlers of Royal Army in the last 10 deliveries. एक वक्त 12 गेंदों पर 13 रन बनाने थे, उसके बाद पिछले ओवर में लतीश ने बेहतरीन गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए और उस सफलता के सिलसिले को इस ओवर में भी गेंदबाजी में जारी रखते हुए किशोर 4 बेहतर गेंदें फेंक चुके हैं, सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटें प्राप्त करने में सफल। 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं और इस वक्त देखते हैं इन 2 गेंदों में क्या चौका या छक्का मास्टर्स बैटर्स के बल्लेबाज लगा पाते हैं नहीं। 8 टू गेट फ्रॉम 2 balls, 7 for tie, 8 for win and the second last ball of the match is now coming up. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाज की गेंद फ्लाइटेड, उछाला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। प्लेसमेंट too wrong and he paid the penalty. Last ball now remaining, 8 to get, 7 for tie. अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई वाइड या नो बॉल ना फेंकते तो निस्संदेह रॉयल और आर्मी की विजय निश्चित है यहाँ पर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज और यहाँ पर क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है, यहाँ पर नहीं कहाँ पर भी कहा जा सकता है, क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। और यहाँ पर एक गेंद में 8 रन जरूर बनाने हैं, अगर अंतिम गेंद में गेंदबाज नो बॉल या वाइड फेंकते तो मौका जरूर है मास्टर्स बैटर्स को इस मैच में कमबैक करने का। देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या होता है। मैच डिसाइडिंग बॉल कम्स, राइट आर्म ओवर द विकेट, किशोर की गेंद, सही गेंद, उछाला, मिड विकेट पर गेंद जाती हुई 1 रन सिर्फ मिलेगा और इस 1 रन के साथ मास्टर बैटर्स आर लॉस्ट द मैच बाय 6 runs and Royal Army registered a 6 runs thrilling victory against Masters batters and with that 6 runs thrilling victory they bagged the complete points. So the next match will be the second last match of the league stage, will be played between Mundala Stars versus Mundala Lions और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, थैंक यू, धन्यवाद।
So thank you very much, Gopi. Back to the match number 11 and fifth match of the day number 2 will going to start between Mundala Stars versus Mundala Lions. After winning the toss, captain of the Lions looks like they elected to field first. Mundala Stars captain won the toss, elected to field first. So thank you very much. Congratulations, Kishore Parangipete, for your wonderful performance in the previous match. Is responsible for the victory for your team, as handling the pressure in the last moment, in the last over, picked up 3 wickets and scored some runs for his team. And here is the first run came here for Mundala Lions, one without loss of any wicket. This time slashes that one, but not quite able to get that one, get past that one from the infield. In fact, that short extra off fielder fields the ball. There is no chance of any run at all. Dayakar with a short run up. Right arm over the wicket. This time he lofted that one, but straight to the hands of deep backward square leg. So quite unfortunate whenever you are choosing one fielder out of 2. It's a power play is on, and only 2 fielders outside the circle, and the left-hand batsman Suman Mitesh choosing one fielder, and he's back into pavilion. So it's a very important match for both the teams, and seeing that points table in a Group A. Of course, Mundana Strikers are in a top. They got 5 points after playing the 3 matches. They won 2 and 1 tie match. And Mundala Challengers, they're in a second place after playing 3 matches, 1-1, and they lost 2 matches and they got 2 points. But here is Mundala Stars. They played 2 matches. Both the teams has played 2 matches. They're playing their last match. The winning team has got opportunity to qualify for the second place in the Group A. So it's going to be a very, very interesting match. Both the teams definitely they fight hard for the victory, because whichever team wins, they will go into qualify. They will go into qualify in the Group A by getting a second place. Again, down the leg stem going to be a white. Both the teams, what we are talking about, the points table, as Mundala Stars they got 2 points, and Mundala Lions they got 1 point. This time one more single has been taken there by the batsman Avinash, and with that single scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. So it's a blessing of God, isn't it? Because somewhere in Mangalore, other places there is a raining, but here in UCG ground, looks like it's a very good condition. Oh, right. That picked that one. Ball is in there, but it was a travels a long way. It's a huge 6. This looks like it's a first 6 of the day number 2, and it is a top edge. It's not really came from the middle of the bat, but it's a top edge. But looks the way the ball is traveling. And it's traveling and got the distance straight into the MPL VIP stand.
So thank you, DJ, for a little bit entertainment, which is really required sometime in the middle of the matches to get some entertainment for the spectators. Thank you, DJ. Please stop. And so 9 for the loss of 1 wicket. So Suman is got that 6. DJ, please stop the music. Thank you. 9 for the loss of 1 wicket, and bowler will going to start the second over from the Sri Ramabhajana Mandira end. Right arm over the wicket. And Avinash just seeing the ball and just left that one, rightly so, because that was a wide outside the line of leg stump. 10 double figure is on the board. Quickly they got a double figure, Lions. And they wanted to set a big target in front of Mundala Stars. Avinash, right arm over the wicket. Delivers. Oh, that was a fantastic delivery, but ball definitely going to be the bat involved, saving the batsman from the leg before wicket. And a very lucky escape here for Avinash. A sharp incoming delivery from the bowler. And unlucky for him, that ball is got a little bit inside edge of the bat of the batsman, saving from the leg before wicket. And score is 11 for the loss of 1 wicket. All we can see in the scoreboard, 4 ones, 11 for the loss of 1 wicket, and 1 over completed. And 1.1. This is also 1. Altogether, it's a 5 ones out here in the scoreboard. We have Ronson in the scoreboard as the scorer, my close friend Mr. Sachin Kamath. In the field umpire Roland Pinto at square leg Arish Padil. It is the next one, right arm over the wicket. Again the quicker one. This time loved a feel for leg before wicket. Umpire again Roland Pinto not impressed, as is not having that much of evidence to give the leg before wicket. That ball certainly little bit going down the leg stump, and again one more addition to total 12 for the loss of 1 wicket. But still I think as a bowler Rajesh is so far doing a fantastic job. He's just testing the temperament of the batsman with some the variation and mixing up the delivery very well. Ritesh this time swept that one, single-handed stop there by the fielder. Excellent field, because that ball went very quickly. The batsman tried to swap that one, tried to beat the infield, but not quite able to beat the infield. Ball went straight to the hands of short fine leg. Score remains at 12 for the loss of 1 wicket. So far it's a very quiet over, good over. Again nicely bowled, equally well played there by the fielder. There was a little bit fumble from the fielder. He's trying for the run out, tried to collect that one by running front to field the ball, but he misses the ball completely. Then Avinash complete a very quick single. 13 for the loss of 1 wicket. Ritesh. This time lovely shot, beautifully drawn, down to deep long off for boundary for 4 runs. Placement is perfection in the negation, and timing is so exquisite in the negation there from Suman. And he's looking pretty good after getting bound 6 in the previous over with the top edge. But this is the clean shot, as clean as a whistle. And you know exactly where the fielder is. There is no protection has been given in the deep long off. Once you go over the top of that fielder, and that's very difficult to stop the boundary, because quick outfield out here in UCG. 17 for the loss of 1 wicket. Again, he tried to get one more. This time is a slower one there from Ritesh, so that he couldn't manage to get that much of timing behind the stroke. One more productive over coming in favor of Mundala Lions. The Lions are roaring here. 18 for the loss of 1 wicket after completion of over number 2. So 18 for the loss of 1 wicket, 9 runs per over. Now captain
thinking that yes, it's my time to come and do something special from the bowling, because after conceding 18 huge runs in the first over of the power play, then Kiran have to do something special if they wanted to be in this game, in this competition. So Kiran just setting a field there. One at backward point, one at short mid off. The cover point going back to deep cover point. Mid off going back to deep long off. One at short fine, one at deep backward square, on a deep mid wicket. One at deep long on, one at short mid wicket. And here is Kiran, right arm over the wicket, bowls. This time he picked that one. The fielder there in the deep, he comfortable, he'll going to held the catch. That's what Kiran wanted to do here. He wanted to break the partnership. He wanted to put some big stop on the run rate. And if he wanted to put some big stop on the run rate, he have to pick the wickets. And Kiran producing that very important wicket. Flighted delivery, inviting the batsman to go for the big shot, taking the invitation, lofted that one, and but placement is not enough. Placement is not enough. After that power play, we can see that so many bodies out there in the deep. And a deep wide is long off, long on field, making no mistake at all. 18 for the loss of 2 wicket. One tidy over which is required for Stars, but at the same time sensible batting which is required for the Lions after getting a very good start in the first 2 overs. Sensible batting. If they are able to rotate the strike for each and every balls, remaining deliveries, then every opportunity of they are getting past that 42 to 45 runs in that stipulated 6 overs. So wait and see how Kiran will going to get another 5 deliveries for his team. Will going to bowl another 5 deliveries for his team. Kiran, right arm over the wicket again, looking for the big off cutter. A chance of run out there. Oh, little bit mix up, chance of run out. Back and throw there from Kiran. But total misunderstanding between the wicket between Mohandas as well as Avinash. And luckily that Mohandas is survived from that run out. The opportunity in the both hand. But the fielder in the short fine leg region misses the opportunity completely, and they got a single in the form of bye. 19 for the loss of 2 wicket. Kiran bowling with a short run up. Again Avinash nicely swept that one down to deep square leg region for an easy walkable single. With that single scoreboard numbers on to 20 on the board for the loss of 2 wicket. For the latecomers, you are watching this prestigious Mundala Premier League 2022, which is organized by Akila Bharata Mundala Yuva Vedika registered bank. Oh, that was a magnificent delivery. That was a magnificent delivery, and look at the tactics of Mohandas, not moving his front foot where he was standing, trying to put the bat onto the line of the delivery, but he's left the gap between bat and pad, and ball is just doing the trick. Just look at that one in a replay. That was a huge gap between bat and pad, and that ball is an in cutter from Kiran. He's got a master. He's a master of bowling in cutter and sharp incoming delivery, and defeats the bat of Mohandas, and he's cleaned him up. So So 20 for the loss of 3 wicket now. The 2 wickets here for captain of the side. So new batsman in is Ajay. This time again Kiran trying for one more big off cutter, but this time he didn't got that much of turn he's looking for. And that's why that's a wide ball, wide outside the line of off stump. 21 for the loss of 3 wicket. Kiran delivers. This time wrong one, and just will away going delivery. Leg cutter. The batsman off the back foot, Ajay just steering it down to short turn man region for a single. With that single scoreboard moves on to 22 for the loss of 3 wicket here in over number 3 in progress. 3 in progress. Kiran bowls. That was a good strategy there from Avinash. Almost covered his stump first, not really allow the bowler to pick any kind of delivery to defeat his defense. And he just flicks that one off his legs down to short fine leg region for a single. Retain the strikes. 3 overs completed after completion of over number 3. And
looks like the Lions are a little bit now on the back foot. 23 for the loss of 3 wicket after they got 18 runs in 2 overs. Now 23 for the loss of 3 wicket. That means captain of Stars did a good job. Kiran, the bowled excellent over of 5 runs and 2 wickets in that over. Time is exactly 1 past 23 in the afternoon, but still we can see that is a good condition actually. It's a very good condition for the players. There is no that much of humidity. The sun is not that much of bright sunshine. It's a fantastic condition out here in the UCG cricket ground. Again from the far end. This time full toss delivery. Batsman just reaching for the delivery. Avinash drives that one down to deep cow point region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 24 for the loss of 3 wicket. Avinash bowling from the far end. Right number over the wicket to Ajay. Ajay this time he got that one, the full toss delivery, improvised by playing that switch it down to deep backward point region. They're looking for the third. Avinash turning out for the third, and Kiran looking for the run out, but wide throw coming from Kiran, and they completed 3 valuable runs. Excellent running between the wicket, especially Avinash is calling for his partner for the third run. You know exactly he's the one is running towards a dangerous end, and they got very important 3 runs now. 27 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. The run, not that much of a bad run rate out here. The good run rate is maintained by the batsmen of the Lions against the Stars. I already mentioned about that the importance of winning this match for both the teams. The winning team straight away they will go into qualify. In Group A, they are going to grab a second place. And again, Avinash is playing a very good role actually, Avinash. And so far he's been a very cool and calm and just rotating the strike each and every delivery. 28 for the loss of 3 wicket in the over number of 4 in progress. Avinash to Ajay, pedal that one quite nicely down to square leg region. One more walkable single for Ajay, and with that single scored moves on to 29 for the loss of 3 wickets. So far both the batsmen are dealing with the singles in this particular over, and they're playing as per the condition required. Again quite deliberately edging it down to gully region for a single by Avinash. They're rotating the strike and each and every delivery they got a run. In fact, the first delivery is a dot one, but they got altogether 7 runs coming from that over. Excellent going here for Mundala Lions. After completion of over number 4, it's a 30 for the loss of 3 wicket. .25 runs per over, the run rate progressing. In the similar run rate, if able to get that runs in the remaining 2 overs. The 15 plus runs is going to be added. The projected score will going to be 45. And but they need to deal with this over, the over of Kiran, who picked up 2 wickets in the previous over by conceding 5 runs, and he will go into ball his second and last over of his quota. Starts with the delivery, but wicketkeeper behind the stump missed it completely. There was a chase here for the fieldsman. They're looking for the second. Not a good piece of fielding there by the fielder. That was a lucky couple of runs. It will go into frustrate the bowler. Kiran, look at that one. He's the captain of the side. He's not impressed with the effort of that fielder at short fine leg. It's a bye call by umpire Arish Padil. Wicketkeeper fails to collect the ball. At the same time, the short third man fielder and fine leg fielder couldn't manage to run quickly towards the back to field the ball quickly. And both the batsmen are very good between the wicket, and they got a couple of runs. 32 for the loss of 3 wicket. Kiran. Again, this time Avinash went for the reverse sweep.
Again, the wicket keeper, even the change of wicket keeper, but result is the same. And again, one more extra in the form of bye. 33 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. 5 in progress. Kiran. This time he bowled a leg cutter, but a very short pitch one, and not really going from the good length spot. The wide throw coming from the fieldsman in the backward point region. So batsman one stage they're looking for the second, but they're going against. 34 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Sensible batting there from these two batsmen, Ajay and Avinash, not really losing that tempo and just rotating the strike very well this time. This is not a good bowling from Kiran, as he wanted to bowl the off cutter, but he pitches the ball on the middle stump. When you pitches the ball on the middle stump, bowling off cutter, that certainly ball is going down the leg stump. Wide call by umpire. 35 for the loss of 3 wicket. Oh, that was a sensible Avinash. Frustration for the bowler, because he's not allowed Kiran to bowl any kind of dotted delivery, putting his bat onto the line, into the line of the delivery, rotating the strike every time. 36 for the loss of 3 wicket. And now Kiran, right arm over the wicket. This time he went for the reverse. Again there's a bye call by umpire. One more extra, and with that extra scoreboard moves on to 37 for the loss of 3. Altogether there is a 4 runs in the form of bye. Again a change in the wicket keeping. The short fine leg fielder comes into picture now behind the stump, and Kiran bowling away from us to Avinash. Drives, beautiful shot there from Avinash, down to deep long of not more than a single for that. Again, not that much of effective over there from Kiran, but you cannot blame Kiran. It's a by extras considered. 38 for the loss of 3 wicket after completion of over number 5. So thank you very much, Kiran sir. So 38 for the loss of 3 wicket, and the last over will going to start from the far end. Before that, the next match will be last match of the league, Mundala Super Kings versus Attackers. And I request both the teams' captain, please report here immediately. So first ball, the flighted delivery outside the line of off stump. Umesh ball that delivery, and Avinash first time seeing that is just misses the ball completely from the bat, and there is no possibility of any run. Mukesh balls. This is the one area. Oh, directed, that is gone. Ajay not in the picture at all. When it was a direct, it is happened in striker's end, and the partnership is just broken by the fielder at short fine leg region by hitting the stumps directly, and the batsman not in the picture. 39 for the loss of 4 wicket. The partnership is broken. The very good partnership for the 5th wicket. 13, I think it's a 19 runs partnership between these two comes to an end. Still they have to 5 deliveries left in the innings of Lions. Umesh balls. Again the one more opportunity for the fielder. This time he's trying the run out in the non-Zygas end, but no one there to collect the throw, because the bowler, of course, is well in front of the stumps. He couldn't manage to collect the throw from the fielder, and batsman got opportunity to complete the single. 40 for the loss of 4 wicket. Umesh. Right arm over the wicket. Beautifully ball. Ball little bit kept low at the time of Avinash going for the cut shot, and he missed it completely from the bat. But Umesh, a little bit happy face, is going back to his bowling mark. Mukesh. Avinash drives that one down to mid-off region for a single. Good piece of fielding there by the fielder at short mid-off
41. A good score on the board for the Lions. They're dealing with the last over, the final over of their innings. Any score around 45. It's going to be a good score to depend in this condition. So again, they're going for the single chance of not in the strike. No strikers, and again the wide +1, 2 gifted runs. 2 gifted runs here for the batters, for the Lions. 43 for the loss of 4 wicket, Umesh. Avinash picked up a single here. One more addition, 44. The last delivery of their innings is coming up. Pradeep is on strike. Can he able to get one big shot here? This time, chip that one beautifully right in the gap towards the deep extra cover boundary. Good piece of fielding there by the fielder. Then before the throw coming from the deep, both the batsmen completed 2 and they're looking for the third where it is not there. So that's the end of innings. They completed their stipulated 6 overs and they scored 46 valuable runs and they set a target of 47 to win this match. Just under 8 runs per over is the required run rate. And I think Lions captain too happy to see that scoreboard. They got 46 runs in 36 balls and they set a target of 47 to win the match. That means batsmen did the job for Lions. Now all up to the bowlers of Lions, how well they managed to defend that total. At the same time, coming back to the Mundala stars, they got some stars just like what they named they got. They got some star players in the side, but being the star is not important, but performing in this difficult condition is very important here for the stars, Mundala stars. And wait and see how well they will go into climb that runs here. And it's going to be a more interesting game is coming up in the remaining 6 overs. I would like to call upon Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. ಮುಂಡಾಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಾಲ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ Mundala Super Kings and Mundala Attackers to please report to the stage immediately for toss procedure. Starts batting. धन्यवाद सतीश. तो इस वक्त एक लंबा सा लक्ष्य स्टार्स के सामने
लायंस ने रखा है और लायंस को बनाने माफ कीजिए स्टार्स को बनाने 47 रन निर्धारित 6 ओवर में. 47 द टारगेट सेट बाय लायंस फॉर स्टार्स एंड द इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. अविनाश द स्ट्राइकर एंड किरण द नॉन स्ट्राइकर. द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रितेश और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद ड्राइव किया बैकफुट पर जाने के बाद गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर. और इससे पहले कि जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर स्टार्स के लिए शुरू हो चुका है. एक रन बिलाके से नुकसान के और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है बिल्कुल सतर्क शुरुआत की एक मजबूत शुरुआत की उन्हें जरूरत इस वक्त स्टार्स को. इस बार बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. मच स्लोअर लाइन एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है एक रन बिलाके से नुकसान के. और फिर से एक बार गेंदबाज मितेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर की और दिशाहीन गेंद. वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 for none इन द ओपन नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. आज का मैच नंबर 5 यहाँ पर खेला जाता हुआ लीग दौर का दूसरा अंतिम मैच. सेकंड लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज इस ना प्रोग्रेस किया. ड्राइव किया जगह नहीं बना पाए रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि थ्रो पहुंच रहा है गेंदबाज द्वारा. फॉलो थ्रू में जो गेंदबाज ने गेंद को फील्ड की थी उसके बाद थ्रो किया था स्ट्राइकर एंड पर. एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. 2 रन बिलाके से नुकसान के. एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज मितेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और फिर से एक बार दोनों बल्लेबाज इस बीच कुछ बातचीत करते हुए किरण और अविनाश और अपने स्वस्थान पर यहाँ पर लौटते हुए. एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है मितेश का जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रन वो प्रदान कर चुके हैं 3 गेंदों में. और 3 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी. पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में. गेंद को इस वक्त खेलने में चूके थे विकेट कीपर भी चूके लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर सतर्क. गेंद को 20 गज के दायरे के अंदर उन्होंने फील्ड किया और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर 2 रन बिलाके से नुकसान के. और एक बार फिर से मितेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. स्ट्राइक एक बार फिर से किरण के पास और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार मितेश की गेंदों का. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ. डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा. जस्ट अप्लाइड दैट वन, गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड स्कूप्ड इट अवे इन स्टाइल क्लियरिंग द एनफील्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट हैज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट. परफेक्टली स्ट्राक केम फ्रॉम द बैट ऑफ किरण. तो इस मौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद ऑफ स्टंप से काफी. ओह, दिस इज एन बैड मिस. दिस इज एन एब्सोल्युटली बैड मिस. गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री एंड 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल ऑफ मुंडाला स्टार्स नाउ. ऑफ स्टंप से काफी बाहर. ना सिर्फ विकेट कीपर जो के बल्कि शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर भी गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद फाइन निकलती हुई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए हो चुके हैं. 5 वाइड्स उनके खाते में जुड़ चुके हैं. तो जैसे ही चौका किरण ने जड़ा अगली गेंद पर दबाव सीधा स्ट्रेट अवे गेंदबाज के ऊपर गिरा और इस दबाव की बदौलत उन्होंने ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद की और 5 रन तोहफे के रूप में उपहार के रूप में प्राप्त कर चुके हैं. 11 रन बिना किसी नुकसान के. और
एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद को निकाला इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बढ़ती हुई काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर और इससे पहले की डीप मिड विकेट के फील्डर वाइडिश लॉन्ग ऑन तक दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, 13 रन बन चुके हैं और कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद तो 3 बेहतर गेंदें पहले मितेश ने फेंकी थी जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए थे, बाद के 3 गेंदों में उन्होंने 11 रन प्रदान किया। कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 47 रनों के लंबे से लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टार्स इस वक्त एक बेहतर शुरुआत कर चुका है। दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड स्टार्ट फॉर देम। 13 रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट ओवर, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 47 in 6 overs. Mundala Stars made a pretty good start now. Next match will be the last match of the league stage. Will be played between Mundala Super Kings versus Mundala Attackers. And because of that, I request all the players of the next match to please get ready for the next match. और कुछ बातचीत यहाँ पर अंपायर्स और खिलाड़ियों के बीच में चलती हुई, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त यहाँ पर पेविलियन की ओर कुछ इशारा करते हुए उन्होंने स्कोर की मांग की और स्कोर यहाँ पर देखा जाए तो 13 रन पहले ओवर के बाद है। शायद ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಬಳಿ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಲಿ. तो एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर 13 रनों के इस वक्त कर चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ पर तृतीय अंपायर यहाँ पर वीक्षण करते हुए तो मॉनिटर का वीक्षण इस वक्त करते हुए तृतीय अंपायर, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो टोपी और गेंद दोनों एक साथ में था फील्डिंग करते समय फील्डर के हाथों में। तो यहाँ पर 5 रन पेनल्टी के तौर पर इस वक्त दिए जाएंगे बैटिंग साइड को। तो क्रिकेट के नियमानुसार जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो टोपी को गेंद के साथ पकड़ना क्रिकेट के नियम के विरुद्ध है। तो यहाँ पर 5 रन पेनल्टी के रूप में यहाँ पर बैटिंग टीम को दिया जा रहा है। तो 5 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। तो एक बेहतर शुरुआत, दिस इज एब्सोल्युटली गुड स्टार्ट, और इसमें फील्डर की गलतियों का भी मेहरबानियों का भी नतीजा है यहाँ पर, क्योंकि 5 रन वो पेनल्टी के रूप में प्रदान कर चुके हैं। टोपी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया था और आखिरकार यहाँ पर 18 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और अब लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 47 minus 18, that means 29 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs, and straight away the asking run rate is now coming down to 5.80 runs per over.
पारी की शुरुआत में लगभग 8 रन उन्हें बनाने थे, 7.85 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन बनाने थे। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद सीधा आस्किंग रन रेट उतर कर 5.80 पर आकर रुक चुका है। पहले गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप किया, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की और गेंद बढ़ती हुई और सीमा रेखा की दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, ऐसा कहना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप कर दिया। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ किरण के बल्ले से और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो 22 रन पहले ओवर में बने, 1 ओवर कंप्लीटेड, 22 रन स्कोर्ड, और इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है उनके लिए। तो 25 रन और चाहिए और 5 ओवर का खेल बाकी है, तब 5.1 ओवर में 29 रन बनाने थे, अब 5 ओवर में बनाने हैं 25 रन। Asking run rate straight away coming down to exactly 5 runs per over. Super Kings ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा और इस बार मिसफील्ड, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां पर जुड़ चुका है, तो रनों की बौछार यहां पर लगाते हुए मुंडाला स्टार्स के बल्लेबाज, और इस बार गेंद को मोड़ दिया था, गेंद सीधे पहुंची थी स्क्वायर लेग पर, लेकिन वहां पर जो फील्डर खड़े हुए थे वो ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और गेंद उनको बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा के दीवार पर जाकर टकरा चुके डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए। आसानी के साथ रन बनते हुए 26 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, गेंदबाज सुमन एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ऑन साइड पर मोड़ा, एक बार फिर से खूबसूरती के साथ कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 28 रन धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ मुंडाला स्टार्स, और निस्संदेह परेशानियों के बादल इस वक्त साफ मंडराते हुए लायंस के गेंदबाजों के ऊपर। एक बार फिर से गेंदबाज सुमन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अविनाश के लिए यह गेंद, इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, चूंकि परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में लायंस को वापिस ला सकती है। और इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश किया, रन्स नहीं मिलेगा, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद इस वक्त उन्होंने फेंके थे और बल्लेबाज ठीक तरह से जगह नहीं बना पाया, रन्स बल्लेबाज और टीम को इस गेंद पर नहीं मिला। और एक बार फिर से सुमन गेंदबाजी करते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, दाहिना के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार ओह दैट इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी, दिस इज एन absolutely fantastic delivery, much straighter line, deviating a little bit at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. Score इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, not quite middling it but he gets a single for that stroke, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो इस ओवर में कुल मिलाकर रन्स बने 7 runs scored in this over. One more good over in Mundala Stars' point of view came to an end. 7 runs came from it, and after 2 overs, still they are looking in a commanding situation. It's 29 for none with a run rate of exactly 14.5 runs per over they scored. And let's straight away, once again coming back to the equation, 47 minus 29, that means 18 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. तो 2 ओवर पावर प्ले के जो थे, उस 2 ओवर में जितना फायदा उन्हें उठाना था वो ये दोनों सलामी बल्लेबाज उठा चुके, 29 रन अपनी टीम के लिए जोड़ चुके हैं। और निस्संदेह पॉजिटिव स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं,
वो इस वक्त कर चुके हैं 29 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स और 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी 18 रन और चाहिए 18 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 4 ओवर्स and at this situation the required run rate seems to be much easier for them. ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी that is once again a bad miss. एक बार फिर से गेंद इस बार शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के टांगों के बीच से निकलती हुई और सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 5 रन वाइड्स के रूप में 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल 34 नाउ विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट. गेंदबाज की गेंद इस बार स्वीप करना चाहा नॉट क्वाइट मिडली गेट गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को बीट करने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 34 रन पिलाके से नुकसान के. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाइनात ओवर द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला सीली में डाउन पर रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं 35 12 टू गेट नाउ और तख्ता इस वक्त मुंडाला स्टार्स का भारी लगता हुआ. यह गेंद ऑफ कटर चेप किया एनफील्ड क्लियर करते हुए बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और इस बीच एक रन मिला. दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी झिझक दोनों बल्लेबाजों के बीच में और इस बीच आखिरकार एक रन के साथ संतुष्ट. 36 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 36 फॉर नन इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. चेतन दाइना तो ओवर द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया. सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए जब तक एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हुए लेकिन इस बार स्ट्रोक खेलने का चाहता गेंद हवे में और दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपक लिया. He's got a toppage on that. टॉपेज पर गेंद टकराई थी और काफी देर तक हवे में रही और अपने दूसरे प्रयत्न में वहां पर फील्डर ने इस कैच को लपक लिया. तो 37 रनों की आरंभिक साझेदारी के बाद यह साझेदारी यहां पर टूट चुकी है. आफ्टर बीइंग 37 रन्स ओपनिंग स्टैंड दिस पार्टनरशिप हैज बीन ब्रोकन इन द फेस ऑफ किरण आउट फॉर 11 after playing a good knock of 11 runs including 2 boundaries. He's back into pavilion. Kiran the man and the first wicket lost for Mundala Stars. It's 37 for 1. So number 3 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करेंगे चेतन की गेंदों का. चेतन ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. विकेट कीपर चुके हैं शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में. रन्स नहीं मिलेंगे और इसी के साथ ये ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. सिर्फ 10 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में. Just 10 to get in remaining 18 deliveries with a required run rate of exactly 3.33 runs per over. So next match, Tigers after won the toss, they elected to field first against Super Kings in the last league match of the stage. तो इस बार ऑन साइड पर गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से निकली वाइडिश लॉन्ग ऑन पर. नॉट मोर देन अ सिंगल इन फैक्ट. 38 नाउ. अगला मैच डिसाइडर गेम दोनों टीमों के लिए. करो या मरो, डू और डाई सिचुएशन फॉर Mundala Super Kings and Mundala Attackers will clash to entering into the semi-final of this competition in the last match of the league stage. In the next match, in fact. और ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. 16 गेंदें बाकी. 9 रन चाहिए विजय के लिए. 9 to get from 16 balls. ये गेंद terrific. This is an absolutely fantastic delivery. गेंद के उछाल को भाप नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो स्कोर रुक चुका है 38 रनों पर और फिर से एक बार गेंदबाज सुमन तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा. बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. गेंद को बिना देखे रन लेने की जल्दबाजी उन्होंने दिखाई. गेंद सीधे पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया.
So 9 to get now, and 14 balls remaining. So 38 for 2, 9 to get, 14 balls remaining. और अभी भी तख्ता भारी लगता हुआ मुंडाला स्टार्स का. सुमन नए बल्लेबाज के लिए 2 गेंदें इस ओवर में बाकी. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके के खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में ड्राइव, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त ढकेला था, जगह नहीं बना पाए और फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया. एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ सुमन का, और एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त वो गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट. 9 to get from 13 deliveries. Dot balls badly required for the bowlers of Lions cricketers to get back into this match. Leg stump से बाहर, wide का इशारा. 1 more run added to the total. 39 for the loss of 2 wicket. 8 to get now. 13 balls remaining. इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा. And it's 40 for the loss of 2 wickets, and 4 overs had been bowled. So 7 to get from 2 overs now. Thank you very much. And 7 to get from 12 balls. First ball, just over the bowler's head. And this time, this could be in trouble. This could be in trouble if the throw was directly to the stumps. थ्रो इस वक्त लगते लगते बचता हुआ, और इस गेंद पर बाल वाल बच चुके हैं बल्लेबाज, और बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट उन्हें दिखाई थी, लेकिन भाग्य उनका साथ देता हुआ निशाना स्टंप्सों पर नहीं टकराया. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 40 रन 2 विकेट के रुझान पर. 11 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए. डॉट गेंदों की सख्त दरकार लायंस के गेंदबाजों को इस मैच में वापस आने के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन आउट का खतरा, लेकिन इस बार इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है, और यहां पर देखना है कि तृतीय अंपायर जो श्रीराज है वो इस रिप्ले को देखने के बाद क्या निर्धार देते हैं. काफी नजदीकी मामला था और सही तरीके से अंपायर रोलैंड पिंटो ने तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की है. देखते हैं क्या होता है.
and the decision came and he's gone. He fell just short of a crease at the last moment when the wickets are disturbed. तो एक विकेट यहां पर खो चुका है और एक डॉट गेंद यहां पर और फेंकी जा चुकी है। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 10। द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। चंद डॉट गेंदे और अगर गेंदबाज लायंस के फेंकते हैं तो निस्संदेह लायंस इस मैच में वापस आ सकता है। एक वक्त ऐसा लग रहा था आसानी के साथ इस मैच को स्टार्स जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक लायंस के गेंदबाजों ने की और आखिरकार अब मैच को लगभग बराबरी पर लाकर वो रोक चुके हैं। चंद डॉट गेंदे लायंस को पूरी तरह इस मैच में ला सकते हैं। तो इस वक्त देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज अविनाश, नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अविनाश। तो अविनाश के लिए फुल टॉस, नॉट क्वाइट मिडल, एक रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन मिलेगा, जरूर मिलेगा और एक रन मिला और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रन। 6 to get now from 9 deliveries. What a match is now progressing here. Dot balls badly required for the bowlers of Lions to get back into this match, and runs are badly required for Stars for victory. इस बार off the toes, मिसफील्ड इस वक्त मिसजजमेंट और इस बीच 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हैं। 30 रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन जहां तक सवाल है विकेटें उखाड़े गए थे गेंद से नहीं बल्कि हाथों से। तो यहां पर 3 रन मिले और इन 3 रनों की बदौलत जो दबाव मुंडाला स्टार्स के ऊपर बना हुआ था वो दबाव काफी हद तक अब कम हो चुका है। अब 44 रन बन चुके हैं। 44 for 3 now, 3 to get and 8 balls remaining. स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अविनाश, लेग स्टंप से बाहर रन आउट का खतरा नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। वाइड प्लस एंड अ विकेट लॉस्ट। 45 for 4, 2 to get now from 8 deliveries. ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त मुंडाला स्टार्स अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है और जहां तक लायंस का सवाल है अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज अविनाश, इस वक्त अविनाश के लिए जो एक बेहतरीन पारी खेलते हुए इस बार डॉट गेंद को खेलने में चूके और गेंद को विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया। 1 बॉल लेफ्ट। एक गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी और अगली गेंद, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बॉल्ड आउट। 1 more विकेट फॉलन और यहां पर 45 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका है। मैच कभी इधर पलट रहा है तो कभी उधर। अब अंतिम ओवर में चाहिए 3 रन विजय के लिए, माफ कीजिए 2 रन विजय के लिए, जबकि 6 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। So match deciding over starts from the commentator box end, and the bowler is now brought into the attack is अजय भी। और जहां तक सवाल है रनों का तो सिर्फ 2 रन यहां पर बनाने हैं स्टार्स को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। लगभग 8 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्वत इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए
अजय पहली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, एंड नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड. Just a single run they have to score for victory in remaining 60 deliveries, and it looks like just a formality is now remaining in this match. Good one, absolutely good one. Along the carpet and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. One to get from 5 deliveries. Off the toes, chipped away, no one in that area. That's it. 5 wickets victory for Mundala Stars against Mundala Lions. With just 4 balls to spare, they reach the target of 47 runs for losing 5 wickets, and with that victory, they bag the complete points. Next match will be the last match of the league stage. Will be played between Mundala Super Kings versus Mundala Attackers. The important match for both teams to qualify for the semi-final of this competition. It's a do or die match for both teams, and that match starts within just a short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with once again myself, Gopi, and the match starts within just a short while. Till then, we're taking a short break. Thank you. Dhanyavad. Kiran from Mundala Stars. Man of the match, Kiran from Mundala Stars.
So the last match of the league stage is now going to start, and before the match starts, for the next further comments, I'd like to invite my senior, Mr. Rajanish, Mr. Rajanish in international language, English. Please come. Thank you. This will be the final of league match. This is the final of the league match of Mundala Premier League. Already 3 teams have been qualified for the semi-finals, and this will decide the 4th semi-finalist. That's a good looking shot in the outside of the region. Nobody is there, and that's the first wicket gone. Ashok, the veteran bowler, has taken the first wicket for his team. Man out, Yatin has been very good in last match. Yatin and Taman both played very well for the team in the last match, but this time not able to pick the gap, and just went straight into the hands of the fielder. And the first wicket goes without scoring. He goes into the pavilion. And the attackers are picking this crucial wicket. And the new batsman Guru Raj comes into the crease. Brother of Yatiraj, both are playing for the same team in this tournament. And Ashok to Guru Raj, that's a good ball. Very well kept down there. Is just chucking 2 dot balls already been bowled in this over. Very well played in the gap. Fielder down there picks up a single. First run for Mundala attackers. Super Kings. And the man in the strike is a well-known player in this Urwa Underarm cricket tournament, the icon player Ashwin Taman. Once again, very good bowling from Ashok. He bowled very 4 good deliveries, not giving any chance for the batsman to play. This is a power play also. Once again, the hands of the fielder. There will be a chance of a run out as misfield down there. Another run goes for Super Kings. Now 2 runs in this first over. Very good bowling from Ashok. He's bowled a very line and length ball. 5 balls has been a very good bowling from him. He's picked up 1 wicket also. That's a full toss ball, but fielder already there. They wanted a second run, but very well thrown and very well fielded. This is the 3rd run after finishing of 1 over. Now score is 3 for the loss of 1 wicket. A very good over bowled from Ashok. All the players are appreciating his bowling effort, because the way the opening batsmen are very well-known players, Taman and Yatin. He picked up the wicket of Yatin. He was very good run getting in the last Yatiraj in the last match, but he was able to pick his wicket in this first ball. And a very chuck bowling, not giving many runs, only 3 runs in this power play first over. And Lohit will be the bowling a second over for attackers. Field is very well set. Is taking Arshdeep as captain is taking his own time. They won their first match. But lost their second match, attackers, and Super Kings lost their second match and won their second match. This is a 3rd and final match. The winner will
enter into the semi-final. And both the teams has to win the do-or-die match. That's a good-looking shot. Is in the airfielder down there. That's very well taken down there. Another wicket goes to very good bowling from attackers. Lohit. Same thing happened in the first over also. First ball, a wicket gone, and this over also. Second, both the brothers are right now in the pavilion now. Once again, a very good fielding set, very good bowling, and they want to win this match. They are really playing their cricketing right. The second wicket goes now. The second ball of this over will begin now, and the bowling team is very full. It is a good looking shot. No one is there. It's gone in the air. First ball, first six. Brilliant shot down there from Sandeep. He just came in and he just went on to hit a super six of the first ball. Very well played down there. He was not under pressure also because they were already lost 2 wickets. Very good batting from Sandeep. Very clean hit. No fielder was down there. And just bowler pressure is building now for the bowler. He's taken first wicket in first ball, but he has gone for a maximum 6 in the second ball. Very good ball, kept low, not able to pick that ball. Batsman, once again, he wanted to hit a leg side region shot, but very good bowling, which was very fast. The score is 9 for the loss of 2 wickets. We're in the third over of this match. Another shot, I think, as a fielder down there. It could be out, yes. Very well judged catch down there. Another wicket goes for Super Kings. The third wicket goes 2 in this over. Previously, Sandeep selected the same place and he was successful in hitting the 6, but this time it was very slow and a very well judged catch down there. This is the third wicket goes down. We are in the second over. I think very good bowling and batting display. Sorry, bowling and fielding display from the team. I think they have taken already 3 wickets. A batsman, well-known batsman in form. I think Thaman is just telling his new batsman how to play and take singles. And this is a very crucial match. We need to play a big partnership if we have to win this match and move on to the semi-final of this Mundala Premier League 22. And Ashrawan will be facing Gurraj. Very good bowling. There was chance of a wicket, but sorry, Lohit is a bowler. And this is the last ball of the second over. Lohit gave away 1-4, but he very bowled very well. He was gone for a 6, but came back very well. Once again, good looking shot. They might get 2 runs. Taman, there's a mix-up chance of a run out, and Taman goes, and there's a mix-up down there. He's not happy. Taman gives away wicket. They wanted a second run. Taman said no, but non-striker was not ready, but very well fielded down there. And that's a big wicket for attackers. Taman is gone. Ashwin Taman goes now the 10 runs. They have lost 4 wickets. Very well fielded. 2 overs, 10.
And they just, sorry, in 2 overs, 10 runs and 4 wickets has gone. And the new batsman comes down there. I think there's a very big situation because they have to play on partnership. If they have to score a reasonable total, they have to play a good knock between themselves. They have not to lose the wicket also. And the new bowler, I think Ashok comes back, is bowled very well in the first over. And Anish is also a very good player for Hoige Bazaar. Once in the field setting, they're taking own time. Athene, the captain, they are fully charged. They want a wicket. Another wicket will make them more safe into the semi-finals. And very good looking shot. No one is there. Fielder is running behind it. Reverse sweep, but well fielded. Batsman get 2 runs. He just picked that ball very well. A very slow ball and a very good reverse sweep. And Shravan doing a right job for his team from getting 2 runs. Now 12 is the score. And that's a good ball. Very well bowling from Ashok. Comes in swinger from Ashok. Shravan goes, the 5th wicket goes, and once again attackers are fully charged now. The 12 runs, 5 wickets, and Ashok once again comes back. And Ashok picks up a 2nd wicket in the first over also. He got a wicket. And Pradeep Bingre is a new batsman. He's just come in a very bad situation for his team. His team has already lost 5 wickets. And good looking ball. Batsman was not able to read that ball. Very good bowling from Ashok. Very good bowling. The fielder just missed field and 1 run. Ball went just into the hands of the fielder. Fielder was not able to pick that ball correctly, but the batsman just crossed and has taken 1 run. And there will be appeal. Umpire says no, and leg by signal from the umpire Roland. Roland, a well-known umpire in underarm cricket. Our score just moves on to 14 for the loss of 5 wickets. Once again picking the single misfield down there. The fielder down there at the point is not able to pick the ball. Another run scored, and the end of 3 overs. Now 15 runs has been scored. A 5 wicket has gone. And another 3 overs left. They have to score more than, I think, 45 to 50 if there's a safe score in this ground. And they have a bowler like Ashwin Thaman who is well charged and they can come back through his bowling for his team. Anything can happen in cricket when Thaman is in your side.
And Arshdeep is a captain in last two matches. He played very well. His batting was very good in this ground. But they lost the second match. But he played very well in the first match. He's also captaining his team. He's bowling his fourth over. Previous two bowlers, I think they bowled very well for the team. They didn't give many runs, but they took 5 wickets. It's very important. There's a slow ball just placed down to mid. Now just go moves on to 16 for the loss of 5 wickets. We are in the third over of this match. Anish and Pradeep has to take risk for the team because their score is very low. They have lost 5 wickets. Bowler is taking his own time. Good looking river sheep, and that fielder is down there. Is gone into the hands of the field. Another wicket goes. I think Anish is gone. They're coming and going. I don't know what happened to them. Super Kings this time. Making previous match, they played very well. They wanted that was a do or die match for them. They wanted to win that match. They won that match. But this time, this is also a very crucial match. But batsmen are not supporting their team now. They're just coming and going. They're giving away wicket. I think they should look for the singles and doubles here and there. Runs are not coming very easily. When are they going for a big hit? I think it's going straight into the hands of the fielder. Field is very well set, and fielding also has been very good. They were really supporting their bowlers very well. And Praveen is a new batsman. Is a 7-down batsman. A 6 wicket gone for 16 runs. I think Arshdeep thought he will get a wicket in this ball, but very well watched there by Praveen and picking up single now. And 17 is the score. 6 wicket gone. And this is the last match of this Mundala Premier League stage. Once again, another run taken down there, misjudged from the fielders. 18 for the loss of 6 wickets. That's a good looking shot. Fielder down there. It might go. Oh, no, very well fielded. Very well covered. There was chance of a boundary. Ball pitched down there, but the fielder was right there to pick that ball. Score moves on to 20. We are in the third over. Fourth over. This is last ball of Arshdeep. Might signal wide from umpire. And one run also been added. Batsman, with that wide and 1 run, the 2 run added. Batsman just crossed. The end of the Arshdeep over. Now score is 22. After 4 overs, 6 wickets have been gone. I think the remaining 12 balls, I think they should get another 20 to 25 runs. It will be safe for them. Yatin is an icon player for their team. He is a well-known cricketer, underarm cricketer, and he's been well experienced in this Urwa ground. Yatin Kodikal.
And Praveen will be facing Yatin's first ball. Very good ball. Very well played. Ball was right in his block hole, but he was very well to pick that ball for a run. 23 now the score of. And Pradeep is a striker down there. He'll be facing next ball of Yatin. Very good bowling is a wicket taking ball. Not able to pick that ball. Yatin with all his experience bowling very well. The 7th wicket gone. Pradeep the batsman gone. Praveen Bantwala is the new batsman. Sorry. Very good bowling, very well shot. The first ball he picked up straight into the 24 is the score now. And both the batsmen are Praveen. One is Praveen Bantwal and one is Praveen Bajpayee. But both the players are sharing the same number, 3-3. Name also there's a similar name. Number also similar. Very good taking shot. There's chance of an out and now Praveen goes now, and I think there is no need of a run. They just gave away wicket. I think 24 runs, 8 wicket gone. We are in a 5th over. And Praveen Bantwal is gone there. I think Yatin is bowling very well. He's a very, very experienced bowler in underarm cricket. Ball was in the air, but nobody was there. Very safe shot. End of an over number 5. It's 25. This will be the last over. Chirag is a new batsman. This tournament is organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedike for the Mundala community people and to encourage cricketing cricketers of their community. Well-known players, many players from this community has been playing in this tournament, and they have supported very well, and all the players also. They have given away just 2 important weeks for Akhila Bharata Mundala Vedike to organize that well-organized tournament. Ball is straight in the hands of the fielder. Fielder down there. He picks this one. 1 run has been taken. Now the score is moves on to the 26th. The loss of 8 wickets. Lost 5 balls remaining. And I think they had to score maximum runs if they, in those 5 overs. And another wicket goes, another man goes. Chirag, the man goes. I think it's the last man. 4 balls remaining. Last man comes.
And Prathvik, young batsman, is just playing his first ball in this tournament as well. Look, Rivership is ball in the air, but nobody was there. The fielder are not able to pick that. They wanted a second run, but they don't want to take the risky run because then just 3 balls remaining. They have to score maximum or else 3 runs. It will take them to 30, but now score is 29 for the loss of 9 wicket. All the batsmen, I think, in the Super Kings side got a chance to bat. Good looking chance of a run out and fielder picking that man, but batsman was well in his crease at the right time. A very good running between the wickets from both the batsmen. 28 for the loss of 9 wickets. Still 2 balls remaining. Let's see what Pratik might hit, a big hit or not in this. And that's gone. No, what happened? Ball is. So thank you very much, Rajini sir, for your wonderful commentary. Our respected ex-deputy mayor of City Corporation. And we are into this very important match. It's a must-win match for both the teams. And if they wanted to qualify for the semi-final of this prestigious MPL 2022, it's going to be a testing time here for both the teams, especially the team which is really performed very well from the ball. Mundala attackers done a great job actually. The bowlers did a great job. There is no single double figure in the batting department of Super Kings. That shows how accuracy the bowlers of Mundala attackers are attacked against the batsmen of Mundala Super Kings. And now all up to the bowlers of Super Kings, how well they're going to depend this small total of 32 to qualify. So signal straight away coming from umpire Roland Pinto. Good afternoon, cricket lovers. Again, it's going to be a very, very interesting match between these two teams. Ashok came into middle as an opener along with Yatin and Ashwin Raj. Straight away, doesn't want to take much time to come into the attack, and you know exactly he need to pick the wickets. A first ball, right arm over the wicket, and Ashok just leaning into the drive. But ball went straight to the hands of Yatiraj. Is little bit fumble, not a neat collection. So that batsman completed a single for the first delivery of Ashwin. Ashok is off the mark with a single. Ashok played an excellent innings in the previous the match which is played day number 1 when they lost their first match. Second match is they really won the match because of his all-round performance. Yatin went for the reverse sweep. This time I think there's no chance at all for any run. Yatiraj quickly moving to his front. This time it's fielded very well, denying the single from these two batsmen, and there is no possibility of any run. Ashwin Taman, the magician, is a need to do something special from this bowling. Top edge, chance here for the fielder, and he takes the catch. Guru Raj down at short fire like this time, not missing a golden opportunity to get the big fish in the net. Yatin, one of the icon players for the side of Mundala attackers, back into pavilion. Not that much of a wicket-taking delivery, as I want to see the dismissal of Yatin. It was too much, I think, is across the line of the delivery, and ball might be a little bit outside the line of leg stump. Just to see that one in a replay. Look at that one. Yatin shuffled across the line of the delivery. You know exactly that he wanted to play down to deep fine leg and deep square leg, but unfortunately he got a top edge. Nothing wrong with the short selection, but something wrong with that ball. The part of the bat which is involved to that ball is not a sweet part of the bat, and that's why that ball went straight to the hands of a short fine leg. This is the kind of start which is required when you are defending a small total, and a lot of responsibility in the shoulder of captain, being the captain of the side, being one of the top
bowler of underarm cricket. It's a need to do something special. And Ashwin calling that deep mid wicket fielder to a little bit squarer in front of square. And now he's bowling second delivery. This time nicely played. Beautiful looking stroke there from a new batsman. Right behind the line of the delivery. Know exactly what Ashwin will going to do here. He knows that Ashwin bowling a fantastic leg cutter. So he just covered his stump. Roll of the wrist comes into play to pick the single, and with that single, scoreboard now was under 2 on the board for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. Ashwin right arm over the wicket. Ashok try to break the concentration of the bowler by playing the reverse sweep. One of the most difficult stroke to play in the books. But Ashok is a kind of batsman who loves to play his own batting. He is a natural, powerful striker of the ball. This time again he went for the big shot and wicketkeeper behind the stump. Anish in a fraction removes the stumps, but no damage done. Fantastic start there from Ashwin. The kind of start which is required for his team in the first over. He just did the damages. That did the damage by picking up the wicket, and he considered just a couple of runs in this over. So 33 is a target, and attackers are 2 for the loss of 1 wicket. They got a shackling start now. 31 required in 30 deliveries. 31 required from 30 deliveries here for Mundala attackers. Two very good teams, I can say that in this MPL, Mundala Premier League. All 8 teams participating in this tour cricket tournament. Really, they got some very good players. All iconic players distributed equally for 8 teams. That's why each and every matches is going to be very, very interesting. And every team has got some 4 very good players in the side. But coming back to the Mundala Super Kings, more than the batting department, they got some very good bowling department. They got Ashwin. They got Anish. They got Yatiraj who can bowl, who can contribute from the ball as well. And that's why even though it's for 33 is not a big total to chase down, but against the first fantastic bowling department, I think attackers have to work hard to get that 33 to win the match. Anish right arm over the wicket delivers. This time wicket keeper behind the stump. Fantastic job, but rightly so umpire unmoored, because the back leg of the batsman still it's inside the crease. If it is on the line, it's out, but it was inside the line and he's not really lift the back leg. And umpire Roland Pinto, and after having 37 years of experience in his career, he's got a good eye, and he's just saying that not enough for wicketkeeper to get the result in the favor of fielding team, but certainly it's a batsman safe. So no damage done. Anish once again back to his bowling mark. Little bit changes in the field, not a field set, but a fielder is changing their position. Cow point fielder coming to the short mid wicket. This time, oh, that ball is in the air for a while, but out of the reach of that short mid wicket fielder. Might be the little bit tall fielder which is required in that region. Not that much of tall enough to get that catch for that fielder at short mid wicket. Ball just chipped that one by Shailesh, and he got the single for that. 3 for the loss of 1 wicket here in over number second in progress. Anish now get it bowling to Ashok. So far Ashok very quiet. Look at the improvisation. Nicely played. Sit down to short fine leg region. Played it very fine. Before the fielder, one of the fielder from fine leg to run back to field that one down at deep fine leg region. Ample time for the batters to complete that couple of runs. Excellent technique here from Ashok, as he is quickly realizing that's very difficult to go for the big shot in that equation. Just gently play that one down to short fine leg region. And it was a very good technique to play the sweep shot. Anish. Ashok went for the reverse sweep in that occasion. He is a kind of batsman. He loves to play that kind of cricketing stroke. But this time Anish is bowled a quicker one, and not that much of quick footwork there from Ashok to meet the bat.
Again the dotted delivery. After that a couple of runs and two dotted deliveries. That means good comeback by Anish, and score is 5 on the board for the loss of 1 wicket. Each and every run going to be very important. Each and every dot delivery which is very important for Super Kings, and each and every runs which is important here for attackers to win this match. Anish from the far end. This time he just gone over the top and the fielder is running back, tried to take the catch and he just got his fingertips onto that, and a couple of runs here for Ashok. Not quite getting that one right from the middle of the bat. Ashok, he tried to slash that one over the top of the cover point fielder, and but ball, unfortunately that fielder is run back but no, couldn't manage to reach that catch, and it just ball as having a fingertips just fell down. So couple of runs to finish the over. Little bit better over compared to the previous over. So in this over attackers got some runs and some runs in the sense the 5 runs they got without losing any wicket. So 7 runs which is deducted from 33. 7 runs which is deducted from 33. That means that 26 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries. So match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Very, very interesting match is going on here. Those who are watching this live telecast in your Bedra Media YouTube channel, definitely they will going to enjoy a lot this game. Lot of followers we are having for Ashwin. Lot of our followers for Yatiraj. Lot of our followers for Ashok, Yatin. So suddenly they wanted to see their favorite team will going to win the match. Oh, this time, this has been unfortunate. This is really unfortunate here for attackers. The Shailesh one who looking pretty good in the middle, he couldn't manage to get the placement right as he was without seeing the ball, without seeing the fielder. He's just calling his partner for the run. And Ashok is not responding, rightly so, no run at all. And the batsman is walking towards pavilion. 7 for the loss of 2 wickets. This is a one more experienced campaigner. Tarun walks towards the middle. As Tarun came into middle with a lot of responsibility. Sensible batting which is required for attackers. Yatiraj. This time top edge. It's going to be a chance. It's going to be a chance, and chance which is grabbed by jersey number 7. Pradeep, who is standing at short mid off, completes the catch. Wicket number 3 is back into pavilion. What really going on here out here in the middle for the attackers? They're not chasing a big total here. 33. I've already mentioned even this 33 runs going to be a big one. Just looking at the bowling department of Super Kings are back into this game very strongly. Now his match is evenly poised. Gate is just opened here for Super Kings. The captain, one who starts well with the first over with a couple of runs and a wicket. Then followed by Anish at the 5 runs. This looks like a little bit comeback over for the attackers. But now Yatiraj showing his all experience in this over. What we're talking about, everyone is enjoying the game of cricket. We are talking about a lot of followers for the present cricketers, legend cricketers, but even some followers for the officials as well, like Roland Pinto, Sriraj and Harish Padil. They're also having a lot of fans and followers because the important part of cricket is definitely the officials. They're the one responsible for the success of this cricket tournament. So one more single is added to total here. Each and every run is enjoyed by the followers and supporters of attackers. Meanwhile, I request
Those teams which is qualify for the semi-final, please get ready. The one team from this match will go into qualify, the fourth team. This time again Ashok went for the reverse strip. This is the third time he is attempting that reverse stroke, but not really finding his rhythm which is required for the reverse stroke. And Yatiraj is not happy with the field set. He's just asking Ashwin that why not there is a fielder in the deep. Maybe if it's a little bit connection for the bat, it's going to be a boundary. After that power play, we can see that the fielding is spreading out, but there is no fielder in the deep third man, deep backward point. But there is a deep cover point, long off is there, deep long on is there, deep wideish long on, mid wicket is there, little bit correction, and deep backward square leg is there. Yatiraj bowling away from us. Right arm over the this time he's just nicked that one down to short third man region before Ashwin run across to his right to field the ball. Ample time for Ashok to complete the single. Ashok is the key player now for attackers. You need to be cool and calm. He's the one who can take the match away from the opposition. Experienced campaigner. Oh, what a shot. Beautiful shot there from Arsha there. They're coming back for the second and wide throw. Oh my goodness. Another extra runs and Ashok is too far across. He too far across here and they're going for the third run as well. Oh my goodness. What really going on? That last ball of the over. They got 3 runs. And once it looks like the opportunity of run out is created when Ashok is not really looking towards the ball, but he's too far across, crossing down at non-Saiga's end. Then he responded very slowly for the third run. There also their own opportunities created for the run out. And look at that frustration in the pace of the players of Super Kings that they just missed the opportunity here. 22 for the loss of 3 wicket. A little bit correction. 12 for the loss of 3 wickets. And now 3 overs remaining. 3 overs remaining. They have to get another 21 runs to win this match. And Gopi, it's going to be a fantastic match, isn't it? The kind of match which is crowd want to see. The kind of match those who are watching live telecast of this match, they know exactly the importance of winning the match for both the teams. And I think it's a good defense from the fielding team. They're not depending a big total here. They're depending at 33 runs. But so far, I think the fielding team done a great job. But batch is evenly poised because Ashok is still there in the middle. He's the man who can change the complexion of the match. He played very well in the previous matches as well. I think the winning opportunity for attackers all up to these 2 pairs. Even Arsha is a very talented young cricketer. He's also played a very good innings in the first match for their team. And now these 2 pairs is very important for attackers to win the match. At the same time, Gopi, the 1 over which is Ashwin completed, then he has to bowl another 1 over. And that 1 hour is going to be very crucial for Super Kings when he will going to come and bowl. And that will definitely going to be very interesting here, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बिल्कुल सही बात आपने कहा। 3 ओवर में अपने काबिलियत के अनुसार यहां पर गेंदबाजी की है सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने और बचे हुए 3 ओवर में 21 रन बनाने। द मैच इज स्टिल स्टैंड्स इन अ बैलेंस, 21 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और जैसा कि आपने फरमाया अश्विन का 1 ओवर जो बाकी है वो उनके लिए इस वक्त प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर 18 गेंदों में 21 रन बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस वक्त अश्विन का 1 ओवर बाकी है। तो उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना है तो सूझबूझ की बल्लेबाजी यहाँ पर निभानी होगी। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर जो मौजूद है हर्षदीप और अशोक, उनके ऊपर सारा दारोमदार है इस वक्त और एक बेहतर साझेदारी अगर ये दोनों क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज बचे हुए 3 ओवर निभाते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर अटैकर्स अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। At the same time, Gopi, you can see that after long discussion, at one stage it never looks like Ashwin will going to bowl this over, but after long discussion and they thought that I think it's the right time. It's a right time for Ashwin to come and bowl in this. Very important because the required run rate is exactly 7 runs per over, Gopi. In this particular over, if Ashwin managed to bowl even economical over, the over of 3 runs or 4 runs, then its asking run rate is definitely going to be a more
if it is over 8 runs per hour after that, and I think more pressure for attackers. I think it's a good thinking. The point of view of winning this match for Super Kings is concerned. This is really a crucial move by the captain himself to come to ball here. बिल्कुल सतीश, अपने आपको खुद अश्विन गेंदबाजी पर उतार चुके हैं। वो जानते हैं इस ओवर में अगर वो किफायती गेंदबाजी करेंगे तो इस वक्त उनके टीम के लिए बेहतर होगा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिवर्स शॉट इस वक्त खेलने में सफल और गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन के सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जैसा कि हमने जिक्र किया था, अश्विन का जो ये ओवर है उसमें काफी किफायती गेंदबाज अगर वो किफायती गेंदबाजी वो करते हैं तो निस्संदेह उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन पहली गेंद पर इस वक्त अर्शदीप में जिस एक्सक्विजिट फुटवर्क के साथ रिवर्स शॉट के जरिए जो चौका लगाया है, काबिल तारीफ है। मैं समझता हूं सतीश, he just picked that one right from the spot. Absolutely, Gopi. This is a brave and gutsy batting, isn't it? It's not any easy to play the very first delivery to bowlers like Ashwin to pick that reverse stroke and exquisite footwork, Gopi. Very, very good footwork which is required for that kind of cricketing stroke. Outstanding stroke. बिल्कुल सतीश, देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रन नहीं मिलेंगे। अश्विन अगली गेंद पर कमबैक कर चुके हैं डॉट गेंद फेंकने के बाद। अब गेंदे बाकी हैं 16, रन्स चाहिए 17, 17 टू गेट फ्रॉम 16 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। अश्विन एक बार फिर से ये गेंद लेग कटर गेंद, इस बार दैट्स कॉल्ड अश्विन। और इस बार अर्शदीप का विकेट वो प्राप्त करने में सफल। परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद उन्होंने फेंकी थी। उन्होंने पहले ही भाप लिया था कि अर्शदीप एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं और इस बार उन्हें लेग कटर गेंद फेंकी और इस लेग कटर गेंद को समझ नहीं पाए। तो यही क्षमता है, काबिलियत है अश्विन की सतीश। ऐन मौके पर जब कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंद पर चौका या छक्का लगाता है तो अगली गेंद पर या फिर 1-2 गेंद बाद वो विकेट उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। और यहां पर उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो किस लिए बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जाने जाते हैं अंडरआर्म क्रिकेट के। Exactly, Gopi. It's a perfect example, isn't it? Why he's been one of the top bowler in underarm cricket. Why he is called as a magician. And at the same time, just look at the mindset of the batsman, Gopi. After getting that boundary, I don't think it's that much of a risk is required after that. After getting a boundary, the rotation of strikes, they will going to get 8 runs or 9 runs if it rotates the strike, isn't it? But after that getting the boundary, is once again looking for the big shot, which is not required. Sensible batting. And cricket is not all about the game of a physic game, but at the same time, you need to use your mind, the brain game. And that is just lacking in that Asha's shot selection. बिल्कुल सतीश, इस बार ये गेंद बॉल आउट। Absolutely fantastic this time ऑफ कटर और लगातार 2 गेंदें और कमबैक करने में सफल अश्विन। अब चाहिए 17 रन जबकि गेंदें बाकी है 14। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया था सतीश, अर्शदीप जो चौका लगा चुके थे उसके बाद उन्हें उतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। अगर सेंसिबल क्रिकेट भी अपनाते हैं तो निस्संदेह हर गेंद पर सिंगल्स भी बटोरते हैं तो आसानी के साथ मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते थे। लेकिन अगली 2 गेंद बाद उन्होंने उसी तरह का स्ट्रोक दोहराना चाहा और वहां पर अश्विन ने उनका विकेट उखाड़ा और अगली ही गेंद पर ऑफ कटर के जरिए ये विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं समझता हूं 14 गेंदों में 17 रन बनाने लक्ष्य कुछ हद तक कठिन होता हुआ यहां पर अटैकर्स के लिए, खासकर अगर बचे हुए इन 2 गेंदों में अश्विन 2 गेंदे डॉट फेंकते या फिर 1 या 2 विकेट उखाड़ते तो निस्संदेह यहाँ पर अटैकर्स के लिए लक्ष्य काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ना यहाँ पर 2 गेंदें बाकी है और देखना है कि इन 2 गेंदों में अटैकर्स के बल्लेबाज क्या करते हैं। दाईं ओवर द विकेट, ये गेंद लेग कटर गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा से बाहर गेंद 4 रनों के लिए। तो मैच कभी इधर तो कभी उधर, तो यहाँ पर चौका, डॉट गेंद, विकेट और चौका, यानी इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन प्रदान कर चुके हैं, 2 विकेटें भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब इस चौके की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा दे आर नाउ बैक इन द गेम। 13 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरी। अब देखने वाली बात यह है कि अश्विन का जो कोटे का अंतिम गेंद बाकी है उस गेंद को किस तरह यहाँ पर बल्लेबाज पुनीत खेलते हैं। दाईं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, इस बार शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन मिलेगा और यहाँ पर 1 रन मिला। 21 for 5 और मैं समझता हूँ सतीश अश्विन का ओवर में 2 विकेट जरूर उन्होंने प्राप्त किए लेकिन ये ओवर अच्छा खासा रहा अटैकर्स के लिए जिसके बदौलत इस मैच में वो वापस आ चुका है। अब 12 गेंदें 12 रन एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi. Just like what the name they got, attackers. They really implemented the strategy of attacking the Ashwin. This doesn't look like if you play in a defensive frame of mind against Ashwin,
he will definitely going to pick the wicket. So 2 attacking strokes got 8 runs. This is a big difference in this over, Gopi. The 2 boundaries. One which is played by Arshdeep, one is which is played by the new batsman Shrikant, I think. Puneet, I think. So 2 very good shot, Gopi. And what the kind of runs which is required in that over, and the attackers they got. But match is not yet over, because 12 runs to get from 12 balls. Gopi, match is evenly poised. Match is still in balance, because Yatiraj, I think Yatiraj bowled 1 hour. So now it's all up to this man, the new bowler, how well they manage to handle the pressure, because this is a very crucial over for both the teams. बिल्कुल ये ओवर दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित होगा। देखते हैं क्या होता है। प्रवीण के हाथों में गेंद इस वक्त सामना करते हुए पुनीत राज। 12 गेंदों में 12 रन चाहिए। दाहिनात राउंड द विकेट। पहली गेंद इस बार गेंद बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। रन से चाहिए 11, गेंदें बाकी है 11। डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त सुपर किंग्स को, रनों की सख्त जरूरत इस वक्त अटैकर्स को। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में इस वक्त कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। और इस बीच प्रवीण दाहिना हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं। और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त सुपर किंग्स के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चंद डॉट गेंदें फेंकने ही होंगे इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। प्रवीण उन डॉट गेंदों की तलाश में अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। Absolutely fantastic struck. He just read the bounce of that ball at the last moment and just swings it away on the onside between the long wicket gap between deep backward square leg and a deep mid wicket, and he finds the gap as well. Really, that ball was traveling. Absolutely, the ball went like a bullet. और निस्संदेह इस चौके के साथ अब मैं कहूँगा attackers are now strongly back in the match, and now 6 to get. And ball is remaining 9। इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया, डीप मिड विकेट पर फील्डर वापस पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, अशोक दौड़ कर आए और यहां पर बच नहीं पाएंगे। अशोक की गलती थी यहां पर, वो दौड़ कर आए और आधे पिच तक आते आते अपने आप को धीमे करते हुए अपने रोकने का प्रयास किया अपने दौड़ को। और जब तक नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे दूसरा रन पूर्ण करने के लिए, वहां पर थ्रो पहुंचा और विकेट कीपर ने अपना काम विकेटों के पीछे किया। तो पुनीत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 11 रन उन्होंने बनाए और निस्संदेह मैं समझता हूं एक बेहतरीन पारी 180 स्ट्राइक रेट की औसत से उन्होंने बनाए 11 रन। लेकिन मैं समझता हूं पुनीत का विकेट रनआउट के रूप में जरूर गिर चुका है सतीश, लेकिन उन्होंने अपना किरदार बाखूबी अदा किया है। Absolutely, Gopi. Just change the complexion of the matches when they are really struggling in the middle. I think that 2 boundaries which is came from the bat of Puneet is definitely one of the best strokes is played under pressure, isn't it? It's not an easy under pressure, and against very good quality bowlers he played that strokes. But unfortunately, he's back into pole in the form of run out, and wait and see how new batsman will go into handle the pressure. बिल्कुल सतीश, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त विकेट से हटते हुए वानिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। नॉट मोर देन अ सिंगल, 29 now, 4 to get and the ball is remaining 7। 7 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए और अशोक इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। एक बेहतर पारी, सेंसिबल बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए अशोक कुल मिलाकर 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस वक्त प्रवीण की गेंद, ये गेंद इस बार स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन, इन कम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर अश्विन। लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था कि वो 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके। 30 रन बन चुके, 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स and 5 overs had been bowled, 3 to get from last over। और सतीश यहाँ पर अंतिम 2 ओवर में मैं समझता हूँ अटैकर्स पूरी तरह इस मैच में कम बैक कर चुका है। Exactly, Gopi. It was a really fantastic chasing, isn't it? 33 at one stage they're really struggling. When I hand over the microphone to you, Gopi, 21 required from 3 overs. The 7 runs per over required and that time. That time Ashwin came into ball, isn't it? And in that over they got 2 boundaries. This is a really turning point of this particular match if attackers will go into win the match. Now I think look at the Ashok, the way he's played a different role actually, different innings he's played. He's not really looking for so many big hits. You know exactly what his presence is so important.
because he's an experienced player. At one stage, he is standing tall and anchoring the innings. Even though he didn't got big runs, only 9 runs he scored. But it's all we can see that the experience comes into play in other end. And now just 3 runs required for the victory. Wait and see how Kings will go into bounce back here in the last over. बिल्कुल सतीश, अशोक ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा कि आपने फरमाया इस मैच में बल्लेबाजी की है और यहां पर क्रीज पर अभी भी डटे हुए। लेग स्टंप से बाहर गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। जस्ट सिंगल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और ऐसा कहना पड़ेगा अटैकर्स इस वक्त विजय के द्वार पर खड़ा हो चुका है। यह गेंद इस बार चूंकि बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में 1 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी और अगली गेंद लेकर इस वक्त प्रदीप तैयार। ऐसा लग रहा है औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है। अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो शॉर्ट फाइन लेग पर रन से नहीं मिलेंगे। 1 रन 4 गेंदें और एक और 2 डॉट गेंदें अगर गेंदबाज फेंकते हैं तो मजा आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये गेंद एक बार फिर से डॉट, लेकिन फॉरवर्ड शॉट लेग पर अश्विन के हाथों में और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। अशोक की पारी समाप्त, 3 डॉट गेंदें, अब 1 रन, 3 गेंदें बाकी और सतीश इस वक्त क्या हो सकता है? I think it's the last opportunity to make this match tie, and just wanted to be the luck will go into favor after if the match is tied. Of course, the net run rate will go into comes into play. But as I already mentioned, Gopi, that cricket is game of glorious uncertainty. And you cannot underestimate cricket. Even 1 runs to get after getting 2 runs in the first ball. In fact, five, which is 6 runs, 6 ball and 1 run required. After that, the batsman may be a little bit underestimating that one. Just 1 run to get, and now a little bit now under pressure now. But Gopi want to get from 3 balls. I think it's a manageable. But wait and see the kind of hard work which is required for the bowler to get another 3 dotted deliveries. बिल्कुल हार्ड वर्क की इस वक्त जरूरत है गेंदबाज के लिए। लगातार 3 और डॉट गेंदों को फेंकने के लिए 3 लगातार डॉट गेंदें वो अब तक फेंक चुके हैं। भरत का आगमन हो चुका है। सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है दाहिने हाथ के बल्लेबाज भरत के लिए और देखते हैं अगले गेंद पर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। और इस भी तैयार प्रदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज भरत के लिए गेंद को स्वीप करना चाहो, पॉइंट पर गेंद फील्ड हो चुकी है, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी धीमा और इसी के साथ attackers are qualified for the semi-final of this competition. तो बेहतरीन मैच यहां पर हमें देखने को मिला और निस्संदेह इस मैच में दोनों टीमों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन दिया और आखिरकार विजय अटैकर्स के पक्ष में गया। तो निस्संदेह एक बेहतरीन मैच समाप्त हो चुका है। लीग दौर के सारे मैचेस समाप्त हो चुके हैं। अब सेमीफाइनल मैच यहां पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद और पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब पहले सेमीफाइनल मैच की शुरुआत फर्स्ट सेमीफाइनल मैच की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much. It's really good to see that there was congratulation from both the teams. That was really required at the end of the match because winning and losing is a part of cricket. But you need to, whatever the result is going to be, but you need to congratulate your opposition team, winning team. And that's what really happening out here in the middle. And that's a really good and good to see that the true spirit of cricket is going on here in this UCG cricket ground.
Hello, it's a time for the announcement of the man of the match, and man of the match which is goes to is a man who came into bat in a number 7 position and hitting 2 boundaries against a quality bowling performance, quality bowlers, and he scored 11 runs in just 5 balls. Is none other than Puneet Raj of Mundala Attackers, who is judged as a man of the match. He's the game changer, hitting 2 boundaries and scored 11 valuable runs in a difficult condition. I request Puneet to please come and collect your man of the match award in our MPL VIP stand. Thank you.
So thank you very much. And after that, all league matches. Here is announcement of four teams which is qualify for the semi-final. Coming to the A pool, Mundala Strikers are becomes a topper in the A pool, and Mundala Stars are becomes the second place in A pool. That means that two teams which is qualified to the semi-final in A pool. In B pool, Mundala Royal Army, they grabbed the first place, and Mundala Attackers, they are in the second place of B pool. Now, as for the rules and regulation of this MPL is concerned, it's A1 versus B2, and that means Mundala Strikers will going to take Mundala Attackers in the first semi-final, and in the second semi-final, the second place Mundala Stars will going to take the toppers of the B pool, that is Mundala Royal Army. That is the second semi-final. Please note, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುಂಡಾಲ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂಡಾಲ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ. 10 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂಡಾಲ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂಡಾಲ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ. This is the clean picture out here for MPL in the semi-final. Thank you very much.
Sampath Hoigebazar and Roshan Tokur from Mundala Strikers, and Manoj Ulal and Dinesh Kodikal. I request you to please ask your captains to report to the dais immediately. Harshadeep and Pratap Kadri, please report. We need your cooperation. I request you to report to the dais immediately for the toss.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ KC ರೋಡ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗಾಗಿ ಇದೇ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ 27/11/2022 ಮತ್ತು 4/12/2022 ಎಕ್ಕೂರು ಫಿಶರೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರಗಲಿರುವುದು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ, ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂಪಾಯಿ 3,000ವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷತ್ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 11 ಜನರ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂಗಡವಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಇದೇ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ 27/11/2022 ಮತ್ತು 4/12/2022 ಎಕ್ಕೂರು ಫಿಶರೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So, welcome back for the first semi-final of the prestigious MPL 2022. All set now for the first over. After winning the toss, selected to field first. Mundala strikers, they are on attack and against attackers. And Ashwin Kumar from the far end, Sri Rama Bhajana Mandiran. Here is the first ball. Right arm over the wicket to Ashok. Ashok drives that one, but not really able to beat the infield as before the fielder from cover point region to field the ball. Ashok just changing his strike is now got a first run from his bat and for his team as well. The first run of the semi-final. Two very good teams out there in the middle in the semi-final. Again, Yatin tried to flick that one off his legs, but ball is just going away from the leg
and outside the line of leg stump too far, so that umpire Arish Padil has got no hesitation in his mind. He signals the wide. This time again, Yatin not quite intended. They're going for the run. This time, the fielder from short mid wicket is just rushing towards the ball, but not really bending, too much to collect the ball. Ball just passing between his legs, and ball went towards a wideish long on for a single. So with that single, Yatin is off the mark. Total score is 3 on the board without loss of any wicket. Ashwin. This time he lofted and just over the top of that fielder. Ball running down to deep cover point boundary. Before the fielder from deep extra cover to run back and fields the ball just couple of yards inside the boundary line. Ample time for Ashok to complete that couple of runs. Ashok has played a fantastic knock in the previous match as well. Is very cool and calm in the previous match and just anchoring the innings in one side and takes the match away from the opposition. And he's got a very good tournament from bat and ball. Ashwin. This time the quicker one. And it's gone. The back foot of Ashok is just a little bit lifting up. And as for the present rules and regulation is concerned, the on the line is also out. Sometimes the players aware of that line. If your leg is on the line, and on the line is not quite enough to save your wicket, but some part of your shoe need to be inside that line. That's what the rules and regulations says. And umpire Sriraj just having a look at that one, seeing that the back foot of Ashok is on the line, then he's just raising his finger. The good decision there from square leg umpire. A big wicket here for strikers. The wicketkeeper behind the stump, captain of the side. Pratap, in a fraction, completes the job. Very good presence of mind. Just grabbing the opportunity quickly to remove the bails and got the result for his team. The first wicket back into pavilion. 5 for the loss of 1 wicket. Ashwin Kumar from the far end. Right arm over the wicket. Bounce to Shailesh. Shailesh watching the ball till the last moment, but it's a ball which is a playable one. It's well within the reach of the batsman. Ashwin really doing a fantastic job. Is bowling some good deliveries, quick deliveries. Oh, beautifully ball. One more quick delivery. Again the ball running down to short fine leg region. Good start here from Ashwin Kumar, but not that much of good start here for attackers after completion of first over. It's 5 for the loss of 1 wicket. And Gopi, coming back to these two teams, both the teams actually deserve in this place semi-final, because they played an excellent game of cricket in the league matches. But we are just expecting the very good battle between these two teams, attackers as well as the strikers. And winning the toss, and the strikers elected to field first. And as for their strategy, as for their game plan, I think Ashwin got a very good, decent start. 5 for the loss of 1 wicket. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर स्टीडी स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त कर चुका है अटैकर्स। और जहाँ तक सवाल है, दोनों टीमों संतुलित है और लीग स्टेज में बेहतर प्रदर्शन ये दोनों टीमों ने दिया है, अटैकर्स और स्ट्राइकर्स। और जहाँ तक सवाल है इस पहले सेमीफाइनल मैच का, तो मैं कहूँगा सतीश बराबर का टक्कर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पहले ओवर में भी हमें बराबर का संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला। और देखते हैं इस मैच में कौन विजयी होकर इसी श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करता है। Absolutely, Gopi, because this is a very prestigious cricket tournament and quite understandable that every teams which is qualified for the semi-final, they wanted to be in the final, and for that they need to give their 100%. Here is the next one. First ball, beautifully ball, perfect delivery indeed. Perfect start here from Suraj. Of course, he's bowled to the strength of the batsman, because everybody knows that what is the strength of Yatin. He's a very good striker of the ball, because he loves that line outside the line of off tempo, but he just missed that one because of that was a quicker one. This time not a good bowling chance of run out in the striker's hand, and the batsman just survived. Little bit communication between these two, the batters, because the Yatin is just walking towards the middle, towards his partner Shailesh. He's just telling Shailesh, if you want to run, you just give me the call. You cannot run straight away. And that was very important in cricket. Is the calling is so important. Loud calling is so important. Especially the non-striker is judging the run whenever the ball is going behind the wicket, Gopi. And there's always going to be non-striker's call, not the striker's call. So it's very important for the non-strikers to call very loudly if you're going for the run. Whether it was a yes, whether it was a one.
they need to call. And this time, I think they got that risky single survived from the run out. Here is the next one. Right arm over the wicket delivers. Again, nicely, Sri was sweeping that one down to backward point region for a single by Shailesh. Shailesh, so far, I think, has played a very important role for attackers, because it's a very important part of cricket is whenever the number 3 batsman always going to be a key. Whenever the first wicket falls very quickly, a lot of responsibility for the number 3 batsman to anchor. The lovely shot. Look at that one. That's the water caliber of Yatin. Beautifully played down to deep cover point region. Before the deep extra cover fielder run across his left to field the ball. Ample time for Yatin to complete the couple of runs. I already mentioned is the caliber of Yatin. He's never missed the opportunity whenever the ball is outside the line of off stump, and quickly is into that line of the delivery. Beautifully driven, and he got a couple of runs. This time he wanted to swap that delivery, but at the last moment that ball goes the extra bounce. Because of that ball, I got extra bounce. Ball came along the carpet. When Yatin is going for the sweep shot, that ball has got extra bounce and defeats the bat of Yatin. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Improvisation beats the infield, but not enough power behind that sweep shot. Instead of he's playing a powerful sweep shot. He's just helping that one to get the single down to short fine leg division. Scoreboard moves on to 11 for the loss of 1 wicket. Yatin so far is not really having a good tournament from the bat and the ball, but this is a very important match, semi-final, and all we can see that the all top players, they are really performing under pressure. And here is the Shailesh, again picked up a single. He's doing a good job by rotating the strike. So one more good over is completed. After completion of over number 2 and searching for the right track, attackers got 12 for the loss of 1 wicket. And Gopi, nothing wrong with the run rate. It's not a 6 overs format of the game. As far as semi-final is concerned, 2 semi-final and final is concerned, the 8 overs format of a game. So that will give a lot of time for the batsman to settle down. It's not necessary to get some big score in the power play overs, but once you settle down, the batsman like Yatin always going to be very dangerous. 12 runs, 6 runs per hour, I think is a decent start. बिल्कुल सतीश, this is a decent start, except they lost their 1 wicket. They managed to score 12 runs on the board. तो बेहतर शुरुआत 8 ओवर्स की संख्या को 8 में बढ़ा दिया गया है, तो 2 ओवर्स देखकर खेलने के लिए बल्लेबाज को मिलता है, और यहाँ पर पहले 2 ओवर्स में सेंसिबल बल्लेबाज यहाँ पर अपनाई है। 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी है सतीश, तो 6 ओवर में निस्संदेह अगर विकेटें बरकरार रखते, एक साझेदारी निभाते, तो एक बेहतर स्कोर यहाँ पर उनके बल्लेबाज, अटैकर्स के बल्लेबाज खड़ा कर सकते हैं। Absolutely, Gopi. The different strategy, different tactics to be required when you are playing that kind of a format of a games, 8 overs format of a games. And one more single is added to total. Shailesh picked up a single here, and with that single, scoreboard moves on to 13 for the loss of 1 wicket. And right, Gopi was talking about that 8 overs format of a games. Keeping wickets in hand is always going to be the positive move for any batting first team. They can improve the run rate afterwards, and first they wanted to build the partnership. Again, bowler's back drive, and Pratap on his follow through off stop that one by putting his right hand to the direction of that stroke, which is came from the blade of Yatin. Not well timed cricketing stroke there from Yatin, and there is no possibility of any run. 13 for the loss of 1 wicket. Pratap, right arm over the wicket, drives straight to the hands of short extra coverage, and so Yatin so careful, watchful in the delegation, rightly so. You know that the both the players, Gopi, they're playing for their own team, home team, Sneha Malemar. So no, they both of them know each other very well. Again, the left field for leg before we get chance of run out, but not a good throw coming from Ashwin there. It might be the bat is involved, and that's why there is not that much of appeal coming from closing fielder or the bowlers, because they knows that ball is got a little bit inside edge of the bat of Yatin, and they cross over for a single. So far it's a very good over, quiet over from Pratap, just a couple of runs. Oh, lovely delivery indeed, beautifully bowled there by Pratap. Again Ashwin removes the stumps in the striker's end, but this time is not getting the result. But this is a fantastic over, is comes in India from Pratap there. What outstanding over, and after completion of 3 overs, and searching for the right track, attackers not in attacking mode, and 14 for the loss of 1 wicket. One more good over, Gopi. Just 2 runs came from that over, and Pratap usually
is a very good player, the very icon player for the side, and being the captain of the side is always leading from the front, performed very well, and so far he has got a very good tournament. बिल्कुल इस श्रृंखला में प्रताप ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिया है, ना सिर्फ बल्लेबाजी में भी बल्कि गेंदबाजी और विकेट कीपिंग में भी, और यहाँ पर उस सफलता के सिलसिले को वो आगे बढ़ाते नजर आते हैं। और पहले 3 ओवर का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ सतीश एक बेहतर गेंदबाजी, डिसेंट गेंदबाजी स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने किया। सिर्फ 14 रन उन्होंने प्रदान किए, एक विकेट भी वो प्राप्त करने में सफल रहा। और बचे हुए 5 ओवर का जो खेल है, अब ऐसा कहना पड़ेगा अटैकर्स को कुछ हद तक, जैसा कि आपने कहा, अटैकिंग बल्लेबाजी करनी ही होगी, क्योंकि रन की औसत है इस वक्त, रन रेट है इस वक्त एग्जैक्टली 4.66 रन पर ओवर, 4.66 रन प्रति ओवर। और अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो निर्धारित 8 ओवर में कम से कम 50 का आंकड़ा, 50 मार्क उन्हें क्रॉस करना होगा, पार करना होगा, तब जाकर वो एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और जहाँ तक स्ट्राइकर्स का सवाल है, पहले 3 ओवर के खेल में जो बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है, आने वाले ओवर्स में भी उनके गेंदबाजों को इस सफलता के सिलसिले को बरकरार रखना है, अगर उन्हें अटैकर्स के बल्लेबाजों को कम से कम रन पर अगर रोक कर रखना हो तो। Exactly, Gopi. It's definitely going to be psychological advantages for the depending team. But directed and is gone. Shailesh walked back to pavilion with a direct hit coming from the hands of a short fine leg field. This is the one wicket they wanted desperately. Strikers striking again with the wicket. It's a direct hit, not a good judgment of the run, not a good running between the wicket as well. And whenever there is a direct hit, always we can see that the 90% the result is going always in favor of a fielding team. And here also Shailesh finding himself short of his crease. The 14 for the loss of 2 wicket, and attackers looks like now a little bit deep in trouble. So for the latecomers, you're watching the first semi-final of this prestigious MPL. Mundala Premier League, which is proudly organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedike registered Mangalore and state award winning organization organizing such a wonderful cricket tournament. And the first is almost is running very successfully, and you are watching the match number 1 in fact first semi-final, and between these two teams, strikers versus attackers. And this time Ashradeep was a very key player for the side of attackers. He is the one definitely going to be the player to be noted in this big semi-final. And Yatin and Ashradeep, one very experienced, one is very talented. The two very good players out there in the middle definitely need to anchor the innings, need to build the partnership. This time slashes that one beautifully down to deep cow point region. Long chase here for the fielder. Before the fielder, Ashwin run across to his left and fields the ball. His right, in fact, and fields the ball down at deep cow point region. And ample time for the batsman to complete that couple of runs. So with that couple of runs, go start moving here from 14 to 16 now for the loss of 2 wicket. Akshay bowls. Oh, bowler's back drive. Late reaction coming from bowler Akshay, because there was a certain chance of caught and bowled. There's a certain chance of caught and bowled. Late reaction in the sense, Gopi, it's not easy for the bowler on his follow through to react immediately to take the catch whenever the batsman hits the ball. Bowler's back drive. And little bit late reaction, ball just missing his hands. Slower one, change up pace, excellent delivery indeed, but wicketkeeper behind the stump, Pratap, not really having good fair of hands this time, missed it completely from his hand. By call by umpire Sriraj. One more addition to total addition of that single scoreboard, Namuzan to 19 for the loss of 2 wicket. Akshay back to his bowling mark. The experienced campaigner so far is also got a very good tournament from the ball. Left-hand bowler round the wicket. Oh my goodness, beautifully bowled. Looks like it's a low full toss, but it's a Yorker land delivery. It's ball just passing under the bat of Yatin. Yatin might be just looking divert to convert that one into full toss, but I couldn't manage to make a contact with the bat. A good delivery to finish the over number 4 after completion of 4 overs, losing the toss, asked by the opposition to bat first, and Mundala attackers 19 for the loss of 2 wicket. Now half of the over completed, Gopi, just under 5 runs per over, the run rate progressing here, and in fact still they have got 4 overs to go. And what do you think, Gopi, having 4 overs, 24 deliveries excluding wides and no balls, and 8 wickets in hand,
But these two batsmen, Yatin and Ashadip, I think having these two batsmen, I think attackers, they wanted to get at least 40 plus runs, 45 to 50 runs in a stipulated 8 overs. बिल्कुल सतीश, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 45 से 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है, जैसा कि कुछ देर पहले मैं जिक्र कर चुका। और यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाजों की उपस्थिति इस वक्त बेहद ज़रूरी है। यतीन और हर्षदीप जो कि इस वक्त आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, पॉइंट पर कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे और 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त हुए। और इस बार गेंद को निकाला था पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से, फुल टॉस गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर, गेंद को फील्ड करने में सफल, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर एक टिप्पे के बाद, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। It's 22 for the loss of 2 wickets in the over number 5. गेंदबाज प्रताप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है। डीप कवर पॉइंट मौजूद, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात, ऑन साइड पर उछालना चाहा, बोल्ड आउट के रूप में ये विकेट गिर चुका है और प्रताप यहां पर ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं। यतीन सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, लेकिन पैर और बल्ले के बीच, बैट के बीच अंतर छोड़ गए और उस अंतर को चीरती हुई गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए उनके बल्ले और पैर के बीच से निकली और सीधे जाकर ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले गए। तो यतीन का विकेट यहां पर गिर चुका है। 8 रन उन्होंने बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, एक बेहतर पारी उन्होंने खेली और आउट होकर पिवलियन वापस यहां पर लौटते हुए, और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 22 रनों के ऊपर। It's 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है, नए बल्लेबाज इस वक्त तरुण का आगमन यहां पर होता हुआ 19 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए प्रताप की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा, त्योहार भरा माहौल यहां पर छा चुका है, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं इस लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट उर्वा क्रिकेट मैदान पर, यूसीजी पर, एमपीएल मुंडाला प्रीमियर लीग 2022-2022 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर रहे हैं अखिला भारत मुंडाला युवा वेदिका रजिस्टर्ड मैंगलोर ने। और ये श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर प्रगति पर, ये गेंद हल्के से गेंद तक पहुंचे, गेंद पर अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में और गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर पर, और इससे पहले कि गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, प्रताप की गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदला, रन लेना चाहता पहले, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से प्रताप एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद, थ्रो चूका, निशाना चूक चुका है, रन से नहीं मिलेंगे, लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रही थी। और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो इस ओवर में रन बने 4, एक और बेहतर ओवर अगर मुंडाला स्ट्राइकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 4 रन प्रताप ने प्रदान किया और अपना 2 ओवर का कोटा उन्होंने बाखूबी यहां पर पूरा किया। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 6 रन और 1 विकेट, और 8 ओवर के फॉर्मेट में इससे बेहतर गेंदबाजी और क्या हो सकती है। 2 overs, no maiden, 6 runs and a 1 wicket and a fantastic spell came to an end from bowler प्रताप। और जहां तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है, तो 3 ओवर्स का खेल अभी भी बाकी, और पहले 5 ओवर का खेल का अगर मुआयना किया जाए तो निस्संदेह यहाँ पर स्ट्राइकर्स के गेंदबाज अटैकर्स के बल्लेबाजों को अटैक करने से बांध कर रखने में काफ़ी हद तक यश वो प्राप्त कर चुके हैं। तो 6ठा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज अश्विन कुमार, पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को डालना चाहा, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, विकेटों पर निशाना दागा था लेकिन निशाना चूका और लेग बाय के रूप में यह रन उनके खाते में जुड़ चुका है। लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। शाम का वक्त 4:30 इस वक्त बच चुके हैं। दर्शक लगभग मैदान पर हरे भरे नजर आते हुए, यहाँ पर मैदान की दाईं और बाईं और दोनों ओर
नजर फिराया जाए तो दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए। रिवर्स शॉट इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ अंतिम क्षण में गेंद की गति को भांपते हुए थर्ड मैन की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन नॉट क्वाइट मिडल हिट, और बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर। रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष यहां पर करते हुए अटैकर्स के बल्लेबाज, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला, फील्डर कोई वहां पर मौजूद नहीं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए, डीप कवर पॉइंट से भी फील्डर दौड़ कर आए, लेकिन सबसे पहले पहुंचे वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर सीमा रेखा के अंदर चंद टिप्पों बाद उन्होंने गेंद को रोका, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 28 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 28 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress। अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, क्योंकि पूरी तरह रनआउट का खतरा प्रताप का थ्रो पहुंच चुका है, विकेट उखाड़ चुके हैं गेंदबाज, लेकिन यहां पर मैं समझता हूं बल्लेबाज इससे पहले क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो अपनी तीखी नजरों से देखने के बाद सही निर्णय यहां पर अंपायर श्रीरज ने दिया, और लेग बाय के रूप में यह रन उनके खाते में जुड़ चुका है। कुल मिलाकर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। शाम का वक्त, घने वृक्षों की परछाइयां इस वक्त धीरे धीरे पिच पर पधारती हुई इस बात का संकेत देती हुई कि इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी कम हो रही है। धूप का अस्तित्व मैदान पर मौजूद। सूरज अपनी हमारी मैदान की दाईं ओर इस वक्त अपनी अस्तित्व प्रकट करता हुआ और समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। और इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, पैरों पर टकराई, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा शफल होते हुए, लेकिन गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए, और लेग बाय के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। और निस्संदेह सतीश, द फर्स्ट 6 ओवर्स आई थिंक कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ स्ट्राइकर्स, और 6 ओवर में 30 रन सिर्फ प्रदान करते हुए, हालांकि 3 विकेटें जरूर उन्होंने उखाड़े हैं, लेकिन 30 रन पहले 6 ओवर में 2 पावर प्ले ओवर्स को शामिल करके अगर देखा जाए तो पहले 6 ओवर में सिर्फ 30 रन उन्होंने प्रदान किया, और निस्संदेह ये एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर कहलाएगी जो स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने की है। Exactly, Gopi. Outstanding bowling performance from strikers. That is a strategy, Gopi. Winning the toss is not important. After winning toss, elected to field first and implementing your strategy and game plan, it's so important. And so far, I think the bowlers really justifying the addition of their captain. Captain leading from the front, bowled 2 magnificent overs, 2 overs no more than 6 runs and a wicket, and outstanding bowling spell. Even Ashwin Kumar and Akshay is also bowled very well. I think so far at Gopi, the 6 overs which is definitely belongs to fielding team strikers, but 2 overs is very important for attackers. They need to attack some runs, otherwise very difficult to get good score. बिल्कुल सतीश, 2 ओवर में अटैक करना इस वक्त जरूरी बन चुका है अटैकर्स के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को सफल होते हुए उछालना चाहा ऑन साइड पर, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला लेग बाय के रूप में। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बिल्कुल इस बचे हुए 2 ओवर में अटैकर के बल्लेबाजों को अटैक यहाँ पर करना होगा, करारे स्ट्रोक्स, जोरदार स्ट्रोक्स खेलने होंगे चौके और छक्के के रूप में, और कम से कम जहाँ तक मेरा सवाल है 20 से 25 रन इस इन बचे हुए 2 ओवर में उन्हें बटोरने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो यहाँ पर गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं सूरज, और पहली गेंद पर 1 रन लेग बाय के रूप में बन चुका है। दाहिना तो ओवर द विकेट, एक बार फिर से सूरज की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, एक बार फिर से गेंद इस वक्त उनके पैरों पर टकराई, लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक सीधी और सदी लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मुंडाला स्ट्राइकर्स के, और इस वक्त दिक्कतें पैदा होती हुई अटैकर्स के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, और दोनों रनों के 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पर संतुष्ट हो चुके हैं। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, कोशिश जरूर कर रहे हैं अटैकर्स के बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग पर आगे निकले, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, देखा कि गेंद वहां पर शॉट फाइन लेग पर फील्ड की जा चुकी है और रन्स इस बीच नहीं मिलेगा। तो टॉस जीतने के बाद जो निर्णय स्ट्राइकर्स के कप्तान ने लिया था, उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज स्ट्राइकर्स के अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर आते हुए लॉन्ग ऑफ के, और इस बार दोनों फील्डर टकरा
है और यहाँ पर यह कैच छूट चुका है। कोल्यूशन दोनों फील्डरों के बीच में, मेरे ख्याल से ये कैच वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर का था और अंतिम क्षण में मिड ऑफ से फील्डर दौड़े पीछे की ओर और मैं समझता हूँ मैं कहूँगा कि पीछे की ओर दौड़कर कैच को लपकना काफ़ी मुश्किल है, जबकि पीछे से आगे की ओर आकर कैच को लपकना उसके मुकाबले आसान है। तो लॉन्ग ऑफ फील्डर इस कैच को लपक सकते थे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन मिड ऑफ फील्डर ने कोशिश किया और आखिरकार दोनों फील्डर टकरा गए और गेंद यहाँ पर जमीन पर गिरती हुई है। गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, एक मिसफील्ड, इस वक्त गेंद निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 37 रन्स इस वक्त चाहिए अटैकर्स के बल्लेबाजों के लिए। वो किस तरह से रन्स बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी है। तो इस ओवर में 8 रन बने और मैं समझता हूँ इस ओवर में 7 रन बने और अंतिम ओवर जो बाकी है सतीश, इस अंतिम ओवर में अब अटैकर्स के बल्लेबाजों को कम से कम 12 से 14 रन बटोरने होंगे, 13 से 14 रन। 50 के आंकड़े तक उनके टीम के रन संख्या को पहुंचाना हो गया। 50 के आंकड़े के पार जितने भी रन वो बनाते हैं, 50 के आंकड़े के ऊपर जितने भी रन वो बनाते हैं वो उनके लिए बोनस कहलाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि वे 50 के आंकड़े तक अपने टीम की कुल रन संख्या को इस अंतिम ओवर की अंतिम गेंद से पहले पहुंचाए। Exactly, Gopi, and you're right that if we're able to get at that runs which is required, just we are talking about for 50 runs, it's psychological advantage. Once you are got a 50 and you are going to depend, that total means it's psychological advantage is for the bowlers to depend that much of runs on the board. Less than then it might be difficult for the bowlers to depend, and that's why it's so important here for both the batsmen. One of the batsmen have to take the initial risk. Of course, both the teams batsmen have to take the risk because they are dealing with the final overs and 12 to 13 runs which is required, not less than that, Gopi, and 8 to less than that it might be the 45, not that much a big total, especially in the 8 over format of games. बिल्कुल 6 रन से रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर इस वक्त कुल स्कोर को खड़ा करना होगा। और पहली गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर नितेश, एक्स्ट्रा क्विकर, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 37 3 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। स्ट्राइकर्स के गेंदबाज नितेश अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तरुण इस वक्त सामना करते हुए, हर्षदीप नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए। आसमान पर जो घने बादल सुबह छा चुके थे, नीला आकाश को ढक चुके थे, वो घने बादल इस वक्त लगभग कम हो चुके हैं और नीला आकाश काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई देता हुआ। हालांकि बादलों के चंद टुकड़े इस वक्त नीला आकाश तले नजर आते हुए, लेकिन वर्षा के बादल नहीं। ये हमारे लिए इस वक्त खुशी की बात है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाज की गेंद तरुण के लिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड फैंटास्टिक वर्क बिहाइंड दिस रन मेड बाय विकेट कीपर प्रताप। स्ट्राइटर गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, अपना बैकफुट उन्होंने लिफ्ट किया था। अंतिम क्षण में गेंद जैसे ही विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, लगभग बिजली की रफ्तार में विकेट यहां पर चटका दिए विकेट कीपर प्रताप ने और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अटैकर्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। तो 4 गेंदें इस वक्त बाकी हैं और देखना है कि इन बचे हुए 4 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतरते हुए एज अ नंबर 6 बैट्समैन इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि गेंदबाज नितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। पुनीत नए बल्लेबाज इस वक्त अंपायर से गार्ड लेते हुए और फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त तैयार नितेश की गेंदों का सामना करने के लिए। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। रन के लिए दौड़ पड़े, प्रताप का थ्रो चूक चुका है, ओवर थ्रो, कोई फील्डर वहां पर नहीं, लेकिन डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए और जब तक वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था कि सिर्फ एक ही रन प्राप्त करने का। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंद का, तो सिर्फ 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। नितेश इस वक्त हर्षदीप एक बेहतर बल्लेबाजी यहां पर करते हुए सामना करने के लिए तैयार
और नितेश अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त हर्षदीप ने। ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस गेंद को गेंदबाज ने फेंकी और बल्लेबाज को विचलित कर दिया। इस गेंद पर रन नहीं मिला। 2 गेंदें अब बाकी हैं और एक बार फिर से नितेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम नितेश। 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन वो प्रदान कर चुके हैं और निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर वो देते हुए सिर्फ 1 रन जो बने थे वो बाई के रूप में। अंतिम गेंद उनकी पारी का द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और नितेश इस वक्त तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट हर्षदीप के लिए यह गेंद लेकर तैयार। 6 से 7 बार जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद दाहिना हाथ ओवर द विकेट यह गेंद उछाला, स्ट्रेट हिट एंड इट्स गॉन। आई थिंक इट्स कुड बी गॉन ऑल द वे। यस इट डज, इट्स अ बिग and he finished the innings in a style with a 6. And the innings is up. Their stipulated overs are completed. Attackers finished with 44 for the loss of 4 wickets in the stipulated 8 overs. And now the target for Mundala strikers is 45. And as far as the required run rate is concerned, just over 5.5 runs per over. They have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 5.63, the required run rate for them at this situation for them. 45 they have to get in the stipulated 48 deliveries. That means in their stipulated 8 overs with the help of 10 wickets, they have to score the present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. तो सतीश निस्संदेह 5 गेंदें बेहतर थे जिसमें कोई भी रन उन्होंने प्रदान नहीं किया, सिर्फ 1 रन प्रदान किया था वो भी बाई के रूप में। अंतिम गेंद पर मैं समझता हूं गेंद की लाइन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन ही पिक दैट वन फ्रॉम द राइट स्पॉट। गेंद को इस वक्त बिल्कुल सही लाइन पर गेंद को पिक किया था और उछाला था हर्षदीप ने छक्के के लिए। तो 44 रन बन चुके, जैसा कि हमने जिक्र किया था 50 रनों का आंकड़े तक कम से कम पहुंचना होगा। यहाँ पर 44 रन जोड़ चुका है, लेकिन जहां तक अटैकर्स के गेंदबाजी का सवाल है, उनकी गेंदबाजी के डिपार्टमेंट पे भी कुछ बेहतर गेंदबाज मौजूद है और वो अपनी क्षमता के अनुसार अगर गेंदबाजी करते हैं तो पहले ओवर से खतरा पैदा हो सकता है, मुश्किलें पैदा हो सकती है स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए। लेकिन स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज के पास जो बल्लेबाजी में गहराई है, डेप्थनेस इन बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस गहराई के अनुसार वो अपनी क्षमता के एबिलिटी के अनुसार एक बेहतर आरंभिक शुरुआत देते हैं तो स्ट्राइकर्स अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 45 रनों का लक्ष्य तक पहुंचना है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक रोचक क्रिकेट हमें इस MPL 2022 के अंतर्गत इस पहले सेमीफाइनल मैच के द्वितीयार्ध में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ उपस्थित होंगे यहाँ पर सतीश अंग्रेजी में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Hello. Hello. So thank you very much, Gopi. So welcome back again for the first semi-final of this prestigious MPL 2022 Mundala Premier League 2022, which is proudly organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedika registered Mangalore under the great leadership of President Jay Chandra and all the organizing committee. 45 is the target. 45 is the target. .44 is the total score of attackers. So 45 to win this match, and all we can see that the field set has been made for the two opening batters here for strikers. Already they came into middle. Akshat Pratap, two batsmen, the left and right combinations out here in the middle. Left hand batsman will going to take the strike. Akshat and Ashok is as always is open the bowling for attackers. Attackers, no other option at all. They need to attack first over itself, need to attack some wickets of their opposition, and strikers need to strike some runs if they wanted to win the match. Here is first ball, beautifully balled, but this time the wicketkeeper behind the stump. In fact, it's not from. It looks like it's got outside edge of the bat of Akshat, so that first run came from the bat of Akshat and for strikers. Not a big total to chase down. The 5.63 runs per over the required run rate for strikers to win this match. It's a 8 overs formidable game, so I don't think they will going to feel that much of pressure here. Having such a good batting department like captain leading from the front, he's got a very good tournament from the bat. They got the experience of Ashwin Kumar, and they got the left and right combination, and the Akshay is also can bat here. But if attackers wanted to win the match, they need to pick the wickets. This time, lovely delivery indeed. Look at that delivery. Very, very dangerously played there by Pratap. Quite rarely I am watching Pratap is playing such kind of unorthodox cricketing strokes. In his first ball itself, he wanted to play the reverse stroke. Luckily, that ball is just missed the leg stump, and there is no possibility of any run at all. Ashok from the far end. Right arm over the wicket, ball wide off the crease, and the ball going up further away, wide outside the run of off stump, and wicketkeeper gathers the ball, but not quite able to stop the umpire to signal the wide. Harish Padil signaling towards our score, and one more extra, 2 on the board without loss of any wicket. Lovely delivery, beautiful ball, beautifully arm delivery, the flighted one, quite deliberately given some flight in the delivery, inviting the batsman to go for the big shot. But this time it's a really ball is just moving from the good length spot, coming into the batsman, and batsman Pratap gives a full respect to that one. This time loose delivery and big punishment. You cannot bowl that line to the caliber of this man. Pratap has got a fantastic tournament from the ball. Pitched outside the line of leg stump, short pitch delivery, and he's just going after that. Played it beautifully down to deep backward square leg for a huge 6. The second 6 of this semi-final. The 1-6 which is came from the bat of attackers batsman, that is Arshdeep in the final delivery of their innings. That was a beautiful delivery, but I think it's the last moment that ball got an inside edge of the bat. At the same time, the opportunity of the run out as well in the strikers, and both the batsmen have survived from the last delivery. Beautifully balled there by Ashok. A good comeback. Luckily for Pratap, he's got an inside edge of the bat. Otherwise, it's a flum in front of wicket. 9 without loss of any wicket. Ashok. Beautifully ball, flighted delivery, just defeating the outside edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. 9 runs coming from that over. And Gopi, the big difference in this particular over is the 6, isn't it? And all we can see that one small mistake and huge stroke which came from the bat of Pratap. That means the strikers, they really started well.
and there almost looks like they got a positive start, but I think it's not a good start there from attackers. एब्सोल्युटली सतीश, निस्संदेह बेहतर शुरुआत स्ट्राइकर्स के लिए दे चुके हैं प्रताप, खासकर छक्का जड़ने के बाद पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर उनकी पारी में, अटैकर्स की पारी में अंतिम गेंद पर हर्षदीप ने छक्का जड़ा था और पहले ही ओवर में प्रताप ने छक्का जड़कर उस हिसाब को उन्होंने बराबर किया। तो यहाँ पर छक्का जड़ने की बदौलत 9 रन के साथ एक बेहतर शुरुआत स्ट्राइकर्स कर चुका है। अब वंस अगेन लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 45 minus 9 36 and over left is 7 and the asking run rate is now coming down to exactly 5.717 runs per over, 5.17 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त है। और मैं समझता हूँ एक सेंसिबल बल्लेबाजी, अगर अब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद जो दोनों बल्लेबाज हैं वो अगर सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हैं तो स्ट्राइकर्स अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक अटैकर्स का सवाल है, और उन्हें अब गेंदबाजी में ज़्यादा अटैक करना होगा आने वाले ओवर्स में अगर उन्हें बल्लेबाजों को बांध कर रखना है तो। Exactly, Gopi. The much attack which is required from the bowling, but not that kind of bowling, Gopi, which is started by Lohit. He bowled a big wide outside the line of off stump, and that will give lot of relaxation for the batsman. That kind of extra, that kind of deliveries. 10 without loss of any wicket in the over number second in progress. Lohit balls beautifully bowled. Look at the Pratap. This is a speciality of Pratap. He's not only plays the ball defensively, Gopi. The soft end comes into play. It's very important when you are picking up a quick single. When you play that one very softly, then very difficult for the closing fielder to run quickly to front to field the ball. Lot of time for the batsman to complete the single. And scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Lohit just changing his angle because left-hand batsman Nakshat on strike. Round the wicket he delivers. This time beautifully played out down to deep long off region. There is a fieldsman there, the deep long off. He's going to cut it off, but you cannot stop a couple of runs from these two batsmen. Looks like it's a possibility of catch there in the long off region for the fieldsman, and everything is going in favor of strikers. And scoreboard now moves on to 13 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Oh, was bowled him. I think. The bowled him. The wicket is uprooted. The bails are off. But by seeing the batsman Gopi, I am also confused whether it's a bowled or not. But ball, we can see that ball straight away hits the stump. But batsman started to run here, and the first wicket is back into pavilion. Meanwhile, I request for the second semi-final, the captain of Mundala Stars as well as captain of Mundala Royal Army, please report to the commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಾಲ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ a breakthrough here for attackers, and I think it's the right time to get another 2-3 quick wickets so that they can put some pressure onto the batsman. So what a fantastic tournament is going on here. We can see in the MPL VIP stand, there is a lot of dignitaries out here in the stage. We can see Ganesh Kulal, the corporator, the Manoj corporator, all dignitaries out in the MPL VIP stand enjoying the game of cricket. And this is the first semi-final of this prestigious MPL 2022. So new batsman, we are talking about the two key batsmen for the side of strikers, the Ashwin Kumar, one more fantastic all-rounder, one more player who's got a very good tournament from the ball, from the bat, is on strike. Lohit, he got a breakthrough, but not enough to win the match, needed such kind of deliveries regularly if they wanted to win this match. Ashwin is on strike, facing his first delivery. Lohit, this time first ball itself, Ashwin Kumar tried to play the slog sweep shot, but he couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. The line is outside the line of off stump. He almost drags that one, and didn't got that much of timing behind that slog sweep shot. 14 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Lohit with a short run up away from us. Right arm over the wicket. Pratap now quickly realizing that after losing a wicket, after getting 9 runs in the first over, he knows that just like my friend Gopi is mentioning about asking run rate is coming down to 5.17 after that first over, and just he wanted to rotate the strike, and is just implementing the right strategy. So Ashwin Kumar now
facing next delivery from Lohit. Right arm over the wicket delivers. Again, Ashwin Kumar is so good in rotating the strike. No problem whatsoever. Even the 7 fielders inside the ring saving the singles, but still they managed to rotate the strike. So 2 overs completed after a completion of 2 overs chasing 45 to win this match. Strikers are looking in a commanding position. 16 for the loss of 1 wicket. And Gopi first 2 overs, and certainly it belongs to the strikers. The 8 runs per over run rate progressing, but it's a 5.633 runs per over is a required run. But after getting 16 runs in 2 overs, Gopi, now I think it's just 29 more runs required for the victory in remaining 36 deliveries. Looks like strikers in the right track of winning this first semi-final. Exactly, Satish. They are on the right track. Or 29 runs, still they have to score for victory in remaining 6 overs. And now, asking run rate comes down more now. It's going to be 4.85 runs per over, the required run rate for them at this situation. 29 they have to score in remaining 36 deliveries. That means in 6 overs. और नेक्स्ट अंदे अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इस वक्त अटैकर्स के गेंदबाजों को अब एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे मंजिल की ओर इस वक्त बढ़ रहा है स्ट्राइकर्स। और पहले 2 ओवर का जो खेल था पावर प्ले का, उस 2 ओवर के खेल में बाखूबी बल्लेबाजों ने की है स्ट्राइकर्स के। तो इस वक्त अब कमबैक करना होगा अटैकर्स के गेंदबाजों को, ना सिर्फ कमबैक बल्कि जल्दी कमबैक करना होगा इसी ओवर से अगर उन्हें इस मैच में अपनी वापसी करनी है तो। Exactly, Gopi. Immediate comeback is so important here for attackers to win this match. And look at Ashwin. Beautiful. Delicately played that one. Played that one very late, isn't it? And coming back to that late cut, Gopi, it's a very difficult stroke to play, especially in underarm cricket. And if you talk about international cricket, and G.R. Vishwanath, one of the master of playing the late cut, isn't it? And but in underarm cricket, it was so difficult stroke to play very late. Ashwin Kumar just going back and played it very lately. Delicate looking late cut, and he picked it again, and is getting some inspiration from Ashwin Kumar. Pratap is also just wanted to tell that I got ability to play the late cut as well. So he's also played on late cut and picked up a single for that. The scoreboard numbers on to 18 for the loss of 1 wicket. In the over number 3 in progress. Coming back to this tournament, what a fantastic tournament. It's not so easy for the organizer to bring all talents in under one shelter. It's not so easy, and all around the South Kent district they need to invite the teams for this fantastic MPL. And I think the Akhila Bharata Mundala Yuva Vedic registered Mangalore did a great job. It's a great effort from them to giving opportunity for the talents of their communities to come and perform. And it's just like my friend is mentioning about, it's a great honor for any players, Gopi, playing in this UCG cricket ground. It's known as lots of underarm cricket, isn't it? And so far, it's outstanding cricket tournament is going on. Again, Ashwin Kumar tapping the ball just in front of a short mid wicket. That shows us the pressure, Gopi, what the attackers are feeling. Even the fielding is not really up to the mark, and because of these 2 batters are in the middle, they're playing. They're not feeling any pressure at all. They're just rotating the strike quite well. Again, beautifully ball. This time, I think Ashadip did a good job just pushing the batsman onto the back foot, and Pratap wanted to play that one very late, but not really able to get that stroke, but he played it defensively. Again, Ashadip, right arm over the wicket, going for the cut shot. Again, cut shot is not coming. That just mentioning about Gopi, how difficult to play the cut shot in underarm cricket because uneven bounces, isn't it? You cannot judge the same bounces in each and every delivery. There were variable bounces and very difficult to get a cut shot. Again, lovely delivery. Lovely delivery indeed. Ashadip knows that this is a wicket-taking delivery, but Kiran defended very well that one, and the decent over. And compared to last 2 overs, it's a very good over ball there by Ashadip. So completion of over number 3, chasing 45 to win this match. Still, I think strikers are in a commanding position. 21 for the loss of 1 wicket. Coming back to this tournament, we were not talking about the cricket tournament, and under the great leadership of the president. Jayachandra done a great job actually, and their principle is to provide a wide exposure to the young cricketers, which will nurture and develop their sporting skills, and they also aim to make use of sport and strengthen the friendship and bridge the gap within the community. And it is an immense pleasure for Akhila Bharata Mundala Yuva Vedic registered Mangalore that they wanted to bring all these talents in this UCG cricket ground.
and doesn't look like they're the first time they're organizing this cricket tournament. Lot of experience, lot of hard work which is required to perform this cricket tournament. More than anything else, Gopi, I noticed in this particular tournament that discipline from the players. There is no arguments. There is no that much of aggressiveness. We can see that everyone is the body language looks like they shows true sportsman spirit. That's very important success of any cricket tournament. And so far, it's outstanding cricket tournament, outstanding performance, disciplined performance from each and every players of Mundala community players. Outside the line of off stump and bowled wide outside the line of off stump. And that's not a good start here from very experienced Yatin. The starts over with the wide ball. Oh, plum! Absolutely plum in front of wicket in the negation. And Pratap is showing his bat, but umpire says ball missed the bat. And you are finding himself in the mid stump. That is a good off-cutter, Gopi. Sharp incoming delivery. And certainly that ball hits the midland leg stump. And outstanding delivery there from Yatin. And I think we will going to open the gate a little bit here for attackers, because they got a wicket of very important, the captain of their opposition, Pratap, back into pavilion. बिल्कुल सतीश, प्रताप का विकेट का पतन शायद द्वार को खोल सकता है इस वक्त अटैकर्स के लिए, क्योंकि और प्रताप का जहां तक इस गेंद पर खेलने का सवाल है, बैकफुट पर जाकर उन्होंने खेला तो ऑफ कटर गेंद थी और गेंद टिप्पा खाने के बाद लाइन पर टिप्पा का काफी ज्यादा रेस उछाल लेते हुए अंदर की ओर, जितना प्रताप ने पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया तो उससे ज्यादा गेंद तेजी के साथ अंदर की ओर आई और उनके लेग पर टकराई, पैर पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और श्रीरज ने आखिरकार अपनी उंगली यहाँ पर उठा दी और प्लम्ब इन फ्रंट के रूप में यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है। हालांकि प्रताप कुछ हद तक नाखुश, वो इस वक्त उन्होंने इशारा किया कि शायद बल्ला टकराया, लेकिन असल में क्या हुआ है आखिरकार उन्हें जाना पड़ेगा और आखिरकार वो पेविलियन वापस लौट चुका है, दूसरा विकेट खो चुका है और इस वक्त कमबैक करने का मौका जरूर है सतीश अब गेंदबाजों को। अगली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और कमबैक करने का यही एक सही वक्त है सतीश गेंदबाजों को, अटैकर्स के। Absolutely, Gopi. After picking up wickets, looks like we can see that the body language completely changed here of attackers. They are attacking more here, but this time a top edge from the batsman, but the ball is not carried to the fielder. That landed very safely down at deep long on and between deep long on and mid on, and one more addition to total. With the addition of that single scoreboard, numbers on to 23 for the loss of 2 wicket here in over number 4 in progress. Now we can see that the little bit positive is going in fielding team after getting the wicket of Pratap. They wanted to put some pressure onto the batsman. That's why they're pushing some fielders very close to the batsman. The Ashwin Kumar will go into face Yatin. Again, beautifully played that one down to backward point region. They're looking for a second, but misfielder by the fielder. Shailesh, I think, the fielder there in the deep cow point region. It's not a good thing to see that whenever they wanted to put some pressure, but I think the fielder is started to feel the pressure out here in the fielding department of attackers. What could be a certain single because of some misfield, unposed errors, you can say, from the fielder, and they converted single into 2. This time top edge, but no danger at all for Ashwin Kumar to get any fielder there in the short fine leg region. He picked up a single for that, and with that single scoreboard was under 26 for the loss of 2 wickets. Even Yatin picked up a wicket in this over, but I think runs are coming very freely, and that was not a good to see. Again, lovely. Absolutely perfect batting technique here from a new batsman Nitesh, just going back using the depthness of the crease and plays it quite beautifully to pick the single then. So over number 4 completed after completion of 4 overs, chasing 45 to entering into the finals of prestigious MPL, and I think strikers are moving very well, going very well. 27 for the loss of 2 wickets, another 18 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries, and before the next over will going to start, it's time to ask Gopi to take over the microphone. धन्यवाद सतीश। तो इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर और 18 रन चाहिए 24 गेंदों पर और प्रताप के विकेट के पतन के बाद अटैकर्स के गेंदबाज कुछ हद तक सही लय में गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर चंद डॉट गेंदे या फिर चंद विकेटें पूरी तरह उनको इस मैच में वापस ला सकते हैं। अगले मैच के लिए द्वितीय सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा मुंडाला स्टार्स और मुंडाला रॉयल आर्मी के बीच, और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के कप्तानों से
किरण बोलूर जो कि मुंडाला स्टार्स के कप्तान है और मुंडाला रॉयल आर्मी के कप्तान है रघु अत्तावरा। दोनों टीमों के कप्तानों से दरख्वास्त करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें टॉस के लिए। तो यहां पर दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद थी, हल्के से गेंद को स्टीयर किया। इस वक्त 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 17 रन चाहिए तेज गेंदों पर, कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर हर गेंद पर सिंगल्स भी बटोरते तो आसानी के साथ अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, 3-4 गेंद बाकी रहते हुए। तो यहां पर इस वक्त अटैकर्स के गेंदबाजों को इस वक्त घातक गेंदबाजी ही करनी होगी अगर उन्हें इस मैच में अपनी वापसी करनी है। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं हर्षदीप, हमसे दूर वाले छोर से दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अश्विन कुमार। ये गेंद ऑन साइड पर लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन। अगर बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो इस डिपार्टमेंट वाइड के डिपार्टमेंट पर गेंदबाजों को काफी हद तक नियंत्रण रखना होगा। और इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि पूरी तरह टॉस की गई थी गेंद और अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचना चाहता। फ्रंट फुट पर जाने के बाद घुटनों के बल झुकते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में रन से नहीं मिलेगा। ऐसे ही चंद और डॉट गेंदों की जरूरत इस वक्त अटैकर्स को वापसी करने के लिए इस मैच में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अर्शदीप गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर रन इस वक्त नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद और अर्शदीप एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। और इस बीच कुछ हद तक वो रुक गए, यहाँ पर एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करते हुए और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन कुमार के लिए, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद विकेट कीपर चुके फाइन गेंद निकल चुकी है इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में और एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पाओ, रन आउट का खतरा और निशाना चूका। दैट वाज अ सर्टेन रन आउट, लेकिन अंतिम क्षण में हड़बड़ाहट में थ्रो को रिसीव करने के बाद निशाना दागा था। जब निशाना समसो के कुछ दूरी पर निकला तब बल्लेबाज क्रीज से कोसों दूर थे और आसान सा रन आउट यहाँ पर हो सकता था, लेकिन इस मौके को विकेट कीपर ने गंवा दिया और यहाँ पर एक रन जरूर मिला और विकेट गिरने से बच चुका है इस वक्त नितेश का और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 5वां ओवर प्रगति पर बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। अर्शदीप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया, इस वक्त गेंद हवे में जरूर लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 14 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री एंड 3 ओवर्स टू गो आफ्टर दिस वन। अर्शदीप की गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, डीप मिड विकेट पर क्लीन कलेक्शन, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। तो इस ओवर में रन्स बने 5, तो नक्शा कुछ ज्यादा हद तक इस ओवर में नहीं बदला है। अभी भी तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ मुंडाला स्ट्राइकर्स का और 13 रन चाहिए 18 गेंदों पर और अटैकर्स के बीच में काफी लंबी बातचीत इस वक्त जारी है। और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अखिल भारत मुंडाला युवा वेदिका registered Mangalore in the name of MPL 2022 मुंडाला प्रीमियर लीग 2022। श्रीमान जयचंद्रा जो कि अध्यक्ष है इस मुंडाला युवा वेदिका के, इनके सारथ्य में, और जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है श्रीमान अजित कापिकाड, इनके और सर्व सदस्यों के सारथ्य में यहाँ पर ये श्रृंखला का बेहतरीन तरीके से आयोजन किया गया है इस सुंदर से यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर, जो कि लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के रूप से जाना जाता है। और ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए और इस श्रृंखला के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता है और बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। गेंदबाज यतिन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। स्ट्राइक इस वक्त अश्विन कुमार के पास और इस बीच गेंदबाज यतीन तैयार। ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में।
ऑन साइड पर फ्रंट फुट पर जाते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन वहां पर रक्षणा प्रोटेक्शन जो कि मौजूद और इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को प्राप्त हुआ। और रनों की इस वक्त सख्त दरकार स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की दरकार इस वक्त डेकर्स के गेंदबाजों को। परफेक्ट लेग कटर गेंद अंतिम क्षण में गेंद की टर्न को भापते हुए, गेंद पर बल्ले को लाते हुए, बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त गली की दिशा में, स्टीयर कर दिया था। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 11 रन अब चाहिए विजय के लिए। दबाव, प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, सडनली गोइंग डाउन द लेग साइड, अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर श्रीरज ने, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। घने वृक्षों के परछाइयां इस वक्त लगभग मैदान को ढक चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो मैच इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ता हुआ, और गेंदबाज यतिन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था। ना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार पैडल स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है जानते हैं इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी उन्हें अपनानी है, अश्विन और नितेश को, और यहां पर वो उसी तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हुए ओवर पिच गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद, गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद, जब तक सीली पॉइंट पर विकेट कीपर द्वारा फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 37 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। ये गेंद पैरों पर टकराई, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, 1 रन मिलेगा। 38 7 टू गेट नाउ, 2 overs टू गो, 12 balls रिमेनिंग, 7 runs दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और अभी भी कहना पड़ेगा मुंडाला स्ट्राइकर्स का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ। और जहाँ तक इस श्रृंखला के लाइव टेलीकास्ट का सवाल है, तो एक एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त देते हुए बेद्रा मीडिया के सर्व सदस्य जनाब इरफान इनके सारथ्य में यूट्यूब पर इस श्रृंखला का बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। और यहाँ पर जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, यहाँ पर अगर मैदान के चारों ओर नजर फिराई जाए तो निस्संदेह दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, और कुल मिलाकर एक बेहतरीन माहौल इस मैदान पर छा चुका है। अले ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಾಲ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. तो 12 गेंदे और 7 रन बनाने हैं। गेंदबाजी इस वक्त अशोक के हाथों में, अपना दूसरा ओवर वो प्रारंभ करते हुए, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। हवा का रुख कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन यहाँ पर शाम के वक्त होने के बावजूद, हालांकि शाम के 5 इस वक्त बजते हुए, लेकिन गर्मी का एहसास इस वक्त न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी कुछ हद तक यहाँ पर करते हुए। और कुल मिलाकर पहला सेमीफाइनल मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर मुकाबला इस वक्त जारी है इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो अशोक इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था, ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद को फील्ड कर लिया गया। शॉर्ट कवर फील्डर द्वारा रन नहीं मिलेगा। 7 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स नाउ। और अशोक इस वक्त चंद और डॉट गेंदों की तलाश में अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। मिड ऑफ फील्डर को थोड़ा सा पीछे इस वक्त तैनात किया गया है, 20 गज के दायरे के कुछ बाहर। और इस बीच अशोक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई, गेंद को खेला गेंदबाज की बाईं ओर से मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 6 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 10 बॉल्स। Dot balls and wickets badly required for the bowlers of attackers to get back into this match. और गेंदबाज अशोक की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, ऑफ कटर गेंद की घुमाव टर्न को पहचानते हुए, और गेंद को लॉन्ग ऑन पर जब तक फील्ड की जाए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर निभाते हुए ये दोनों बल्लेबाज। दूसरा विकेट जब गिरा था तब स्कोर था 22 रन। 18 रनों की साझेदारी ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। अश्विन कुमार और नितेश बी के बीच में रक्षात्मक तरीके का खेल, फॉलो थ्रू में गेंदबाज के हाथों में गेंद, थ्रो पहुंचा, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाया, बैकअप होता हुआ शॉर्ट थर्ड मैन पर। इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है।
19 runs already now added for the third wicket so far between these two batsmen. Ashwin Kumar and Nitin B are playing very well at this situation. और सिर्फ 4 रन अब चाहिए विजय के लिए, जबकि 8 गेंदें उनके पारी के अभी भी बाकी। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अशोक की स्वीप किया, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त लंबा पीछा करते हुए फील्डर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो रोकने में सफल होंगे या नहीं देखना पड़ेगा। सफल हो चुके हैं इस वक्त काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद, और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थोड़े से सफल होते हुए गेंद खूबसूरती के साथ इस वक्त स्वीप कर दिया था, पैडल स्वीप के जरिए 2 रन प्राप्त कर चुके हैं अश्विन कुमार, और इन 2 रनों के साथ विजय के और निकट यहां पर हो चुका है। स्ट्राइकर्स अब सिर्फ 2 रन चाहिए, जबकि गेंदें बाकी है 7 उनकी पारी में। अशोक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट ऑफ कटर, बैकफुट पर गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद मैं समझता हूं बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे काफी नीची रहती हुई, और इस नीचेपन को समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद को रोकने में असफल, और गेंद उनके बल्ले बैट के नीचे से निकलकर सीधे मिड लेग स्टंप पर टकराई, और इसी के साथ एक बेहतरीन पारी अश्विन कुमार की समाप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर अश्विन कुमार ने बनाए 13 रन. He scored 13 runs into his credit after playing a sensible knock for their side. He is back into pavilion. तीसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है. Strikers 43 for 3 and 7 overs has been completed. So 2 overs left in overall calculation in their innings. और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ, फिलहाल वो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मैच निर्धारित ओवर उनकी पारी में यहां पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज भरत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, लगभग 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में, और भरत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 2 of 60 levels they have to score for victory. ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. Just a single run. Mundala strikers have to score for victory to qualify for the grand finale of this competition. और राउंड द विकेट इस वक्त भरत गेंदबाजी करेंगे, और नए बल्लेबाज विशाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए बचे हुए 5 गेंदों में. तो भरत दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए विशाल के लिए. यह गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके के खेला, हल्के से गेंद को दबा दिया वहीं पर फ्रंट फुट पर जाने के बाद, 2 कदम आगे निकलने के बाद, और इस 1 रन के साथ Mundala strikers are through to the mega final of this competition, defeating Mundala attackers by 7 wickets with the 4 balls to spare, and with that victory they are qualified for the grand finale of this competition. Next match will be the second semi-final match, will be played between Mundala Stars versus Mundala Royal Army, and that match is now coming up live exclusively right after the short break. Till then we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the second semi-final match is going to commence within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಯುವ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಪಂಪರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ So thank you very much. Welcome back once again for the second semi-final of this prestigious Mundala Premier League 2022. And here is the announcement of the So thank you very much. Welcome back for the semi-finals. After winning the toss, captain of Mundala Stars, they elected to field first, and here is the first ball, and Yadnesh off the mark with the single, tried to slash that one, but not finding that ball from the middle of the bat. He got a little bit outside edge of the bat, and before that, backward point fielder comes into picture. Both the batsmen rotate the strike. First run comes up here for Royal Army, and Mundala Royal Army off the mark with a single. So we are talking about the man of the match of the first semi-final, and once again captain of the side Pratap winning this semi-final, and that semi-final man of the match will the trophy will go into distribute in the prize distribution ceremony later on after the big final. This time is gone. Take is outside the depth of the bat. Wicketkeeper behind the stump is celebrating here. And there's a big fish in the net here for
The Mundala Stars, they got a big wicket. The captain of the side is walking towards the pavilion. Disappointment continues here for Raghu, once again being the captain of the side. Again, he not really able to perform from his bat. And the first ball that he is facing is going for the off drive, big off drive, got outside edge of the bat. But it's a very good kick catch taken behind the stumps. Dayakar strikes in his first over. The one for the loss of 1 wicket. Quite unusual scoreboard. One for the loss of 1 wicket in the first over is in progress. As the new batsman just came into middle for Royal Army with lot of responsibility after losing a captain. It's all up to these two batsmen how to anchor the innings, how to study the innings. And we are talking about the innings. Here you go. The first ball itself, then the new batsman is off the mark. Kishore is off the mark with a single. 2 for the loss of 1 wicket. The left-hand batsman is... There is a fielder in the short fine leg, one at deep backward square leg in front of square, one at short mid wicket and deep long on. This time just wrist work comes into play. Off the toes, it turns that one down to short to mid wicket region for an easy single by Yatnesh, and with that single scoreboard numbers on to 3 on the board for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. For Kishore, there is a short fine leg very close, well behind the wicket keeper, one at square leg behind the square. This time again quicker delivery there from Dayakar, much quicker delivery, and the batsman react to that ball but not able to find that one from his bat. Nice little driven right in the gap before the fielder running back to field the ball. It's ample time for Kishore to complete that couple of runs. So first over completed. After completion of first over, Mundala Royal Army managed to get 5 runs by losing 1 wicket after completion of 1 over. So second over going to start from the far end. The 5 for the loss of 1 wicket. Ritesh brought into attack. Starts with the warm-up delivery of the evening. Far away outside the line of off time. Nothing much to do with the delivery. Yadnesh just left the ball, and rightly so, wide call by umpire. 6 for the loss of 1 wicket. Seven for the loss of 1 wicket. Ritesh bowling from the far end. This time Yadnesh went for the big shot, but again timing is not coming forward, and before that fielder from short mid wicket to field the ball, ample time for the batsman to complete the single. Both the batsmen
dealing with the single. They're playing as for the condition required. So they are playing with a steady mind. Outside line of off stump, batsman going for the big drive but missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. Rajesh began bowling from the far end with a short run up. Right arm over the wicket delivers. Again, appeal for leg before he can umpire. More chance of run out there, but it's not a good end to throw. And leg by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 9 for the loss of 1 wicket. Warm welcome to MLA of North constituency, respected Bharat Shetty. Just came here for this Mundala Premier League 2022. On behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, we'd like to welcome him for this prestigious Mundala Premier League 2022. Lovely shot, lofted that one, just over the top. Before the fielder run across to his left to stop the ball. Ball just winning the race against the fieldsman. Just breaking the shackle in the right time. What a fantastic struck came from the blade of Yajnesh. Just going over the top of that mid-off fielder, and he just delivered in the right time. And when it's last over of the power play, 2 overs completed, then it's first over completed, it's last over of the power play. Yajnesh realizing that yes, this is the time for me to freeze the arm, and he got boundary for that. 13 for the loss of 1 wicket. Delightful stroke to watch. The middle that one, sweet timing behind the strokes. The placement is perfection. Again Ritesh. Bowler's back dry. Off stop by the bowler on his follow through, and the batsman quickly they're changing the end. Quickly they're picking up a single for that. With that single, scoreboard numbers on to 14 for the loss of 1 wicket. So what we're talking about, this is the second semi-final. Both the teams desperately wanted to be in the final of this prestigious MPL. Already Mundala strikers are in the final, waiting for the winners of this second semi-final. Again, drives that one, lack of communication, directed, that is gone. This is an outstanding fielding performance here from the short mid-off fielder. This time I think we're talking about the wickets which is required for the fielding team. Absolutely, they got a big fish in the net. The batsman drives the ball towards a short mid-off, but Yajnesh, without seeing the ball, without seeing the fielder, he wanted a single, but it's too late for him to of course, control his speed. And before he's turned back to save his wicket, the throw direct hit coming from that mid-off fielder, and there is no hesitation in the mind of umpire Roland Pinto to raise his finger. The wicket number 2 is back into pavilion. 14 for the loss of 2 wicket. So equal battle is on between these two teams after completion of 2 overs. It's 14 for the loss of 2 wicket. Seven for the loss of 14 for the loss of 2 wickets. 7 runs per over is the run rate progressing here. Still they have to play another 6 overs, and any score around 50 plus, absolutely it's a good score to depend, especially in the evening. I think 50 plus runs always going to be the depending total, fighting total. What Mundala Royal Army wanted to get. Now captain brought into attack himself, Kiran, from the commentary box end. Kishore Parangipete. 2 Kishores out there in the middle. Now Kishore Parangipete will go into face his first delivery. Coming back to the field set, fine leg inside the ring, just behind the wicket keeper. Square leg going back to deep backward square leg. One at short mid wicket on deep mid wicket. Deep long on is there. Deep long off is there. There is a short cover point. One at backward point. Deep cover point. And one fielder between deep long off and wideish long off.
So that's a field set here for Kishore, and bowler Kiran, captain of the side, bowls first delivery. Oh, drags the ball into the stumps. Looks like. It looks like it's a wicket-taking delivery there, but a little bit excitement rather than. It looks like a ball. It looks like ball hits the stump, but it doesn't. Ball just misses the stumps. The Kiran again back to his bowling mark with a short run up. Right arm over the wicket bowls. It again outside edge of the bat. And before the wicket keeper to run to his friend to collect the ball. Again, both the batsmen is able to complete the singles with that single score, but moves on to 15 for the loss of 2 wicket here in over number 3 in progress. Kiran bowling, right arm. Again, very sharp after incoming delivery. That ball just passes the legs of the batsman. And one more very good delivery. So Kiran once again tried to restrict the runs, the flow of the runs in this third over of the dead power play. So far it's a good over, and 3 deliveries and just a single run he conceded. One of the best bowler, Kiran. Full toss delivery, slashes that one. They went for the quick single. Both the players has got a very good understanding between the wicket. There's no hesitation at all to call for a risky run. Especially the Kishore Parangipete is a very good runner between the wicket. Very busy customer, and he's the one is running towards the danger end, and he completed that single. 16 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. What a fantastic cricket tournament which is organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedic registered Mangalore. In this most beautiful UCG cricket ground, lots of underarm cricket, and you're watching the second semi-final of this prestigious cricket tournament. Ball aim around the legs, that ball passes. This is a really the bad shot selection there from Kishore Parangipete. It's always going to be asking for trouble when you're looking for the reverse stroke against the turning delivery of the bowler like Kiran, and he just pays the penalty for that. 16 for the loss of 3 wicket. Royal Army. So Rakshit is the new batsman in. Will go into face Kiran. Again, one more sharp incoming delivery. The batsman almost catched in stumps, but were able to get the single. He's got a bat onto that, and it's a very good over. The over which is required for his team, Mundala Stars. So, once again, thank you very much, respected MLA of North Constituency, Mr. Bharat Shetty. After spending a very important time in this MPL, is just leaving the stadium. And thank you very much for your wholehearted support for the success of Mundala Premier League 2022. So, 3 overs completed. It's a 17 for the loss of 3 wicket. So, Avinash brought an attack from the far end, from the Rama Bhajana Mandira end, bowling with a short run up.
keeping 1, 2, 3, 4 fielders in the offside region, 5 on the on. Deep long on, short mid wicket, deep mid wicket, deep backward square leg. In behind the square, one at short fine leg. Deep long of deep cover point, short extra cover. One fielder at the short backward point. What a delivery. Fantastic delivery. Caught behind the wicket. This is outstanding stuff here from Avinash. The perfect delivery. Just like you are watching the cricket in international level. That kind of movement, the deviation. Perfect outswing delivery there from Avinash to receive the wicket of the right-hander batsman Rakshit. And pitched in a line. Catching the batsman onto the backward. Batsman tried to push that on in the offside region. And he got outside edge of the bat and wicketkeeper behind the stump. The sharp catch taken behind the stumps. The wicket number 4 is back into pavilion of Royal Army. There looks like they are in a trouble now. 17 for the loss of 4 wicket. Avinash bowling with a short run up. Right above the wicket delivers. Nice looking drive. Technically very sound in the occasion. The batsman Rakshit not only covers the stump, but he's just sending that one between point and extra cover. You know exactly there is a huge gap between backward point and extra cover. Nagraj, little correction, is the man who picked up a single. Now Kishore Suttarpete will go into face next delivery. Nice looking drive. Just reading the turn of the delivery very well. Playing it a little bit late. Just waiting for the turn of the delivery. And he just gets the placement right between mid-on and the bowler. 19 for the loss of 4 wicket. Again, nicely bowled. That was a one delivery. Very good in it. Avinash bowling that kind of line. Always is very difficult for the batsman to tackle with. And it's so far it's a good over from Avinash. Right arm over the wicket. This time batsman off the back foot. Nicely gets a placement down to cover point region by Nagaraj. And with that single scoreboard now moves on to 20 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Slowly we can see that sun is almost inching towards the sea. Almost they completed this job. This time a little bit hesitation for the run. At the same time a little bit fumble from that short mid wicket fielder. What could be a certain chance of run out there. And because of that fumble from the fielder, the batsman survived from that run out. Not only they survived, but they picked up a single for that. So completion of over number 4. And Royal Army still they're struggling in the middle as far as the run rate is concerned. Just above 5 runs per over they're scoring. And after completion of over number 4 is 21 for the loss of 4 wicket. And before the next over will go into start here, I would like to invite Gopi to take over the microphone. And Gopi, once again it's a slow start, just like what we saw in the first semi-final. And the same kind of start here for Royal Army as well. And not a good start, 21, and not only they're struggling with the run rate, but at the same time they lost 4 wickets. But still they got opportunity to come back. 4 hours to go. And what do you think? How many runs going to be comfortable to defend the big and second semi-final? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पर, जहाँ तक मेरा सवाल है 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, परफेक्ट ऑफ कटर, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ओवर थ्रो। इस वक्त गेंदबाज के पैर से लगकर गेंद निकली थी शॉर्ट फाइन लेग पर और 1 रन यहाँ पर बल्लेबाज को मिलेगा। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बिल्कुल सही बात है। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मुंडाला स्टार्स के, और इस वक्त दिक्कतें काफ़ी हद तक पैदा होती हुई रॉयल आर्मी के बल्लेबाजों के ऊपर। और जैसा कि आपने पूछा था सतीश, तो कितना स्कोर बनाना होगा, जैसा कि मैं पहले भी कुछ लम्हों पहले मैंने फरमाया कि कम से कम 50 के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा, फिर 50 का आंकड़ा उन्हें पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो निर्धारित 8 ओवर में। तो यहाँ पर रक्षात्मक तरीके का खेल अपनाते हुए और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मुंडाला स्टार्स के गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो इस बार गेंद को बैकफुट पर जाकर ढकेलना चाहा था, लेकिन गेंद कुछ हद तक घुमाव लेते हुए अंदर की ओर आई, बैक लेग पर टकराया, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा।
और यहाँ पर हरीश पटेल ने आखिरकार उन्हें आउट घोषित किया। तो इस तरह से 5वां विकेट गिर चुका है। 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड रॉयल्स आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। रॉयल आर्मी इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ 5 अपने बहुमूल्य विकेट को खो चुका है 22 रनों के योग पर। और यहाँ पर मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था कि किस तरीके की वापसी इस वक्त करनी चाहिए उन्हें अगर एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सतीश, इस वक्त कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें अपनानी होगी अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो जहां तक सवाल है गेंदबाजी का दाहिना तो ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है वाइड स्लॉग ऑन पर इनटू द गैप एज वेल। और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद को राइट फ्रॉम द स्पॉट पिक करते हुए इस वक्त ऑन साइड पर उछाला वाइड स्लॉग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच गैप चुनते हुए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए एक टिप्पे के बाद। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार, रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। अगली गेंद पर रक्षात्मक तरीके का खेल खेलते हुए वो जानते हैं हर गेंद पर स्ट्रोक लगाना उतना आसान नहीं है, करारे प्रहार करना उतना आसान नहीं है। और यहाँ पर गेंद की लाइन को भापते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। और एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद लगभग बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई, लेग बाई का इशारा और पैर से लगकर गेंद निकली थी। इस वक्त 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। तो कुल मिलाकर इस ओवर में 6 रन बने, 6 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा स्टिल द बैट्समैन ऑफ रॉयल आर्मी, स्टिल द बैट्समैन ऑफ रॉयल आर्मी सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और अभी भी अपनी सही राह को तराशते हुए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो हमसे दूर वाले छोर से 6ठा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ गेंदबाज जो कि गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, शाम का वक्त, धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है, सूरज मैदान की दाईं ओर इस वक्त काफी नीचे उतर चुका है, बिल्कुल आग का गोला इस वक्त बन चुका है और समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय करता हुआ। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट which organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedika registered Mangalore in the name of MPL 2022 Mundala Premier League 2022 under the great leadership of Mr. Jay Chandra। इस बार गेंद को छाला, लंगॉन पर इस कैच को लपक लिया, not finds the gap as well and because of that he paid the penalty। 1 more wicket fallen, विकेट इस वक्त गिरते हुए और हर विकेट के पतन के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ रॉयल आर्मी के ऊपर। तो सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित और यहां पर मुंडाला स्टार्स के गेंदबाज छाते हुए। शाम के 6 इस वक्त बज चुके हैं, धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा छाता हुआ और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी यहां पर कम होती हुई और इस ढलते हुए रोशनी तले यहां पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला MPL 2022 का द्वितीय सेमीफाइनल मैच का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और जहां तक सवाल है इस मैच का तो इस वक्त रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए इस वक्त रॉयल आर्मी के बल्लेबाज और गेंदबाज जो कि अपना नया ओवर प्रारंभ कर चुके हैं, रितेश जो कि अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और एक बार फिर से अपनी दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए।
मिड लेग स्टंप पर गेंद, ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त निकाल दिया, स्विंग कर दिया था। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच जो लंबा गैप अंतर है, उस अंतर को चीरती हुई गेंद निकली इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के दीवार पर टकराते हुए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। कुछ हद तक राहत भरी सांस इस चौके के साथ लेते हुए बल्लेबाज रॉयल आर्मी के, और यहां पर बातचीत चलते हुए मुंडाला स्टार्स के खिलाड़ियों के बीच में वो कुछ समझाते हुए गेंदबाज को कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए। और कुछ बातचीत के बाद एक बार फिर से अपने मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज और पहुंच चुके हैं अपने गेंदबाजी के मार्ग पर, अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, ओह ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट, निस्संदेह आउटस्टैंडिंग एफर्ट इस वक्त किया था गेंदबाज ने। अपनी बाईं ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने हाथ में वो दबोच नहीं पाए। लेकिन कहना पड़ेगा एक बेहतरीन प्रयत्न इस गेंद पर उन्होंने किया था कॉटन बोल्ड के लिए, और आखिरकार इस गेंद पर एक रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज रितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद इस वक्त पहुंची शॉट फाइनल लेग की दिशा में, रन मिलेंगे। जी हां, एक नहीं दो, 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। रन्स इस वक्त चाहिए रॉयल आर्मी के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं यह उनके लिए जरूरी नहीं है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए रॉयल आर्मी के बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, ये दोनों बल्लेबाज रन्स बटोरने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास यहां पर करते हुए। फ्लड लाइट्स, खंबे के लाइट्स जो कि इस वक्त जल चुके हैं, शाम के 6:05 यहां पर बच चुके हैं, और अंडर फ्लड लाइट्स ये मैच इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, अंतिम क्षण में लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक और वाइड, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। कुछ हद तक संभलता हुआ धीरे धीरे रॉयल आर्मी, खासकर इस ओवर की बदौलत जिसमें अब तक 8 रन प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज रितेश, 1 विकेट प्राप्त करने के बावजूद। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल। गेंद पहुंची सिली मिड ऑफ पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 35 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। रितेश एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त फिर से सामना करते हुए उनकी गेंदों का, यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, डाइविंग एफर्ट, लेकिन गेंद को रोकने में सफल, और गेंद को रोका गया पैर के जरिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। जीतोड़ कोशिश एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने की थी अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को रोकने की, लेकिन आखिरकार गेंद को रोकने में असफल। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। ये गेंद चिप किया, गेंद हवा में और सीधे फील्डर के हाथों में। प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को चिप किया था इस वक्त, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है 37 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 6 overs completed, 37 for the loss of 7 wickets. Just they got 3 wickets kept intact, और 2 ओवर का खेल अभी भी उनकी पारी में बाकी। इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच में मुंडाला स्ट्राइकर्स का सामना करेगी, और वो मेगा फाइनल मैच इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच के बाद यहां पर खेला जाएगा। तो यहां पर संघर्ष जारी है द्वितीय फाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुंडाला स्टार्स और मुंडाला रॉयल आर्मी के बीच। तो बातचीत इस वक्त चलते हुए खिलाड़ियों के बीच, और नया ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से।
तो बातचीत इस वक्त जारी है और काफी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा जो कि सौंपा जा रहा है गेंदबाज के हाथों में, जो कि नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए। तो बल्लेबाज जो कि नंबर 10 की जर्सी यहां पर पहने हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। गेंदबाज जो कि नंबर 10 की जर्सी पहने हुए अविनाश की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, गली, एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग, 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। इस वक्त सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में इस श्रृंखला के नियमों के अंतर्गत पहली गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ अंतिम क्षण में कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को ड्राइव करना चाहता, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 7वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच करना चाहता, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं और इससे पहले की गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 38 रन स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 7 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर वापस लौटते हुए और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते नहीं मिलेगा। तेजी के साथ झपकते हुए कवर पॉइंट, डीप कवर पॉइंट से फील्डर आगे की ओर आए। कवर पॉइंट पर गेंद को उन्होंने फील्ड किया और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहां पर जुड़ता हुआ। तो एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज अविनाश यहां पर गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर वो तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन मिलेगा, वहां पर फील्डर मौजूद हैं और 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 40 रनों पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अभी भी रनों के लिए संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज रॉयल आर्मी के, और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज स्टार्स के। ये गेंद इस बार उछाला, मौका हो सकता है एक्स्ट्रा कवर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 8 डाउन और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है 40 रनों के ओवर पर। काफी संकट की स्थिति में नजर आती हुई इस वक्त रॉयल आर्मी। 40 रनों के ओवर पर 8वां विकेट खो चुका है। इट्स 40-8। So just two wickets left in their innings and 1 over to go after this one. और जहां तक सवाल है इस ओवर का, तो इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी और नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए नंबर 31 की जर्सी पहने हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे अविनाश की ओवर की अंतिम गेंद का। लतीश बी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और अविनाश अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, अपील जरूर लेकिन सही तरीके से अंपायर हरीश पटेल ने नकार दिया। गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन का इजाफा और मैं समझता हूं इसको बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। बल्ले का भीतरी किनारा, अंदरूनी किनारा टकराया था और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रन पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड 7 ओवर्स हैड बीन बाउल्ड। सो द लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज अपने बचे हुए 2 विकेटों की मदद से और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। बॉलर उमेश टी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार बल्लेबाज लतीश बी और अंतिम ओवर इस वक्त रॉयल आर्मी की पारी में शुरू होता हुआ। सिर्फ 6 गेंदें बाकी उनकी पारी में। ओवर की पहली गेंद उमेश की, यह गेंद बॉल्ड आउट। विकेट नंबर 9 गिर चुका है। मत स्ट्रेट लाइन
और इस लाइन पर नहीं आ पाए, विकेट से हटते हुए गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और आखिरकार सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ 9वां विकेट गिर चुका है. 41 for 9 with just 5 balls remaining in their innings. And now we are just waiting for the number 11 and the last batsman of Royal Army. तो नंबर 11 और अंतिम बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे उमेश टी के ओवर की अगली गेंद का. 41 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दिया है मुंडाला स्टार्स के गेंदबाजों ने. प्रकाश, ये गेंद प्लम, एब्सोल्युटली प्लम, और इसी के साथ द इनिंग्स ऑफ Royal Army bundled out for just 41 runs in 7.2 overs before four deliveries before of their stipulated 8 overs quota. They were bowled out for 41 in 7.2 overs, and now the target for Mundala Stars is 42 in 8 overs. They have to score for victory to qualify for the grand finale of this competition, mega final of this competition, to face Mundala Strikers. 42 run bana, 42 they have to score in the stipulated 8 overs with the required run rate of exactly 5.25 runs per over with the help of 10 wickets. They have to score for victory to qualify for the mega final of this competition. That means 42 they have to score in the stipulated 48 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी और यहाँ पर सतीश आइए, एक बार फिर से आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮುಂಡಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏನು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಟಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸುವಾಗ ನಾಣ್ಯ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾಯ ಇವರ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟಾಸ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಪ್ತಾನ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಅವರ ಇಬ್ಬರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ವಿ. Here is a special announcement during the final match while the toss will be conducted, and we have designed a coin which consists of silver coin, and one side of that coin we have our constitution, the father of our constitution, Dr. BR Ambedkar's photo. Another side we have Kudmul Rangarao's photo. And this is a small tribute from us to those great persons. Akhila Bharata Mundala Vedike, we have specially designed that coin. That will be a silver coin, and winner will be the captain who wins the toss will be given that special coin. Thank you. धन्यवाद श्रीमान रजनीश जी. तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. जो चांदी का सिक्का जो कि उड़ाया जाएगा फाइनल मैच के लिए, और उस सिक्के के दो पहलू में डॉक्टर BR अंबेडकर और श्रीमान कुद्मुल रंगाराव इनके चित्र जो कि होंगे. और निस्संदेह ये दोनों महान हस्तियां समाज सुधारक थे अपने ज़माने में और समाज के लिए काफ़ी योगदान उन्होंने दिया है. तो उन्हें एक विशेष गौरव अर्पण करने के लिए ये चांदी के सिक्के को विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसके एक पहलू में श्रीमान डॉक्टर BR अंबेडकर और दूसरे पहलू में श्रीमान BR कुद्मुल रंगाराव इनके चित्र जो कि शामिल है. डॉक्टर BR अंबेडकर और कुद्मुल रंगाराव. और मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन काम यहाँ पर किया है.
अखिल भारत मुंडाला युवा वेदिके रजिस्टर्ड मैंगलोर ने इन दोनों समाज सुधारक महान हस्तियों को विशेष गौरवार्पण करने के लिए और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है 42 रनों का लक्ष्य 42 द टारगेट और सतीश निस्संदेह 42 एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रन रेट 5.25 रन पर ओवर और मैं समझता हूँ स्टार्स के लिए कुछ ज़्यादा कठिन लक्ष्य तो नहीं लेकिन एक सतर्क शुरुआत उन्हें करनी होगी। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर रॉयल आर्मी का तो उनके गेंदबाजों ने कुछ खास काम तो कर नहीं दिखाया, अब उनके बल्लेबाजों ने खास काम तो कुछ कर नहीं दिखाया। अब सवाल है उनके गेंदबाजों का, तो मैं समझता हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक घातक गेंदबाजी करनी होगी। अगर उन्हें स्टार्स मुंडाला स्टार्स के बल्लेबाजों को 42 रनों के 41 रनों के लक्ष्य के अंदर 42 रनों के लक्ष्य के अंदर अगर रोक कर रखना है तो कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच का द्वितीयार्ध काफी रोचक होगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ मैं माइक्रोफोन पर अब आपको आमंत्रित करता हूं। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So all set now for the innings of Stars, and starts with a single that the opportunity is created in the first ball itself. If the cow point fielder able to collect the ball neatly, and he just missed the ball completely from his hand, and the batsman completed a single. So 42 is a target. It's not a big target to chase down, just like Gopi is mentioning about. And Gopi, at the same time, we can see that under floodlight they're chasing that run Stars, so that if a Royal Army bowls well, they can depend this total under this condition. Again, looking for the sweep shot, they're going for the run, and they managed to complete that easily in the end, because both the batsmen really got a very good understanding between the wicket. It's so important for the opening batsman. Avinash and Ritesh, every time they're going for the quick single, and they're not having any hesitation in the mind to pick the singles. So 2 without loss of any wicket. Both the batsmen is off the mark. Agnesh again bowling away from us. Left arm again, nicely driven straight to the hands of short mid-off. And again the fumble from the fielder. The batsman completed a single. 3 balls, 3 singles. And the batsmen are really aware of that. They know exactly they're not chasing a big total to chase down. Just rotating a rotation of strike is enough for them to qualify for the final of this prestigious Mundala Premier League 2022. Again, Yajnesh bowling with a short run up. Beautifully bowled. Equally well played there by the batsman. This is a sensible batting here from the batsman Avinash. Just allow the ball to coming into his bat, and the roll of the wrist comes into play to pick the single. Ritesh picked up a single, and scoreboard now was on to 4 on the board. Sensible batting from these two batsmen. They're dealing with a single, rightly so. Even though it's a power play is on, but they know exactly they're facing one of the best bowler for the side. And the best bowler of the side, Yajnesh, one who picked up a hat-trick so far in this tournament. Only one hat-trick which is recorded in this MPL 2022 season 1. That is none other than Yajnesh. Bowling away from us. 5th time in this over. Quicker one, but line is not good. Almost around the legs. And the batsman picked up a single in the form of leg by. So with that extra scoreboard now moves on to 5 on the board. 5 singles in 5 deliveries. So intention, the strategy, the game plan, what the batsmen of Mundala Stars are implemented, they are just providing that one in the first over itself. They are rotating the strikes very well. 5 without loss of any wicket here in over number first in progress. Yajnesh bowling away from us. Left arm round the wicket. This time batsman fails to make a contact with the bat. First dotted delivery of this over, and after completion of over number first, chasing 42 to win this match, Mundala Stars managed to get 5 runs without losing any wicket. It's a decent start. Just coming back to this tournament, just with where Rajneesh is just mentioning about that silver coin for the big final, the mega final. The winning captain will going to win a silver coin, which is inclusive of 2 faces of this coin. One is having the pick of the architect of Indian constituency, Dr. B.R. Ambedkar, and in other side Kudmal Rangarao. And everybody knows that Kudmal Rangarao, one of the social reformer who established different classes mission in 1897 in Manglore for providing education, better housing and drinking water, and empowering the backward classes socially. So definitely they wanted to remember these two, the stars of their community. They really helped them to uplift socially the backward caste, and they're remembering them. I think it's a good move
by Akila Bharata Mundala Yuva Vedike, that providing that silver coin, having two faces of that coin, two the stars. That is on is Dr. Ambedkar, B.R. Ambedkar, and another one is Kudmal Rangarao. 5 without loss of any wicket. The second over is going to start from the far end. Raghu brought into attack. The batsman in front of him is Avinash. Raghu. Flum. Absolutely flum. No doubt at all. He cannot play that kind of cricketing stroke when the bowler like Raghu bowling a slight leg cutters. He's across the line of the delivery, nowhere near the pitch of the delivery, finding himself right in front of midland leg stump. That's the kind of bowling which is required in the beginning for Royal Army, because they're defending a small total. First wickets back into Pavilion of Stars. 5 for the loss of 1 wicket. So once the lights are on, look at this UCGK ground. Absolutely, it was one of the most beautiful and delightful view of this UCGK ground. It is always going to be a great pleasure for each and every players to come and perform in this most beautiful atmosphere. Absolutely, it was good to see the good crowd out here in the UCGK ground. Even though this is not an open match, it's a community match, but look at the crowd here. They're really supporting each and every the matches today, with a big number, the good number, enjoying the game of cricket. Raghu, second time. Eighth time batsman tries that one, but lack of placement. Raghu on his follow-throughs, quickly moving to his right to fields the ball, denying any run from the batsman. It's a good contest between two captain. The captain of either side, the captain of Star Kiran facing captain of Royal Army. Absolutely very good contest between the bat and ball. Raghu with a short run up. And over the wicket, Delhi was, this time Kiran wanted to break the shackle. He wanted to hit that one across the line of the delivery. Luckily, that ball got extra turn. Because of that extra turn, that ball just missed the ball wicket. Goes outside the line of off stump. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. And there is no possibility of any run. Raghu, some little bit encouragement for the bowler like Raghu when the lights are on. It's an artificial light and it's not a sunlight. The LED lights are on and bowlers little bit effective now. Again, quick single taken by Kiran. Quickly realizing that hitting the ball against the turning delivery is always going to be asking for trouble. Now is that try to push the ball here and there to rotate the strike to get some runs on the board. 6 for the loss of 1 wicket. Raghu back to his bowling mark. Little bit conversation between the batsman. Kiran being the captain of the side. He got a lot of responsibility. Maybe some having a chatting with his partner Ritesh. Maybe they are talking about the strategy, the game plan against the bowling of Raghu. Need to keep the wickets in hand. Once they keep the wickets in hand, they can get any required run rate above 6 runs per over. Improvisation straight to the hands of field and he drops the catch. Definitely going to be a big miss, because 1 wicket here or not, so definitely will going to open the gate for Royal Army. But fielder at short fine leg is just missed that golden opportunity to catch the ball. He drops the catch, gives a life to the batsman, and not only that life but 1 run. 7 for the loss of 1 wicket. Raghu putting his 100%, being the captain of the side, just like what Kiran is did in his bowling. Again across the line, swinging his bat. Again a chance of run out, direct hit required. Ball is not in the hands of wicketkeeper. Again the Royal Army missing some opportunities out here. Opportunities not coming to your way regularly. You need to grab all these opportunities.
And the second occasion in this over, they're missing the opportunity of getting the wickets of their opposition. So after completion of over number 2, chasing 42 to win this match. And Mundala stars 8 for the loss of 1 wicket. So warm welcome to Vishwas Kumar Das, who is enjoying the game of cricket in our main stage. Vishwas Kumar Das, the president of Congress backward class committee, is enjoying the game of cricket here in right of our commentary box in the main stage. And Yajnesh brought into attack. First ball going for the cut shot, chance of run out it, and directed ban. Umpire says it's not out. Kiran looks like he's a safe. He's putting his bat in the right time, and that's why umpire is not interested to call. And you can see that excitement going around the fielders because quite understandable, isn't it? Quite understandable seeing that Kiran's wicket is so important for Royal Army. So important for Royal Army. That's why they are little bit putting some pressure onto the umpire, Roland Pinto, but he is very experienced. 37 years of experience being the umpire at square leg. 26 years of experience. The main umpire, Harish Padil, the two stars as far as officials is concerned, is officiating along with the Sriraj. This wonderful cricket tournament. Again, the lovely delivery indeed from Yajnesh. Again, the wickets are uprooted, but not from the ball. The wicketkeeper having a little bit work behind the stumps, but no damage done. They're putting some pressure. Excellent strategy here from Royal Army. That was really required, isn't it? Body languages. When you are defending a small total, you need to put some pressure onto the batsman by bowling some good deliveries. And so far, it's a really good battle is on for the places in the final of this prestigious cricket tournament, Mundala Premier League 2022. Oh, that was a beamer, absolutely beamer, and straight away umpire called it's a no ball. They're looking for the second little registration for the second. Kiran is not interested. The no ball called by umpire Harish Padil. This is a rare beamer we can see in Underarm cricket. Such kind of beamer we can see in international cricket. But here is Yajnesh tried to bowl York on line delivery, but he couldn't manage to control that delivery. Is above the waist level, then it's going to be a no ball. Not only the no ball, but it's a free hit delivery for the batsman. That means it's a golden opportunity for the batsman to capitalize that free hit delivery. Always going to be a good opportunity for the batting team to grab the opportunity to get some big stroke in that free hit delivery, because unless a run out, every out is not considered for that for that free hit delivery. Again, that was excellent delivery again from Yajnesh. He just survived from that free hit delivery, bowling that quick delivery. You know exactly what a batsman going to do, and he bowled away from the bat of the batsman. Quicker one, straighter one, and the batsman completely missed out that delivery. 10 for the loss of 1 wicket here in over number 3 in progress, chasing 42 to win this match. Everything you can expect from these two teams. The battle is on. Chance of run out here. This time batsman, I think, is not going to survive. At last, a struggle and struggled and struggled, but struggles are comes to an end here from the batsman Ritesh, as he wanted to rotate the strike, as he wanted to pick the single where there is no run at all. It is too late for him to run back. Then the good throw coming from the closing fielder towards a wicket keeper. He completes the formalities of run out. So 10 for the loss of 2 wickets.
Over number 3 in progress. That was an excellent defend here from Royal Army. They're not really allowing the batsmen of Mundala Stars. The stars are not rising even in the night. That's only because of a Royal Army. They are really performing like an army. The 11 armies of Royal putting some pressure to the stars of Mundala. Not really giving the stars to shine here in this UCG cricket ground. But floodlights are shining out here in the UCG cricket ground. One of the most beautiful cricket ground here in South Kendra district. 10 for the loss of 2 wickets. New batsman just walks towards the middle. Umesh is the most experienced campaigner. He's a good all-rounder. Bowled a very good last over for his team. Now job is not yet over. He need to contribute from the bat. Sensible batting which is required. Sensible batting required here for Mundala Stars. 42 to win this match. Still have to get another 32 runs. Nothing much worried about the required run rate. If the wicket's in hand, rotation of strike. But if the question raising out here is that under floodlight is always going to be the difficult one. Not an easy one. Yadnesh, so far looking pretty good in this over. Left arm round the wicket. This time improvising quite beautifully by Umesh by playing this reverse stroke. But protection has been given in the deep, in the third-man region. So batsmen have to settle for the single. The Umesh is off the mark and scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 2 wickets. What a fantastic cricket tournament is going on here. Under the great leadership of its President Jayachandra, and of course even better support coming from the Sports Secretary Ajit Kabikad, and with the support of all organizing committee members. Beautiful shot, beautiful. That was an imperious cover right there from Kiran off the back foot. Delightful stroke to finish the over number 3, then chasing 42 to win this match. Still Mundala Stars are searching for the right track. They're 12 for the loss of 2 wickets. That means still they have to get another 30 runs to win this match in remaining 5 overs. That means 30 balls remaining, 30 runs required, and asking run rate exactly 6 runs per over. I request fielding team a little bit make it fast. The time is exactly 6 past the 36:35 in the evening. It's the early sunset as far as the month of October, November is concerned. Till December it's a early sunset. And you can see that the lights are on. The dark taken place, but because of this fantastic floodlight, it looks like it was a fantastic scenario of this UCG cricket ground. Thanks to the organizer, Akila Bharata Mundala Yuva Vedike registered Mangalore. Once again, they're providing the opportunity, golden opportunity for the talents of their communities to come and perform in this most beautiful UCG cricket ground. After a lot of discussion, it looks like Raghu to continue, and Raghu doesn't want to keep his over for the slog overs. He wanted to complete because he's in a good rhythm. So I think being the captain of the side, and wait and see what he will going to do here. 4th over. Raghu. This time again, Kiran going for the big shot, missed it completely. Several times as Kiran trying for the big shot, but he's not really getting that much of success. And that's what's the big difference when you're playing under sunlight and when you're playing under floodlight. It's a total different. It's not that much of easy to hit some big strokes under floodlight.
Ball is not really coming to the bat. Sighting the ball is so important. You need to be need to have a good eye, and at the same time, lot of encouragement for the bowlers. Under floodlight, they will definitely going to dominate. So, first ball missed out by Kiran, and one fielder now is going back to deep mid wicket and deep long on. The two fielders in the deep in the one at deep backward square leg in front of behind the square. One at deep long on deep extra cover. Nicely driven down to mid on, off stop by the short mid wicket fielder. He's got a hand onto that, but not quite able to stops the single from Kiran. With that single scoreboard numbers on to 13 for the loss of 2 wicket. Very slow progress here for Mundala Stars, but nothing much worried about the required run that I just mentioned about before the start of this over. The required run rate is 6 runs per over. Now just 1 run in 2 deliveries bowled by Raghu. Umesh back on strike. Nicely looking around the field now and get ready to face the bowling of Raghu. Lovely shot, improvising that one quite beautifully down to the deep fine leg region. There is a fielder in the short fine leg region. Yajnesh is a very quick fielder, running back very quickly, and is stopping certain boundary for his team. Yajnesh is a very good athletic fielder for the side. He's just chasing the ball quickly towards his back. Moving towards his back and stopping some runs for his team. Couple of runs here for Umesh. Now it's a ball to ball. 15 for the loss of 2 wicket. 27 more runs required for the victory in the remaining 27 deliveries. Again, he wanted to sweep that one. This time he's not having that much of enough bat, but he's got a bat. That's very important to pick the single here. And a good response coming from Kiran in other end to respond that quick single. With that single scoreboard moves on to 16 for the loss of 2 wicket. 4 deliveries bowled by Raghu, and they picked up 4 runs, and they're going as for the required run rate. It's going to be anybody's game. It's going to be anybody's game. Both the teams has got opportunity to win the match. Again, Kiran, sensible batting, pushing the ball right in the gap. They're pushing hard for the first so that they can convert that single into 2. But here is the fielders of Royal Army. They're running like army towards the ball and denying second from these 2 batsmen. So one more addition. Scoreboard moves on to 17 on the board for the loss of 2 wickets. So equal battle is on here for the place in the final of this prestigious Mundala Premier League 2022. Now Raghu wanted to keep one fielder in that fine leg region. Maybe they're changing the fielder. He wanted Yajnesh to stand in a short third man region. There was a huge gap. There is no protection has been given in the cover point. Now bit of fielder coming to the short extra cover. There is no fielder in the deep long off. Quite interesting field set. And very interesting field set to see that there is no long off. There is a deep extra cover. There is a short extra cover. And one fielder going back the deep backward point. And that's only because of Umesh is a very good in playing a reverse stroke. One at deep backward square leg. It is in front of square. One at deep mid wicket and one at deep long on. And one at short mid wicket. Very, very interesting field set. Raghu with a short run up. Searching for the wicket. Searching for the dotted delivery. Delivers. Reverse sweep comes into play right in the gap. But protection, just like I'm mentioning about, the protection has been given in the deep. So Umesh have to settle for the single. So completion of over number 4. Chasing 42 to win this match. To get the place in the final of his MPL. And 18 for the loss of 2 wickets. Now 4 overs remaining. Out of 4 overs, they have to get another 24 runs in 24 deliveries. And Gopi, certainly we are talking about under floodlight game. Once it looks like the 42 definitely is going to be an easy target to chase down. But just like we are mentioning about, it's not that much of easy when you're playing under floodlight. And so far, I think first of 4 overs, which belongs to the Royal Army, they really perform like an army. But stars, they need to shine, isn't it? Stars are need to shine. But equal battle is on. It's going to be anybody's game because 24 deliveries remaining and 24 runs required for the victory. That means the match is evenly poised.
एग्जैक्टली सतीश, द मैच इज नाउ इवनली पॉइज्ड। और जहां तक सवाल है 24 गेंदों में 24 रन बनाने हैं, और जब 41 रनों पर उनकी पारी सिमट गई थी रॉयल आर्मी की, तब ऐसा लग रहा था स्टार्स के लिए यह लक्ष्य आसान हो सकता है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब मैच को बराबरी पर लाकर वो रोक चुके हैं। पहले 4 ओवर में सिर्फ 18 रन उन्होंने प्रदान किए हैं, दो विकेटें भी प्राप्त करने में सफल, और मैच अभी अब ऐसा कहना पड़ेगा जैसा कि आपने कहा, इट कुड बी एनीबडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और अंडर फ्लड लाइट्स आमतौर पर इस उर्वा क्रिकेट मैदान यूसीजी पर देखा गया है, अंडर फ्लड लाइट्स बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता है, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आती है, रुक कर आती है, और स्ट्रोक्स खेलने में कुछ हद तक दिक्कतें बल्लेबाजों को महसूस होते हैं। सब उदाहरणों में नहीं, लेकिन कई उदाहरणों में देखा गया है कि गेंदबाज डोमिनेट कर चुके हैं यहाँ पर अंडर फ्लड लाइट उर्वा क्रिकेट मैदान के इतिहास में कई श्रृंखलाओं में। और यहाँ पर देखना है कि 4 ओवर में 24 रन चाहिए, 24 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज। अब मैच बराबरी पर आकर रुक चुका और एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो गेंदबाज लतीश का आगमन इस वक्त होता हुआ, स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए उमेश, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त, लेकिन बैकवर्ड थर्ड मैन पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। और निस्संदेह एक बेहतरीन माहौल यहां पर छा चुका है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, त्योहार का माहौल यहां पर छा चुका है इस बेहतरीन शानदार फैंटास्टिक क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत एमपीएल 2022 मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है अखिल भारत मुंडाला युवा वेदी के रजिस्टर्ड मैंगलोर ने। और उनके पहले वर्षगांठ पर यह श्रृंखला प्रगति करती हुई, ये गेंद बेहतर स्ट्रोक नहीं, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा। शॉर्ट मिड विकेट फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकली, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा। और जैसा कि संगठक ने कहा था और मेरे काबिल दोस्त सतीश और मैंने फरमाया था, इस सेमीफाइनल मैच के पश्चात मेगा फाइनल मैच में सिल्वर कॉइन जो कि चांदी का सिक्का यहां पर टॉस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके एक पहलू में संविधान शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर का चित्र होगा। और इस बार गेंद पैरों पर टकराई, लेकिन मैं समझता हूं आई थिंक इट्स गॉट अ बैड ऑन दैट एट द लास्ट मिनट, इट्स गॉट अ इनसाइड एज ऑन दैट। 1 रन का इजाफा तो उस चांदी के सिक्के के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो संविधान शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक पहलू पर चित्र होगा, और दूसरे पहलू पर दिवंगत श्रीमान कुतमुल रंगाराव इनका चित्र होगा। तो एक बेहतरीन यहाँ पर काम इस वक्त किया है। इन सिक्के के 2 पहलू पर दो समाज सुधारक महान पुरुषों के चित्र छापकर उनको पूरी तरह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस श्रृंखला के संगठकों ने एक बेहतरीन काम यहाँ पर किया है। अखिल भारत मुंडाला युवा वेदी के रजिस्टर्ड मैंगलोर ने, और वो श्रृंखला वो सिक्का चांदी के सिक्के का प्रयोग टॉस के दौरान किया जाएगा इस मैच के बाद इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मैच में। और यहाँ पर ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन सीधे गेंद पहुंचे पॉइंट पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच गॉन इन वेन। इनफैक्ट इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी गॉन इन वेन। और गेंद इस वक्त सीधे पहुंची थी, लेकिन अंतिम क्षण में अपने दोनों हाथों में गेंद को दबोच नहीं पाए, और बल्लेबाज यहां पर बाल बचते हुए। और कैचेस विन मैचेस जो कि क्रिकेट में एक स्लोगन है, कहावत है, और यहाँ पर कैच छोड़ चुके हैं। और देखना यह है कि ये कैच जो छूटा है फील्डर के हाथों से, वो उनके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। तो जीवदान प्राप्त करने वाले बल्लेबाज किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, उनका विकेट गिरते गिरते बच चुका है। लतीश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार लतीश, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए किरण, और फील्डिंग में जमावट करते हुए, और फील्डिंग में अभी भी जमावट वो कर रहे हैं। दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है, और यह बात दर्शाता है कि अंडराम क्रिकेट इस लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट काशी उर्वा क्रिकेट मैदान पर कितनी जनप्रियता रखता है। और यहाँ पर गेंदबाज लतीश की ओर की अगली गेंद दाहिना तो ऊपर, that is an absolutely beauty, extra quicker, and he's got the lead of the batsman.
दिस इज एन अनप्लेबल डिलीवरी। क्यों सतीश? और पलक झपकने में गेंद सीधे टिप्पा खाने के बाद इतनी तेजी के साथ अंदर क्यों आई कि बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। और निस्संदेह कहना पड़ेगा ये एक अनप्लेबल डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर। और इस अनप्लेबल डिलीवरी की बदौलत, अनप्लेबल गेंद की बदौलत वो इस वक्त ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं पूरे हक के साथ। Absolutely, Gopi. It's unplayable and it's a pitch of the delivery. One must say, pitch of the delivery, and just not only just maintain the line and then Gopi, the sharp incoming delivery. No chance at all for the batsman to survive, isn't it? Because when you are pitching the ball in that good length spot, Gopi, because Latish is a kind of bowler who bowl both in and outgoing delivery. When you're pitching the ball in the right spot, the batsman is in two mind whether you're going for away going delivery or incoming delivery. It's too late for the batsman to judge. Before he judging that ball by going back, that ball is did the trick. Absolutely magnificent delivery. The pitch of the delivery, that is a japper. Absolutely japper from Latish. And because of that big wicket, Gopi, Kiran, I think is the captain of the side, is an icon player for the side of Mundala Stars. And now I think Royal Army looks like they're strongly back into this game. Absolutely, Satish. They are strongly back in the game. 5 overs completed, 21 for the loss of 3 wicket. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोरबोर्ड का, तो स्कोरबोर्ड में इस वक्त स्कोरबोर्ड में इस वक्त ओवर्स होने चाहिए 5। तो जहां तक सवाल है रॉनसन, जो इस वक्त ओवर्स 5 होने चाहिए, तो 3 ओवर का खेल बाकी, तो 21 रन और बनाने हैं। और इस पहले 5 ओवर में मैं समझता हूं नहीं बल्कि यकीन के साथ कहूंगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है रॉयल आर्मी के गेंदबाजों ने। तो इस वक्त Looking very happy face. 21 to get, 18 balls remaining। और यहाँ पर नया ओवर हमसे दूर वाले छोर से शुरू होता हुआ दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का इस वक्त आनंद लेते हुए, मैच इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। और किशोर का आगमन यहां पर हो चुका है गेंदबाजी में। स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार उमेश टी। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। और कोई फील्डर इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर नहीं दिखाई देता हुआ, लेकिन यहां पर बैकवर्ड थर्डमैन को इस वक्त पीछे भेजा गया, डीप बैकवर्ड थर्डमैन पर। और 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद निकल चुकी है गली की दिशा में, 3 फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और जहां तक सवाल है बचे हुए रन का, तो 20 रन और बनाने हैं, 17 गेंदें अभी भी बाकी। रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर द बैट्समैन ऑफ मुंडाला स्टार्स। और यहां पर रनों के लिए काफी हद तक संघर्ष करते हुए अंडर फ्लड लाइट्स, जैसा कि मैंने और मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, अंडर फ्लड लाइट्स यहां पर रन बनाना उतना आसान नहीं है। और गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया था हल्के से पुश करते हुए, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। और जहां तक मुंडाला स्टार्स का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक पार्टनरशिप। हर गेंद पर उन्हें रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें हर गेंद पर रन बनाने हैं, और हर गेंद पर रन बनाने की वो पूरी कोशिश यहां पर करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। तो अगर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है तो गेंदबाजों को, रॉयल आर्मी के गेंदबाजों को इस डिपार्टमेंट, इस वाइड के डिपार्टमेंट पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। और इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहा, ऑफ साइड पर गेंद गई, ऑन साइड पर सिलिमिडॉन पर। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 25 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार किशोर की गेंद को हल्के से खूबसूरती के साथ निकाल दिया। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, दूसरा रन नहीं मिलेगा।
और आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और गेंदबाज किशोर की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में। 27 रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, करारे प्रहार लगाने की पूरी कोशिश करते हुए इस वक्त बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और किशोर अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चुके, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, अगर बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो वाइड के इस डिपार्टमेंट पर उन्हें नियंत्रण प्राप्त करना होगा। और यहां पर 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं, 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रा तोहफे के रूप में प्रदान कर चुके हैं सामने वाली टीम के लिए गेंदबाज किशोर। और एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 29 इस ओवर में रन्स बने 8, बेहतर ओवर रहा अगर रॉयल माफ कीजिए मुंडाला स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। अब 13 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी है 12। और सतीश, एक बेहतर ओवर साबित हुआ इस वक्त मुंडाला स्टार्स के बारे में। 8 रन यहां पर बने, 2 वाइड्स भी गेंदबाज ने फेंके थे। अब 12 गेंदों पर 13 रन बनाने हैं और मैं समझता हूं मैच अभी भी बराबरी पर यहां पर रुक चुका है। और जो ये ओवर शुरू होने जा रहा है, मेरे ख्याल से ये ओवर दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। Exactly, Gopi. You are mentioning about the previous over, the better over for Mundala Stars. They got some runs even from the extras as well, and because of they're just actually they played a mind game, isn't it? They're not only not after getting that 2 wides, they're not looking for any big shot. They rotate the strike so that they wanted to come very close to that target. That was a good strategy from these 2 batsmen, not losing a wicket. But Umesh, I think, is a key player, being the senior most player, experienced player for the side, and his appearance till the end of this match is so important for Mundala Stars if they wanted to win the match. At the same time, Gopi, if Royal Army, if they wanted to win this match, I think, just like you're mentioning about this particular over, it's so important for Royal Army. At least they wanted 1 wicket here. They need to break the partnership because these 2 batsmen looking so good, so composed, isn't it? They're not feeling any pressure at all. They're playing as per the condition required. Now, 13 to get from 12 balls. It's once again, this is going to be anybody's game. Exactly, Satish. There is no doubt about that. It's going to be anybody's game at this situation. 7th, second and the last over of this match is now going to begin. 13 to get from 12 deliveries. और गेंदबाज लतीश शुरू करते हुए, गेंदबाजी एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेटर लाइन। और गेंदबाज ने इस गेंद को इतनी तेजी के साथ फेंकी कि बल्लेबाज इस गेंद पर कुछ कर नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। अब 13 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 11। और लतीश एक बार फिर से तैयार, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को खेला, कवर पॉइंट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, निशाना नहीं टकराया, विकेट कीपर ने विकेट उठाए लेकिन गेंद से नहीं, अपने हाथ से। और इस बीच बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर वापिस। तो 2 गेंदे डॉट और यहां पर 13 रन चाहिए, 10 गेंदे। अब धीरे धीरे लतीश अपने गेंदबाजी पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए तो 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं। अब स्ट्रेट अवे सीधा दबाव, प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर, और देखना यह है कि अपने अगली गेंद पर वो किस तरीके की रणनीति बल्लेबाजी में अपनाते हैं। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लतीश, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। 13 to get from 10 balls. The pressure is now building up on both sides. और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, ओवर पिच गेंद थी, गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। और अब रन से चाहिए 12 और गेंदे बाकी है 9। 12 रन टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। दर्शक काफी उत्साह के साथ इस मैच का मुआयना यहां पर करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बार फिर से गेंदबाज लतीश की गेंद, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ नहीं, गेंद सीधे पहुंची है पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। उमेश रिवर्स शॉट उन्होंने खेलना चाहा था, लेग स्टंप पर
गेंद आई थी और कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और गेंद को खेला तो जरूर लेकिन प्लेसमेंट गलत था और पॉइंट पर फील्डर जो खड़े हुए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच उनके हाथों में पहुंची और यहां पर ये विकेट गिर चुका है। तो निस्संदेह सतीश इस ओवर में लतीश ने अपनी क्षमता काबिलियत एबिलिटी के अनुसार गेंदबाजी की है। Absolutely, but outstanding bowling and outstanding catching by the fielder. I think Kishore Parangipete, who is standing at backward point, it's not that much of easy catch, Gopi, because ball travels very quickly, isn't it? After he played that switch it, ball went very quickly to that fielder, and movement of that fielder is really very, very good to see. And he casts the ball. It's not easy under floodlight catching the ball as well. And I think all reward goes to the even for the fielder as well. And right, Gopi, Latish is really giving one more damage here, just like what he did in the previous over. He picked up a very valuable wicket of Kiran, and once again he is giving some damages here for Mundala Stars, and Royal Army, they're really once again strongly back into this game. Exactly, Satish. अब एक बार फिर से लतीश तैयार, ये गेंद इस बार wow, inside it, dragged down to the stumps. One more wicket, and Latish is on fire. और इस बार गेंद लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाई थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहा था, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद जा टकराती हुई गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और यहां पर लतीश एक और विकेट प्राप्त कर चुके हैं। निस्संदेह एब्सोल्युटली टेरिफिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम लतीश, और लतीश की इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा रॉयल आर्मी एट दिस सिचुएशन दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप। 7 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए। 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटों को इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके हैं और निस्संदेह उनके कप्तान, उनके टीम के कप्तान उनसे प्रसन्न होंगे इन पहले 5 गेंदों में। लेकिन अंतिम गेंद अभी भी बाकी है और देखना है कि इस अंतिम गेंद पर वो क्या करते हैं। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तो तैयार, दाहिने हाथों ओवर द विकेट, ये गेंद इस पर बोल्ड आउट, ही इज गॉट द हैट्रिक, ही इज गॉट द हैट्रिक। एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी, फुल टॉस गेंद खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराई और हैट्रिक यहां पर प्राप्त कर चुके हैं लतीश। और यहां पर इस बेहतरीन ओवर की बदौलत अब सतीश मैं कहूंगा रॉयल आर्मी इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ। Absolutely, Gopi. It was the second hat-trick of the tournament, and the same the hat-trick which is taken in the same team. Yajnesh belongs to Royal Army. He picked up a first hat-trick in the day number 1, and now in the semi-final, second semi-final, Latish is picked up hat-trick. What outstanding delivery, Gopi! The last one. It's extra quicker, and at the same time, the look at the Yorker land delivery. It's not so easy to bowl in underarm cricket, that kind of quicker and Yorker land delivery. It was a consistency in his line, and it's so impressive indeed. And absolutely, he's deserved this hat-trick, way he bowled, way he handled the pressure. Not an easy condition, Gopi, when he came into ball, when it's 13 runs required from 12 balls. Umesh is there in the middle. Looks like the match is slowly slipping out of the hands, but he's just taking a match completely away from their opposition now. बिल्कुल सतीश, लतीश के गेंदबाजी पर आने से पहले 12 गेंदों पर 13 रन बनाने थे और यहां पर उनके ओवर के समाप्त होने के बाद अब बनाने हैं 12 रन, जबकि सिर्फ 6 गेंदें बाकी है। और लतीश का स्पेल मैं देखना चाहूंगा। 2 overs no maiden, he conceded just 4 runs and captured 4 wickets। और 8 ओवर के फॉर्मेट में निस्संदेह यह एक घातक गेंदबाजी कहलाएगी, क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. And one more news here is that the Latish is brother of Kiran, the captain of their opposition. It's 2 brothers playing against each other, and what an outstanding spell here by Latish. Absolutely, and so suddenly the big teams definitely will going to have one eye onto this bowler Latish. बिल्कुल, हर एक टीम लतीश जैसे गेंदबाज को पाना चाहेगी और यहां पर देखते हैं अंतिम ओवर में क्या होता है। बेहतर 1 more wicket fallen, धीमी ऑफ कटर गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा। he just played that one too early, he just wanted to play that one too early in fact, and the ball came quite lately because of that, no contact between the bat and ball, and the ball stuck to his mid leg stump। 1 more wicket fallen, wicket number 7। और यहां पर मंडाला स्टार्स की पारी यहां पर लड़खड़ाती दिखाई देती है। अब सतीश मैं कहूंगा यहां पर
चौके या छक्के ही मुंडाला स्टार्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं इस अंतिम ओवर में. Exactly, Gopi. The situation here is a do-or-die situation. The problem here for Mundala Stars is that not a question of getting 12 runs in 5 balls, but question raising here is every time when new batsman coming to bat, it's not an easy condition to play under floodlight and against the turning quality bowling department of Royal Army. But cricket, Gopi, everybody knows that cricket is game of glorious uncertainty. You cannot predict the cricket matches. One big hit will going to change the complexion of the match. बिल्कुल सतीश, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. अभी भी मौका जरूर है स्टार्स को इस मैच में बाउंस बैक करने के. एक चौका या छक्का उन्हें इस मैच में वापस ला सकता है. देखते हैं क्या होता है. अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार उछाला गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में. फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. एक रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. दूसरा रन पूर्ण कर चुके यहाँ पर. 32 नाउ, 10 to get from 4 deliveries. गेंद को इस वक्त उछाला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और गेंद तक पहुंचने की जीत और कोशिश वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर ने की थी, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंच नहीं पाए. एक टिप्पा खाने के बाद अपने ऊपर की ओर छलांग लगाने के बाद जब तक वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था कि वो दूसरा रन पूर्ण कर सके और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. 4 balls remaining, 10 runs to score, 9 for tie. 3 wickets they got in their hand. The pressure is now building up on both sides. और गेंदबाज किशोर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है. लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. क्लीन कलेक्शन. दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, नहीं मिलेगा. रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. विकेट यहां पर गिर चुका है. जोखिम भरा दूसरा रन प्राप्त करने का प्रयास किया था, नहीं मिल पाया. स्वस्थान पर वापस लौटना चाहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने क्रीज पर वापस लौटे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ लॉन्ग ऑन फील्डर का, जो कि काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने थ्रो की थी स्ट्राइकर हेड पर और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करते तेजी के साथ विकेट चटका दिए और यहां पर 8वां विकेट गिर चुका है. 33 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. 9 to get. 3 balls remaining, 8 for tie. चौके या छक्के ही अब मुंडाला स्टार्स के सितारे को चमका सकते हैं और देखना यह है कि नंबर 10 बल्लेबाज का जो आगमन हुआ है वो अपनी टीम की नैया को सही तट तक पहुंचा पाते हैं या नहीं. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि अपील होती हुई एक और विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 9 डाउन. प्लम इन फ्रंट घोषित. बैक लेग पर गेंद लग रहा है और 9वां विकेट यहां पर गिर चुका है. अब 2 गेंदें बाकी, 9 रन चाहिए. 6 and almost a boundary required in the last 2 deliveries. और अंतिम विकेट यहां पर मौजूद. और सतीश, यह अंतिम अवकाश है इस वक्त बल्लेबाजों के लिए. Last opportunity, Gopi, but you are expecting too much. 6 and 4 boundaries in last 2 deliveries. But just looking at the day number 2 final day, there is not that much of boundaries and sixes, isn't it? Only 1 or 2 sixes and the few boundaries, isn't it? Considering all this fact, Royal Army looks like they are not only in the driver's seat, but 99.9% the game in the hands of Royal Army. But 2 big shots, which is badly required. Do or die situation here for Royal Army, and wait and see how the number 11 will going to produce that big shot. Exactly सतीश. इस गेंद पर अगर छक्का या चौका लग सकता है तो कुछ हद तक रोमांच और बढ़ सकता है. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद उछालना चाहा, स्टंप्ड आउट. दैट्स इट. तो इस तरह से रॉयल आर्मी आर थ्रू टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, डिफीटिंग Mundala Stars by 8 runs in a thrilling victory. They registered a thrilling victory and they will face Mundala Strikers in the grand finale of this competition. So MPL 2022 grand finale mega final will be played within a just short while right after the short break between Mundala Strikers versus Mundala Royal Army, and we'll be back right after the short break with my friend Mr. Satish in English when the grand finale of this tournament will commence within a just short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಪಟುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೇದಿಕೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೋರಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜಯವಾಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರಿಗೂ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅರುಣನ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇದರ ಮಾಲಕಿಯಾದಂತಹ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶಶಿರೇಖಾ ಪತ್ನಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀ ಎತ್ತರಾಗಿ ನೀ ಬಿಲ್ಲ ಕೊಡು ನೀ ಎತ್ತರಾಗಿ ನಾಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ BG ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ BG ಸುವರ್ಣ. ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ BG ಸುವರ್ಣರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ ದಿನದ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ. Mic testing 1 2 3. Hello, check. Mic testing 1 2 3. Check. Hello. Hello.
ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಾಲ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆಟ ಆಡುವವರು ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಕು. I request all cricket lovers, please clear out the ground, and at the same time I request 2 teams captain, please get ready for the toss of the mega final of this prestigious Mundala Premier League 2022. At the same time I request 2 umpires, please be ready for the tossing ceremony. We'll have a tossing ceremony. The very special attraction of this tossing ceremony of the big final, there will be a coin which is it's a silver coin, and the both faces of that coin having respected the architect of Indian constituency, Dr. B.R. Ambedkar, as well as the greatest social reformer, Kudmal Rangarao. Instead of heads and tails, they have to tell the name of these 2 stars of India. I requested 2 umpires, please report here. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ.
So once again, welcome back for the prestigious Mundala Premier League 2022. All set now for the big moment of this cricket tournament. And after that successful day number 1 of this cricket tournament, the last Sunday, and almost the successful day number 2 as well, Gopi. It's only one match which is remaining. And I think one of the best tournament as far as UCG cricket ground is concerned, this MPL. Mundala Premier League, which is proudly organized by Akhila Bharata Mundala Yuva Vedike registered Mangalore. An outstanding job in this tournament. So far, there is a lot of entertainment, a lot of discipline as well from the players, and more than anything else, you are finding some fantastic talents from the community, Mundala community, and I think all marks goes to the Akhila Bharata Mundala Yuva Vedike registered Mangalore, so organizing such a wonderful cricket tournament. The season 1 almost it's going to be a very successful cricket tournament. बिल्कुल सतीश, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, एब्सोल्युटली वंडरफुल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय Akhila Bharata Mundala Yuva Vedike registered Bangalore in the celebration of their first year. And this is an outstanding festival atmosphere in this ground. And this is an absolutely fantastic tournament. The climax of this tournament is now going to begin. The toss ceremony will be held with a silver coin with both the finals captains. And let's see who will be won the toss and what the decision will take by the captain of winning the toss. So this everything set for the toss ceremony, and Mr. Satish, please continue the procedure of toss ceremony. Thank you, Gopi. So we are waiting for umpire Roland Pinto, and he will definitely going to be the officials for the finals, along with Sriraj, I think so, the 2 officials for the big final. Altogether, we are waiting for 2 captains, 2 teams which came into the big final, Royal Army, and certainly just like the name what they got, Gopi Army, they really played like an army. And it's not an easy job because all 8 teams, we can see that the 8 teams is a very balanced team, and we are enjoying all matches, the league matches and knockout matches, and all we can see that's Royal Army. They came into the big final. They deserve this place in the big final. At the same time, I would like to congratulate another team which came into the big final. It's none other than Mundala Strikers, and they're really striking from the beginning itself in this league matches. They're really just in a bust matches, looks like they're the one, they got an opportunity to grab the place in the final, and they're not disappointed. And congratulations for both the teams. First of all, I would like to congratulate the owner of these 2 teams, the owner of Mundala Strikers, Sampath Oige Bazar, as well as Roshan Tokur. A big round of applause here for the 2 owner of Mundala Strikers, because they are the one, of course, Gopi, it is behind the screen. We never see the owners, we only see the players, but the owners, they're the one, they're picking off the good players. Picking up the good players just like you are picking off the diamonds. And they're the one, they're choosing the right players for the team. And I think they're the one, definitely one of the happiest owner seeing that their team in the final. Of course, congratulations for the captain, because captain is the one is responsible. They're the one, they're shining that diamond, isn't it? They're picking the diamonds, and the captain one who is just making that diamond very shiny part, because the captain is one who knows the strength and weakness of the players, and beyond that, they're taking the responsibility of taking their team into the finals. So congratulations, Pratap, taking your team into the final. Great leadership, and congratulations. And now coming back to the Royal Army, the owner of Royal Army, Nitin Urwa and Tarnath Urwa. And a big round of applause again for 2 owner of Mundala Royal Army. Again, absolutely they are the very, very happiest owner seeing that their team in the final of this prestigious CMPL. And once again, congratulations for the captain, Raghu Attawar. He is representing one of the biggest team in South Kendall district, just like
Pratap is representing Sneha Malamar, and just like Raghu is representing Kadri, KCCR Kadri, and they deserve this place in the big final. And congratulations, and big round of applause here for Royal Army as well. Now all set now here for the big movement. We are having here one of the most experienced umpire. More than 37 years of experience in the field of cricket. 38. It's a 38th year now. The 38 is unbelievable. He started his career in 1987, October 10 at Nehru Maidan, and 1984, and after that he is unstoppable. And 37 years of experience, always going to be biggest. 38 years, always biggest achievement for any umpire. So big round of applause here for umpire Roland Pinto. Along with him, we are having Sriraj, one more fantastic umpire. So more than 10 years of experience. He's been outstanding in his job. And big round of applause here for Sriraj as well. And along with two umpires, Arish Padil is there in pavilion, and he's taking a rest. He's also got more than 27 years of experience as umpire. So thank you very much, the organizer, for this opportunity, for officials, not only for the umpires, because we are thankful and grateful for this wonderful opportunity, being the part of this successful cricket tournament. Thank you very much. So just like I mentioned earlier, this is the speciality of this big final is tossing the coin. It's not a normal coin, but it's a silver coin. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್. ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಸಿನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ head or tails, but they have to tell the name of Dr. Ambedkar or it's Kudmal Rangarao. So once again I request the two teams captain, please get ready. Before that, warm welcome for Sachin Kamath as well. He is the one behind the screen because it's a very toughest job being the scorer of this wonderful cricket tournament. So far he did a great job. Warm welcome for Sachin Kamath for this big final. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಘು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು. ರಘು ಇರು ಫೈನಲ್ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಇರಗೆ ಎಂಚಾತನೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮೊಕಲ್ ಮಂತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ MPL ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಬಂದಿರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ಲ ವಿನ್ ಆವಡು ಅಂಚ ವಿನ್ ಆಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇರೆಗ್ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿನ್ ಆಪ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಏರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ರಘು ಇರ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ತೂತಾರ, ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತಾರ, ನಿಕ್ಕಲು ವಿನ್ ಆವಡಾಂಡ ಏರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರ? ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಏರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಕಲೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತಿದೆ ಮನ್ಪ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವರು ಅಡ್ಡೆ ಎಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಗೊಬ್ಬರು ಹಾಕಲೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಟನ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದ ಈರೆಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಅಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಾಪ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಮಂತಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ Raghu. His opinion is this: he wanted to win the match and he wanted to target some of the top players of their opposition. Let's come back to the captain of strikers, ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಬೈದಾರೆ ಆರ್ ಅಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪ ಪಂದದ ಇರಗೆ ಎನ್ನದಿತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಪತಂದ ಐದು ದುಂಬು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಟುಂದು ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಜಿಜಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಬರೋಣ ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಟ್ಟಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ MPL. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಾರು ಫೈನಲ್ ನಿಖಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಘು ಪಂಡೇರ್ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ವಿನ್ ಆಗೋದುಂಡಲ್ಲ ಇರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆವಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅಂದ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಲೀಕ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಗೊಪ್ಪ ಆತೆ So they wanted to continue the same rhythm what they kept in till the semi-final. That's same rhythm, same strategies, same statics they will go to implement in the big final. Congratulations and all the best, Pratap, for the big final. That's it. The two opinions from two captains about the big final. Now it's a time for. I request two owners, the owners of both the teams, please. Yes, we have owner. ರೋಷನ್ ತೋಕೂರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮು ಫೈನಲ್ ಬೈದಂಡ ಇರಾಗೆ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. Okay. He's got a lot of faith in his captain. We absolutely need to be because the captain is the one is leading from the front and he is not disappointing your expectation, isn't it? So far he done a great job leading from the front, performed from the bat and ball and he takes your team into the final. Final dada panandallare encha win apna onji potential unda irna team gu. Potential undu. I would like to give a good luck for both the teams and when the best team wins the match, that's it. This is a really a true word. The best team always wins. That was a right opinion there from the owner of Mundala Strikers, Roshan Toko. Now coming back to the owner of Mundala Royal Army, we have Nitin. Yes, Nitin. Irege encha avundu ee tournament vishayada. Tournament encha atande baka irege irna team final baidanda enchina feel avundu. First of all, I would like to thank Mundala Cricket for organizing Mundala Premier League, the first ever Mundala Premier League. It's not a cricket, it's a festival. It's a festival for our community in Urwa ground. Lot of players are there in our community playing top teams in our districts. So it is a good platform to perform to see all the players and to see it is a enjoyment to the spectators to see to their performance in one stage. First, and thanks Jaya, Ajit, and all the members who are systematically organized tournament. I wish this will be continuing in the coming years, and let's the good cricket to be win. Let's to be unite in the name of cricket. Thank you. Fantastic round of applause here for owner of Mundala Royal Army, Nitin. Thank you very much. Rightly said, because this is a perfect platform from Akhila Bharata Mundala Yovedike registered Mangalore to get some talents in this big MPL. And season 1 almost is successful because of all the support from 8 teams as well as the donors. They are the backbone of this cricket tournament. And a big round of applause which is required for the president of Akhila Bharata Mundala Yovedike registered Mr. Jaya Chandra, as well as Sports Secretary Ajit Kapigad. Thank you very much. And General Secretary Mr. Pratap Kadri as well. So thank you very much for this wonderful opportunity for all the players to come and perform in this most beautiful MPL. So now it's a time for the toss. I request two captains please come forward. In the pitch, I think it's in the middle of the pitch, the better to have the toss. Just like I mentioned earlier, this is not a heads and tails, but it's Dr. B.R. Ambedkar at one face of the coin, another face, the social reformer, Kudmal Rangarao. And yes, we want to see which captain will going to be the luckiest one to win this silver coin.
What a greatest moment of this cricket tournament. It was unbelievable because even organizer never thought about this cricket tournament under floodlight. And once again they are giving the opportunity for the players to perform under floodlights. And it was a festival atmosphere out here. And now umpire Roland Pinto explaining about the toss to captains. Pratap, captain of strikers. Raghu, captain of Mundala Royal Army. Yes. Pratap will going to toss the coin. And Raghu will going to tell whether it was a Dr. B.R. Ambedkar or it's a Kudmal Rangarao. Your call. Your call. Dr. B.R. Ambedkar is a call and it's no, it's a Kudmal Rangarao. That means Pratap won the silver coin. Congratulations for Pratap won the toss. And Pratap, what will going to decide after winning the toss? Field first. Special reason, toss winner throughout tournament. Muji toss win. Muji winner that. Fielding etondini. So this is a big reason behind, isn't it? All three matches you won the toss, you elected field first, you won the match. Yes? So it under floodlight. Under floodlight irage enja strategy workout ava ejja. Ava ejja ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 35 ತೋಲ ಇಂತೆ ಹೊಂತಾಡು ಅಂದು ಆಜು ಹೊರತ್ತು ಎನ್ಮವರು ಅವ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಕ Nikhil at bowling the department at believeness isn't it? Need 35 unta orban. All the best. 35 to 1 unta jerda. Nalparda mittu po erda. At depuna capacity unda Nikhil batting. Yes, undu. That is the confidence of captain is always required, isn't it? So all the best, Pratap. You won the toss. Congratulations on the silver coin as well. Raghu, not a disappointment. You lost the toss. Batting the kondondo. Toss loss anala malleje match win avada ade correct 35 ku unta undu pandulleru ee rate run paadu pandullar టార్గెట్ బాల్ టు బాల్ ఉండు 48 balls 48 man podu panpina target undu ekkada panda ekkada untada 42 runs itta ave target onji aaj run jaasti ide unta bandu theire hope. Okay, so both the captains has got the strategy. All the best, Raghu. Nikhil's strategy workout out. Match winner, a true spirit of the cricket is which is required in the final. Spirited to go play because through the tournament, poor team like at spirited to go there, very disciplined to go there. Umpire's decisions respect kotar. How actually it's a tournament pidai battina bedde vishaya panda discipline. And continue on playing the final. So congratulations. That's it from the middle of the pitch after winning the toss. Captain of Mundala strikers, they elected to field first, and that means Mundala Royal Army, they are going to bat first. And Gopi, what do you think about that toss? Because quite a different condition, because under the floodlight is different, playing under the sunlight is different. Altogether, when the daylight, there are so many runs, but once the lights are on, I think the bowlers started to dominate. The batsmen started to find devils in the pitch because very difficult to face some turning deliveries. What do you think? What runs could be the good runs to depend for Royal Army in the final? जैसा कि आपने फरमाया सतीश 45 to 50 at batting first team have to score 45 to 50 in 8 overs if they have to restrict the opposition side if they and with the a good bowling right from the first ball of their innings. So I think 50 plus is a good score in this type of track. और आमतौर पर देखा गया है उर्वा क्रिकेट में यूसीसी का पिच जो कि आमतौर पर फ्लडलाइट जलने के बाद बल्लेबाजों के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा होती है स्ट्रोक्स खेलने में. गेंद बल्ले पर आसानी के साथ नहीं आती है. द बॉल इज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट इजीली. सो अंडर दिस कंडीशंस इज गोइंग टू बी पहली बल्लेबाजी टीम करने वाली टीम को 50 का आंकड़ा पार करना होगा. अगर एक बार if they crosses 50 mark it's going to be a competitive total. और कुछ भी हो in this grand finale of Mundala Premier League 2022, we are expecting some good battle in this grand finale. And I think
मैं समझता हूँ क्रिकेट का हर पहलू यहाँ पर हम देखने को मिलेगा. देखते हैं क्या होता है. And now straight away we are going to a commentator box with myself and you, and let me see what will happen in the grand finale of this competition. Well, Gopi, before going to the commentary box, here is some little bit entertainment, and if both the teams, the fielding teams, will go into having a grand entry into the ground. So that I request the fielding team, Mundala strikers, please get ready. 11 players. Definitely they will go. They will deserve this place in the big final, and definitely they deserve that grand entry into the ground before they play. Before they go into play a big final. Two opening batsmen, Royal Army. Opening batsman, please get ready. You are having a special entry to this cricket ground of this mega final of this prestigious Mundala Premier League 2022. Just like what we are watching in international cricket, just like what we are watching in IPL, Gopi, and nothing less than that, especially in this MPL, Mundala Premier League. I think it's definitely the organizers did a great job. It's a hard work is, of course, works out in this big tournament, MPL 2022. And now all set now for the big final. The two teams will go into, in fact, the 11 players, along with the two umpires, Roland Pinto and Shiraj, two very good umpires, did a great job for the success of this cricket tournament. And behind these two umpires, we are having the players of Mundala Strikers will going to have a grand entry for this mega final of this prestigious cricket tournament. Mattome, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. Mundala Strikers. We are having a two balls which is used for the big final. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ರೆಡಿ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬರಬೇಕು. Strikers, Mundala Strikers will go into enter here along with the umpires. So umpires taking the ball here of the big final, and Strikers, the captain of Strikers, Pratap, and behind him all we can see that the players of Mundala Strikers, they're the one responsible for the in the final. Now the opening batsmen of Royal Army, the two armies are walking towards the middle, and it is none other than the captain of the side, Raghu, along with him Yadnesh, one who has got a first hat-trick of this tournament. Now he came into middle to bat here. So all the best to both the teams. We are into the commentary box for the big final. Thank you.
So welcome back for the mega final of this prestigious MPL 2022 outstanding cricket tournament. And the last the 2 days of cricket, and today the day is a little bit extended towards the night under the floodlight, and we got opportunity to watch this big final, the mega final of this prestigious MPL 2022. Royal Army, the Mundala Royal Army, two batsmen out there in the middle, because their opposition captain Pratap, the captain of Mundala Strikers, winning the toss, elected to field first. And after winning the toss, they elected to field first. And he's just talking about his opinion about winning the toss strategy. And he just mentioned that he want to restrict their opposition team, Royal Army, under 35. Wait and see, will it go into walkout or not? And as far as Royal Army's captain Raghu is mentioned about after losing the toss, he just mentioning about that he wanted to get 45 plus runs. Once he able to get that 45 plus runs, definitely it's going to be a psychological advantage to depend that total. Under floodlight is always going to be a good score. He won 50, just like my friend Gopi is mentioning about 50 is definitely going to be a winning score in this condition. The wait and see the strategy, the game plan from both the teams to lift the prestigious title MPL 2022. So from the far end, so umpire Sriraj signaling towards our scorer. Ashwin will going to start the first over. First ball outside edge of the bat, they're going for the run. A little bit hesitation for the run. And I think the fielder in that gully region, little bit fumbled. Otherwise, the opportunity of run out, the created in that occasion, because Raghu actually there is going for the run, but his partner is not interested for that run. But once realized, Yadnesh once realized there is a fumble from that fielder, then he was responding for that run, and they completed easily in the end. So one without loss of any wicket here in over number first in progress. Coming back to the field set in the power play, and in that power play only two fielders allowed to stand outside the circle, and we can see one at deep mid wicket and one at deep backwards, deep long on, the two fielders outside the circle. The next delivery outside the line of off stamp, Raghu wanted to play that one across the line, maybe the intention to play that one down towards the mid wicket region, missed it completely. Ashwin, this time across the line, he's swinging that one down to deep mid wicket region before the fielder from deep long on run across. The batsman, both the batsmen run very quickly between the wicket to complete that couple of runs. This time Raghu has got the connection from the bat, neat connection. At the same time, good piece of fielding by the fielder at deep long on. Almost he was standing in a deep long on, but he has to cover the ground a little bit. This time slashes that one, beats the infield, but not having that much of enough timing in that stroke there for Raghu. So that the fielder from short extra cover quickly moving towards his back, running towards his back, and fields the ball and complete the single. So 4 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Yadnesh, left-hand batsman. This time chip that one over the top of infield again. They're running hard between the wicket, and a couple of runs again here for Yadnesh. This time Yadnesh chips the ball over the top of that extra cover fielder, and before the fielder from deep long off to cut it off, and the ample time for Yadnesh to complete that couple of runs. 6 without loss of any wicket. Beautifully bowled, absolutely perfect. There's a sharp incoming delivery for the left-hand batsman. Luckily that ball just misses the leg stump. And the first after completion of first over, and winning the toss, selected to field for strikers, and the bowler bowled very well first over. Ashwin bowled very well, just 6 runs. Decent start, steady start there from Royal Army. 6 without loss of any wicket. Six for the without loss of any wicket. The first over, it's a good run actually. Under this condition, you cannot underestimate that 6 runs.
because each and every run is so going to be very important. Just like Raghu is mentioning about each and every ball, if they're able to get the runs, they will going to get 42 runs. I think it's a very good strategy from captain of the side, but the implementation is so important. Performance is so important in the final. First ball of the second over. Right arm over the wicket delivers. Outside the line of leg stamp. Batsman going for the flick of that ball but missed it completely. Short fine like fielder fields the ball. There is no chance of any run. Suraj is the bowler. Is introduced by the captain of the side to bowl that power play over. Is very important. The power play over is always going to be very important for both the team. This time Raghu drives that one. This time right in the gap. They're running hard. Running between the wicket is so impressive between these two players. Opening batsman. It's good to see that they got a very good understanding between the wicket. That was really required, the communication and understanding as far as the running between the wicket is concerned. Both the batsmen has got no hesitation in the mind whenever they're converting single into two, twos into three. Now one more fielder is added in the onside region for Raghu. A very interesting field set. Now 5 men in the on, 4 in the off for Raghu. Down the leg stump. This time definitely it's going to be punishable from umpire, as umpire Roland Pinto seeing the line of that delivery which is going far away down the leg stump. White signal. It's a bonus run here for Royal Army. They're definitely going to enjoy these extra runs and extra deliveries. 9 without loss of any wicket. Suraj bowls again. Nice looking drive. Beats the infield. Long chase here for the fielder in the deep mid wicket to run across to his left to field the ball. Again Raghu getting the placement very well. Even both the batsmen realizing that getting boundaries and sixes very difficult. Then he was there placing the ball very well in the gaps, and they're running very well between the wicket as well. 11 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. Suraj. This time again Raghu drives it and powerfully down to deep mid wicket region. They're looking for the second. This time balls went straight away into the hands of deep mid wicket. That's why both the batsmen are not interested for the second run, and they settle for the single. So 12 on the board. It's a good going. It's a very good partnership is building up for Royal Army. Captain Raghu himself and Yagnesh, two icon player for the side of Royal Army. They're trying to build some partnership, and they wanted to lay the foundation. Again wide outside the run of off time. Big wide. Spectra wide. Second extra of that over. You are playing a big final. You are playing the big final. If you wanted to win this match, they need to restrict the extras. 13 without loss of any wicket. Suraj. Bowled him, clean him up. This is not a good shot selection there for Yagnesh. I don't know why. He's lost his patience because he's looking so good as far as rotating the strike is concerned. This time he's just looking for the big stroke. But at the last moment, that ball has got a little bit extra bounce when he was going for the drive. And it's a very, very important breakthrough here for Mundala strikers, as Suraj picked up a wicket here. 13 for the loss of 1 wicket, over number 2 in progress. A very important breakthrough because Yagnesh is the kind of batsman. He's always going to be very dangerous. The left and right combination always going to be a headache for the fielding team, because every time when strikes are rotated, they need to change the field set. The bowler has to bowl the different line for left and right the batsman. I think it's a big relief here for Pratap as well as for the bowlers, dismissing Yagnesh in this over. 13 runs partnership is just broken. Flicks it off his legs down to short fine leg division. They went very quickly for the single, and they managed to complete that single. 14 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. And Gopi's 14 for the loss of 2 wicket. Decent start, isn't it? 7 runs per over, and just like the strategy what Royal Army captain Raghu is mentioning about earlier when he's lost the toss and he told that rotation of strike. I want to get run in each and every ball, then my team will going to get 42 plus runs on the board. And as for his strategy, I think more than that, they got more than the ball, they got the runs. 14 in 2 overs. That means they got a very good start. बिल्कुल सतीश, रॉयल आर्मी के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद कहा था, जैसा कि आपने अभी फरमाया, 40 से 45 रन तक उसे ज़्यादा शायद भी बनाना होगा, तो कम से कम 40 से 45 रन बनाने के। तो यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत अपने
ऐसा कहना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन के अनुसार इस वक्त वो बल्लेबाजी करते हैं. 2 ओवर में 14 रन प्राप्त कर चुका है. हालांकि एक विकेट जरूर खो चुका है, लेकिन एक बेहतर शुरुआत वो कर चुके हैं. Absolutely, it's a very good start from Royal Arm, and even they lost the wicket of Yadnesh. But here is the captain, as a man who's really got a fantastic tournament from the ball and bat. Pratap himself, being the captain of the side, is quickly realizing that after that power play, he just wanted to bowl some good over. And first ball, he just defeated the bat of Kishore Suttarpete. And there's no possibility of any run. Score stationed at 14 for the loss of 1 wicket here in over number 3 in progress. It's a very good crowd, we can see there. Even it's night, the match is playing in under floodlight. We're having a good number of spectators enjoying the game of cricket. It's appeal for stump out. Now umpire just asking for the third umpire to see whether it's out or not out. Might be it is a close one. That's why umpire Roland Pinto wanted to see what could be the decision from the third umpire. And third umpire Arish Padil will go into decide whether it's out or not out. So very interesting to see that. And while the wicket keeper completes the job, and the third umpire have to see that where the foot of the batsman, will it going to be a landed, or it is in the air, or it is in the on the line. That what umpire Arish Padil want to see. If it is on the line, it's out, but some part of his shoe need to be inside the line. That's what the rules and regulation will going to tell. And it's definitely going to be a very close call for third umpire. That's why umpire Roland Pinto doesn't want to take any decision. Doesn't want to take any decision in that close appeal by the wicket keeper for the stump out. So what a fantastic tournament we are talking about, and the all efforts, definitely they're happy to see that this tournament is really running very successfully. And now decision coming from third umpire, it's out is the call from a third umpire. So that's end of Kishore's innings, and very good decision coming from umpire Arish Padil as the third umpire, and most experienced umpire, 27 years of experience. And now after looking close looking at the angles which is provided by the cameraman of Bedra Media, and once again special thanks to the cameraman of Bedra Media providing that all angles which is helpful for the third umpire to get the good decision. So after getting a good start here, looks like the wickets are tumbling here. And just like we were mentioning about Kiran being the captain of the side, he just got the wicket in the right time for his team. He just mentioned 35 runs he wanted to restrict their opposition, and is giving his 100%. Pratap balls, incoming delivery, sharp incoming delivery, negotiated very well by the batsman in the negation of the back foot. Rakshit picked up a single down to deep long on. So first run which is came from this over of Pratap. Scoreboard is 15 on the board for the loss of 2 wickets. Pratap again, right arm over the wicket, full toss delivery and reverse sweeping. That one ball is in there. Oh my goodness. This is a prize wicket here for Kiran. It's not a wicket taking delivery, but because of Raghu is implemented the wrong stroke for that full toss delivery, and he just pays the penalty for that. And look at the field set which is set by the captain for Raghu, and ball went straight to the hands of that fielder at deep cover point region. It's a really unusual dismissal here for Raghu, isn't it, Gopi? It's a full toss delivery, and if the batsman able to play that one orthodox slog sweep, he can hit the full toss delivery out of the park. But the fact that he tried to hit the reverse stroke for that full toss delivery, he didn't got enough bat onto that, and he just pays the penalty for that. And Pratap once again outstanding,
2 wickets straight away in his first over. बिल्कुल प्रताप अपने काबिलियत क्षमता के अनुसार गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, उस गेंद जो फुल टॉस गेंद थी उससे चाहे तो स्लॉक स्वीप खेलते तो शायद गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी ऑन साइड पर लॉन्ग लेग पर, लेकिन यहाँ पर रिवर्स शॉट उन्होंने खेला था और बैट के मिडल ऑफ द बैट नहीं करेक्ट हुआ और गेंद को लपक लिया गया वहाँ पर पॉइंट फील्डर द्वारा। तो बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए प्रताप यहाँ पर कर चुके हैं सतीश। Absolutely, because it need to be after conceding 14 runs in a 2 overs, that is a power play overs. Then Kiran wanted to restrict the runs, the flow of the runs of their opposition, and almost he succeeded. Put some break on run rate. 16 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Pratap right arm over the wicket delivers again. Lovely delivery to finish the over number 3 after completion of 3 overs. And Royal Army, actually, they got a very good start, but all in sudden, they lost 3 wickets. 16 for the loss of 3 wicket after completion of over number 3. So, Akhila Bharata Mundala Yuva Vedike registered Manglore, organizing such a fantastic cricket tournament, a state award winning organization, and the season 1 of this MPL, it's a successful cricket tournament, and after this big final, mega final, there will be a first match presentation ceremony in our the main stage, MPL VIP stand. We are having all dignitaries in the stage enjoying this big final. And with the presence of all dignitaries, there will be a prize distribution ceremony. And for that, we need to see which team will going to become the champion. And for that, we have to wait for another hour to judge who is going to be the winner of this tournament. Start of the over number 4, and straight away Kishore Parangipete, one more very good player, and he's up the mark with a single. And with the single score, numbers on to 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. One more left-hand bowler, Nagraj. So impressive to the tournament, Nagraj. He's not that much of reputation as a bowler, but in this tournament, I think he's done a great job. And just like what his captain is doing for his team, the same kind of contribution from Nagraj as well is backing up very well, because after that 2 power play overs, these 2 bowlers actually, they're responsible every time to bowl some economical overs, get some breakthrough from their excellent line and length. Nagraj, left-hand bowler, bowling left arm. Round the wicket, bowlers back dry, but lack of placement, straight to the hands of short mid-off. Little bit hesitation for the run. Yes and no's, because after the bowler misses the ball on his follow through, but the mid-off fielder is almost standing in the straight version, so that immediately is runs front and denying a single from these 2 batsmen. Oh, slower one, loud appeal for leg before wicket. And you can see that ball is got extra turn, isn't it? The slower one, whenever the bowler bowling a slower one, there was a little bit hint of that ball just going down the leg stump, and rightly so, umpire not interested. And again, Nagaraj bowling with a short run off. Left arm round the wicket. Delhi was beautiful incoming delivery. Equally well played there by Kishore. He cannot stop this man as far as the running between the wicket is concerned. He is a very, very busy customer in the middle. He is just posing his partner for the second run. He know exactly there is a possibility of second run immediately after he placing the ball down to mid wicket, and he got a couple of runs. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Fantastic cricket is going on here. The festival atmosphere out here in UCG cricket ground. The lots of Underarm cricket drives that beautifully there by Kishore. One of his favorite and signature strokes. He's so good in that particular cricketing stroke. And completion of over number 4. A little bit comeback over here of Royal Army. Completion of over number 4. It's 21 for the loss of 3 wicket. And half of the over completed, Gopi, in the innings. And now half of the over which is remaining. And half of the job which is remaining to you to take over the microphone. And 21 for the loss of 3 wicket, Gopi. Not that much of big
problem with the run rate, considering fact that it was a match playing under floodlight. And more than, I think it's a big final, mega final. It's a more pressure for both the teams because of this is a big final. They wanted to become winners. And 21 for the loss of 3 wickets. Little bit disappointed after getting 14 runs in 2 overs. Then I think strikers bounced back very well in 2 overs. 2 overs belongs to batting team and 2 overs which is belongs to fielding team. That means both the teams are battling hard for the victory. एग्जैक्टली सतीश, और पहली गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, रन से नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. द फर्स्ट ओवर्स कंप्लीट बिलोंग्स टू द बैटिंग टीम एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 2 ओवर्स कंप्लीट बिलोंग्स टू द बॉलिंग टीम. तो गेंद और बल्ले के बीच एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है और 21 रन इन हालातों में उतना खराब शुरुआत तो नहीं कहलाएगा. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजों का, तो स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने अपनी क्षमता के अनुसार पहले 4 ओवर्स में गेंदबाजी की है. खासकर प्रताप जो कि एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और पिछले ओवर में, अपने पहले ओवर में वो 2 विकेटें भी प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ पर पूरी तरह बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि बेहतर गेंद थी प्रताप की, मिड लेग स्टंप पर आती हुई, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और एक बार फिर से प्रताप गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला फील्डर पीछे, लेकिन काफी पीछे, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है. हालांकि गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर जो मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर वो काफी पीछे, और इससे पहले कि एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस वो गेंद को कलेक्ट करे. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. ग्रैंड फिनाले ऑफ MPL Mundala Premier League 2022 is now progressing here. The first session of mega final match is now going on here. इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंची मिड विकेट पर, पैरों के जरिए गेंद को रोकना चाहा, चूंकि बैकअप होता हुआ डीप मिड विकेट पर. जब तक गेंद को वहां पर बैकअप करके थ्रो करते हैं, नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 25 3 विकेट के नुकसान पर. 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज रक्षित और किशोर पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए अपनी टीम को एक सुस्थिति पर पहुंचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और प्रताप फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए क्विक पेस ऑफ कमेंट बाय बिहाइंड द स्टंप्स बाय विकेट कीपर, लेकिन मैं समझता बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति, एक और बेहतर ओवर प्रताप का समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए. प्रताप कंसीडर्ड जस्ट 4 runs in this over, and after 5 overs the batsmen of Royal Army still searching for the right track. 25 for the loss of 3 wicket. और 5 ओवर का खेल जो कि पूर्ण हो चुका है. 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और जहां तक मैंने और सतीश ने जिक्र किया था, कम से कम 50 के आंकड़े को तक पहुंचना होगा या फिर 50 के आंकड़े को पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है इन हालातों में. और उनके बल्लेबाज ये जानते हैं अंडर फ्लड लाइट्स इस वक्त बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है. गेंद आसानी के साथ बल्ले पर नहीं आती है, और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए वो इस वक्त गेंद की लाइन पर अपने नजरें गड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट नहीं, और की पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. मिड विकेट पर गेंद पहुंची. हाफ स्टॉप इस वक्त करते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा, काफी नजदीकी मामला, और इस बार इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. तो नजदीकी मामला हो सकता है. यहाँ पर जब विकेटें उखाड़े गए थे तब देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला बैट रख चुके हैं या नहीं. तो तृतीय अंपायर हरीश पटेल इस वक्त टीवी मॉनिटर पर यहाँ पर देखते हुए कमेंटेटर बॉक्स में, और देखते हैं वो क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर, और इस वक्त तृतीय अंपायर उस निर्धार का परिशीलन करते हुए. ही इज गॉन आउट इस वक्त घोषित. ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ द क्रीज व्हेन द विकेट्स आर डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द बॉलर. तो यहां पर 26 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है. 1 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. 1 विकेट का भी पतन यहां पर हो चुका है, और छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. तो जहां तक इस श्रृंखला के बारे में अगर कहा जाए तो निस्संदेह एक यादगार क्रिकेट श्रृंखला बनने की तरफ ये श्रृंखला इस वक्त बढ़ते हुए. MPL मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति की है अखिल भारत मुंडाला युवा वेदिका रजिस्टर्ड मंगलोर ने श्रीमान जयचंद्रा, जो कि
इस मुंडाला यूएई के रजिस्टर के अध्यक्ष है, उनके सारथ्य में ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती और इस बार गेंद को खेला था मिड विकेट पर, फीडर के हाथों से गेंद चूकी और इस बीच बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। सीधे गेंद पहुंची थी शॉट मिड विकेट फील्डर के हाथों में, लेकिन आखिरकार फील्डर गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाया और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। क्वाइट क्रिकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, खामोश क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर इस वक्त स्ट्राइकर्स के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी यहां पर करते हुए। फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है और यहां पर एक बेहतरीन फाइनल मैच खेला जाता हुआ। ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर दूसरा रन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन और इस बार मिसफीड होती हुई और इस बीच दूसरा रन बल्लेबाज को मिलेगा या नहीं देखना पड़ेगा। और एक बार फिर से इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर, दिस टाइम फ्रॉम अंपायर श्रीरज। तो डाइविंग लगाकर अपने विकेट को बचाने का प्रयास किया था अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने। और देखना यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो तृतीय अंपायर इस वक्त यहां पर परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। एंड इट्स गॉन, ही इज गॉन, वन मोर विकेट फॉलन इन द फेस ऑफ रन आउट। तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। डाइविंग लगाकर अपने विकेट बचाने का, क्रीज पर पहुंचने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अंतिम क्षण में क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार एक और विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ रॉयल आर्मी। तो 2 ओवर का खेल इस ओवर के बाद अभी भी बाकी, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है। कुछ हद तक बल्लेबाजी में तेजी लानी होगी इस वक्त बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो कम से कम 50 के आसपास अपनी टीम के स्कोर को उन्हें ले जाना होगा। और यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे अश्विन की गेंदों का। अश्विन दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बार इस मिसफील्ड के बदौलत बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि थ्रो पहुंचा था स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स, लेकिन और इस बार इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड टाइम अंपायर आस्किंग फॉर द थर्ड अंपायर। And Gopi, very interesting to see in this appeal, more than is appealing, forcing the umpire to give for the third umpire. And umpire Roland Pinto, yes man, why not? Yes, go for the third umpire. This is the 4th time. And all 3 times the decision which came in favor of fielding team. And wait and see, this is the 4th third umpire call from umpires. Will it going to be out or not out? Very interesting, and what a little bit comedy of error in this appeal, isn't it? बिल्कुल सतीश, गेंद सीधे पहुंची थी स्ट्राइट ओवर द स्टंप्स और गेंदबाज को कोई दिक्कत ही नहीं हुई वहां पर रनआउट यहां पर विकेट उखाड़ने में। लेकिन देखना यह है कि इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। फिलहाल तृतीय अंपायर, तीसरे अंपायर इस निर्धार का परिशीलन यहां पर करते हुए और इस बार बल्लेबाज बच चुके हैं। He is survived. और यहाँ पर हैट्रिक रनआउट होने से इस वक्त बच चुका है रॉयल आर्मी। तो उनके बल्लेबाज बच चुके हैं, रॉयल आर्मी के बल्लेबाज बच चुके हैं, वरना तीसरा रनआउट यहाँ पर हो सकता था। तो इस वक्त सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। और फिर से एक बार अश्विन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट पर, क्लीन कलेक्शन, एब्सोल्युटली गुड फील्डिंग। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अपनी दाईं ओर 1 से 2 कदम जरूर जाना पड़ा इस वक्त फील्डर को, लेकिन आखिरकार गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में सफल। उछाला लगोन की दिशा में, फील्डर नहीं, कैच छूट चुका है यहां पर और बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें कुछ हद तक उन्होंने हटा ली। हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और यहां पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त करते हुए। 6 ओवर की समाप्ति, 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। तो जहां तक सवाल है सतीश, जब माइक्रोफोन आपने मुझे सौंपा था तब स्कोर था 21 रन 4 ओवर के बाद, अब स्कोर है 31 6 ओवर के बाद, यानी 2 ओवर में 10 रन बने हैं। तो मैं समझता हूं अंतिम 2 ओवर में कम से कम उन्हें 15 से 20 रन बनाने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो
Exactly, Gopi. As for the strategy of the captain of Royal Army, they're mentioning about 45 they wanted to get, and rightly so. In the remaining 12 deliveries, they're able to get another 15 runs at least. It's going to be a 45. I think it's a very good score to depend in the big final in this condition. And wait to see how well these two batsmen will go into bat here, because getting even 12 runs also is not that much of easy, Gopi, under this condition. But just like you're mentioning about, they scored 10 runs in 12 balls in the previous 2 overs, and now they're looking for more runs in the remaining 2 overs. बिल्कुल और जिस तरीके से पिछले ओवर्स में रन्स बने उसे अंदाजा लगाया जा सकता है रन्स बनाना कुछ हद तक मुश्किल यहां पर बन चुका है बल्लेबाजों के लिए। नई ओवर की पहली गेंद रिवर्स स्वीप करना चाहा इस वक्त थोड़ी सी सफल होते हुए, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए मुंडाला स्ट्राइकर्स के गेंदबाज बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर मिसफील्ड, एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार कोई दिक्कत ही उन्हें महसूस नहीं हुई एक रन प्राप्त करने में। 32 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज सूरज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और रक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 33 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद दैट सिंगल इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस इन रॉयल आर्मी इनिंग्स। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज की गेंद, यह गेंद अच्छी गेंद थी, मिड लेग स्टंप पर आती हुई ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैर पर टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक स्वयं विकेट कीपर द्वारा फील्ड प्रताप द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सूरज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, लाइव कवरेज हम इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं बेद्रा मीडिया द्वारा जनाब इरफान इनके सारथ्य में। और यहाँ पर यह गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केम अलोंग द कार्पेट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। सूरज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया अपने दूसरे प्रयत्न में। और इस बीच वाइड का इशारा यहां पर हो चुका। 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह यहां पर सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हालांकि दर्शक लगभग इस मैदान पर भर चुके हैं। इस रात में भी रात के 8:30 बज चुके हैं। इट्स 8:30 PM एट नाइट। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत मेगा फाइनल मैच यहां पर खेला जाता है। और देखना यह है कि यहां पर MPL मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 का प्रतिष्ठित खिताब कौन सी टीम यहां पर अर्जित करेगी। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद सूरज, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त तैयार नहीं थे और आखिरकार इस गेंद को डेड घोषित किया गया। तो जहां तक सवाल है, बल्लेबाज ने इस वक्त स्ट्राइक लेने से अपने आप को रोक लिया था, गेंद को खेलने से अपने आप को रोक लिया था। वो जानते हैं कि अंपायर रोलैंड पीटर स्क्वायर लेग पर अपने स्वस्थान पर नहीं पहुंचे थे। और इस बीच अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद और वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी, तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में रन इस वक्त प्रदान करते हुए 36 रन बन चुके हैं। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। एक गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में और अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। और सूरज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त जो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए। और इस बीच लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा और लेग बाय की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर्स कंप्लीटेड, 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और कुल मिलाकर एक और बेहतर ओवर अगर उनकी पारी में देखा जाए समाप्त हो चुका है। 6 रन इस ओवर में बने और 2 वाइड फेंकने के बावजूद मैं समझता हूं इस ओवर में सूरज एम ने एक बेहतर गेंदबाजी की है। अंतिम ओवर का खेल बाकी, द लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। देखना यह कि इस बचे हुए लास्ट ओवर में, अंतिम ओवर में
रॉयल आर्मी के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। घने अंधेरे को चीरती हुई रोशनी इस मैदान पर गिरती हुई, फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान को इस वक्त जगमगाती हुई और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहां पर गुजरता हुआ। एमपीएल मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 के अंतर्गत 2022 के अंतर्गत गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से नया ओवर प्रारंभ करते हुए आखिरी ओवर शुरू होता हुआ रॉयल आर्मी की पारी में हितेश गेंदबाज और इस बीच तो यहां पर अंपायर गेंद की परीक्षा करते हुए शायद जमीन पर गेंद को घिसा था गेंदबाज ने, तो इस वजह से स्वेयर लेग अंपायर श्रीरज काफी चौकन्ने, उन्होंने तुरंत ये बात जो मेन अंपायर के तौर पर खड़े हुए श्रीमान रोलैंड पिंटो इनके ध्यान में लाए और इनके ध्यान में लाया था और यहां पर परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से अंपायर गेंद को लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, क्रीज के कोने से गेंद लेग स्टंप पर आती हुई शॉर्ट फाइनल लेग की दिशा में पहुंची, सिर्फ बाई, बिल्कुल सही निर्णय, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 8 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, नितेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद उनके हाथों से फिसल चुकी है, 1 रन मिलेगा। इस बीच वाइड का भी इशारा हो चुका है, 2 रन अपने पेस को वृद्धि करने का प्रयास इस वक्त किया था, तेजी लाने की कोशिश की थी गेंद में और गेंद को लेग स्टंप से बाहर की ओर फेंक दिया। 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रा तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ चुके हैं। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, पास्ड बिटवीन हिज लेग्स एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। अंपायर प्रताप ने विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। 4 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज नितेश इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार चिप किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर गेंद के नीचे आ चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा। जी हां, गेंद के नीचे आ चुके हैं और यहां पर ये विकेट गिर चुका है। उछाला था, थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद को उछाला जरूर, लेकिन आमतौर पर रात के वक्त यहाँ पर उर्वा क्रिकेट मैदान यूसीजी पर हवा का रुख काफी धीमा होता है। यहाँ पर गेंद को उछाला था लेकिन हवा का रुख काफी धीमा होने की वजह से गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में और आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लॉन्ग ऑन फील्डर ने लपका और 6वां विकेट गिर चुका है 40 रनों के ऊपर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, 8वां और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। नंबर 8 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर रॉयल आर्मी फेसिंग द राइट हैंडेड बॉलर और दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा और इस बार विकेट गिर चुका है, एक और विकेट क्रीज से काफी आगे निकल आए थे, 7वां विकेट गिर चुका है। इट्स 40 for 7 नाउ विद जस्ट अ कपल ऑफ बॉल्स नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो यहां पर 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज
इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। गेंदबाज की ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट मिसिंग द आउटसाइड द ऑफ स्टंप, स्लोअर लेग कटर फ्रॉम द बॉलर और गेंद पर करारा प्रहार करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और रन बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 40 रन। अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज इस वक्त तैयार नितेश, जबकि बल्लेबाज है यहाँ पर प्रदीप। उनकी पारी की अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और नितेश गेंदबाजी करते हुए इस वक्त प्रदीप के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। अंतिम एक गेंद बाकी है और यहाँ पर दिशाहीन गेंद फेंकी थी, 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर, 42 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट और अभी भी उनकी पारी में अंतिम गेंद बाकी है। तो देखना यह है कि इस गेंद को क्या वो सही तरीके से फेंकते हैं या नहीं। तो इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला है, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, ओ मिस फील्ड और गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर। 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, तीसरा रन मिलेगा, चौथा भी मिल सकता है या नहीं देखना पड़ेगा और चौथा यहां पर नहीं मिलेगा। 3 रन अंतिम गेंद पर बने और इन 3 रनों के साथ द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड एंड Royal Army finished with 45 for the loss of 7 wickets in the stipulated 8 overs and they set a victory target of 46 for Mundala striker to clinch the prestigious Mundala Premier League 2022 title. 46 they have to score and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 runs per over they have to score for victory to win the prestigious title of MPL 2022. 46th target, exactly 7.66 the required run rate for them. और सतीश यहाँ पर अंतिम ओवर बेहतर रहा, कुल मिलाकर इस अंतिम ओवर में रन्स बने 9 और अब 46 रन 50 के आंकड़े के आसपास पहुंचने के बारे में हमने जिक्र किया था। अब 50 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुका है और मैं समझता हूं जहां तक 46 रनों के अंदर अगर रोक कर रखना है तो यहां पर रॉयल आर्मी के गेंदबाजों को सतर्क गेंदबाजी करने के राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। और जहां तक मुंडाला स्ट्राइकर्स का सवाल है तो मैं कहूंगा 46 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस वक्त मुंडाला स्ट्राइकर्स को पॉजिटिव स्टार्ट, धनात्मक शुरुआत करनी होगी। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, मैं समझता हूं प्रताप की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है और प्रताप अगर एक और बेहतर पारी यहां पर खेलते हैं तो निस्संदेह मुंडाला स्ट्राइकर्स अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता। फिलहाल इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला का अंतिम सत्र, द लास्ट सेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट बहुत ही रोचक होगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ मैं माइक्रोफोन आपके हवाले सौंपता हूं। माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much. Welcome back again for the big final. Here is just like the earlier the innings of strikers is started. Now is a Royal Army entering into the ground, and they depending a good total 45, and along with the two umpires and they all fielders of Royal Army. They are march pasting just like armies, and they are march pasting towards ground and having some game plan of winning this match. But I think Raghu is a very happy captain. We can see that the very big smile in his face, just like what his game plan is talked about earlier. Even they lost the toss, he told that my team wanted to get 45 runs, 42 plus, and he got 3 extra runs. That means he got altogether 45 runs in stipulated 8 overs. And wait and see how well his team will going to defend his total. And coming back to the winning perspective for Mundala strikers is concerned, and Captain Pratap, when he won the toss, then he's decided to ball pass. Then he told that I want to restrict the opposition for just 35. Now question raising here, what he was expecting but not really happening. He got extra 10 runs to score, and I asked if it was more than 35, can your team able to get that 45? And he told that yes, my team has also got that much of a potential, the batting department, and wait and see how the batting, the weapons of strikers will going to implement the strategy of winning this big title, MPL 2022. It's a very good total, and the kind of total which is really required for the big final, mega final, the total score by Royal Army of 45 runs is a total score, 46 to win this match. To win this match means win this big title, MPL 2022. The opening batsman, left and right combination as always. Akshat is in strikers end. In the non-strikers end, Captain Pratap. And Yajnesh, as always, will go into start the proceedings. Very, very, very interesting contest here. Yajnesh so far has got outstanding tournament from the bat and ball. And he wanted to give a good start here for his team. At the same time, the both opening batsmen wanted to give start. First ball, tried to play that improvising stroke. Akshat wanted to get that one very fine towards the fine leg region. But this time ball just defeats his bat. Maybe is too much across the line of the delivery to get that down to fine leg region. But he missed the ball completely from the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Yajnesh, left arm. Over the wicket he delivers. This time again pedal that one. And pedal that down to fine leg region for a easy single. With that single scoreboard now scoreboard. Actually they started their journey. And wait and see how difficult this journey is for Mundala strikers. Now captain will going to take the strike. One without loss of any wicket. The man who got runs. The player who got the wicket in this tournament, and none other than captain of the side, Pratap. And wait and see how Pratap will go into anchor this innings. He is a key player. And coming back to the batting department, along with these two opening batsmen, Ashwin is one more player to be noticed in the big final, because all this batting strength depending upon these three opening front order batsmen. Oh, there's a big wide, absolutely big wide there from Vignesh. Umpire have to see where the ball is pitches. That ball pitched inside the line, so that is a wide. So wide call by umpire. If it is outside the pitch, the first bounce of the delivery outside the pitch, as for the rules and regulation of present cricket is concerned, it's going to be a no ball. But this time I think the ball just pitched inside the line of that pitch, so that wide call by umpire Roland Pinto rightly. So 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Yajnesh searching for the good line. Left arm around the wicket he delivers. This time went for the reverse sweep. Oh, where he is throwing the ball. It just looks like the ball is just slipping out of his hand. There is opportunity of second run, but Pratap too far across. Now umpires, umpire called it. It's a no ball.
No, it's just a single. Nothing has happened. A little bit confusion, but everything is okay here. 3 without loss of any wicket. 3 without loss of any wicket in the over number first in progress. Yadnesh. Changing the angle because the left-hand batsman is on strike. Over the wicket. Appeal for left wicket. Loud appeal for left wicket. Had the chance of run out in the non-strikers, and Yadnesh keep on appealing for leg before wicket, but there is an opportunity created for the run out if he is able to collect the throw. If he is come behind the stumps, then I think there is a golden opportunity of run out, and just missed that opportunity. And he's very confident, but I think he's bowling a little bit wide of the crease, and certainly ball just going to miss the leg stump. 4 without loss of any wicket in the over number first in progress. Ball to ball runs which is required. Left arm going for the reverse sweep, full toss delivery. Pratap is not impressed with himself. He know exactly got a very juicy full toss. If he got a little bit bat, he can get the boundary because it is a power play. There's no fielder in the deep in the third man. He's missed it completely from his bat, and there's no chance of any run. Going for the drive. Beautifully bowled there by Yadnesh. Good start here from Yadnesh. Completion of first over. Chasing 46 to win this match. Just 4 runs conceded. It's a good start there from Yadnesh. And just coming back to the equation now. I just like mentioned earlier, it's a ball-to-ball match. Now 7 overs remaining. That means 42 deliveries remaining. And they need to get another 42 runs to win this match. That means his asking run rate exactly 6 runs per over. The match is evenly poised. Lot of talents I observed in this particular tournament, MPL, in this Mundala community. Already there was so many players representing some reputed teams of in Underarm cricket. Reputed teams like Young Friends Urwa, Sneha Malemar, KCCR Kadri, Young Friends Urwa. But I think this tournament will going to give more players for Underarm cricket because lot of talents we can get in this particular tournament from this community. So once again, thanks to organizers, Mundala, Yovedike registered, done a great job so far in this tournament, providing opportunity for the youngsters to showcase their talent. Oh, that was a magnificent delivery, and not too far from that leg stump, not too far from that off stump of the batsman, mind you. Because batsman right across the line of delivery tried to swap that one. Luckily that ball just missed the off stump. Raghu, captain of the side, the man with the golden hand. You know exactly the kind of bowling required in the power play. This time top edge, just Kishore takes a catch. This is the wicket which is required for Royal Army. They're celebrating that wicket, why not? The captain producing a very important breakthrough. Batsman Akshat couldn't manage to control that reverse stroke. And he got a top edge and good catch taken there by Kishore. Just running back, kept the eye on the ball. And then he's not missing that golden opportunity to dismiss the wicket of Akshat. 4 for the loss of 1 wicket. A very important player walking towards the middle. Very important player. All we can see, the victory of strikers, it certainly depends upon these two pairs. These two pairs, I think they can win the match. If they bat for at least 4 hours, they can win the match, win the title. And at the same time, Royal Army, they knows that these two players, they wanted to get early if they wanted to win the match. So again, a little bit under pressure situation.
very talented, experienced campaigner. Ashwin Kumar came into middle here. And wait and see how these two experienced batsmen. One is representing HFC Oige Bazar as well as Mangala Devi cricketers. We are talking about Ashwin. And now in the other end, Pratap of Sneha Malamar. And both experienced players out there in the middle. But here, Raghu, the bowler, top edge, one-handed ticketing stroke, is placed it down to square leg region. Kishore is just chasing the ball, just like the cat chasing a mouse. And at last he's just winning the race against that ball. Just a couple of yards inside the boundary line, he managed to cut it off. And ample time here for Ashwin to get that couple of runs. Not really controlled that stroke, but I think it's a little bit useful stroke to play when you're playing in a power play overs. You can't take that kind of risk and to go for the slog sweep shot. Even the top edge will not going to get the fielder there. And with that couple of runs, the score started to move. Whenever Ashwin enters the ground, we can see that little bit complexion of the game is going to change. He's a busy customer. He's a very busy customer. He's never interested to play any dotted deliveries. He's a kind of batsman. He wanted to rotate the strike in each and every ball he faces. And Raghu realizing that, and he's just putting some extra strategy to get Ashwin's wicket. Raghu, right arm, bowls, wicketkeeper behind the stump, fails to collect the ball. Chance of run out. Nothing has happened. By call by umpire. Frustration for the bowler. One more addition to total. Scoreboard now moves on to 7 for the loss of 1 wicket. This time Ashwin tried to play the reverse sweep, one of his favorite. Maybe wanted to get that one, get past that one down to deep third man region. But he's not really having any contact with the bat. 7 for the loss of 1 wicket. Raghu once again back to his bowling mark with a short run up. Captain to captain. Beautifully bowled. Perfect leg cutter there from Raghu. Magnificently bowled there by Raghu. This is a very, very dangerous delivery from Raghu. Sometimes he bowls some sharp leg cutters. He knows that Pratap made the kind of batsman he loves to shuffle across the line of the delivery. And it's very dangerous against the leg cutter of Raghu. Luckily that ball just misses the leg stump. No damage done. 7 for the loss of 1 wicket. Raghu again back to his bowling mark. Oh, magnificent again. One of the best delivery of this over. Direct it comes into play. They're going for the extra run as well. It's not required. It's not required in this situation. What could be a certain chance of run out? They got a couple of runs because of direct hit. And 2 overs completed after completion of over number 2. Chasing 46 to win this match. Mundala strikers are 9 for the loss of 1 wicket. .37 required from 36 ball. This is a kind of the final the crowd loves to see. This is a kind of battle the crowd want to see. This doesn't want to see that if the final will be of one-sided. They wanted to see the nail-biting finish in this big final. Whoever wins, it doesn't matter. But they wanted to see a good cricket. Because this is a good tournament, in fact, MPL 2022, and all we can see that the match is inching towards the nail-biting finish. 37 to get from 36 ball. Change in bowling from the commentary box end. Just the number 31. Latish brought into attack. The man who turns the match around in the semi-final. Picked up for 4 wickets in a previous match, semi-final. This is really going to be a testing time for the batsmen of strikers. If Latish bowls the same line and length, definitely he will going to create the problem for the batsman. Oh,
The problem in the sense is no problem whatsoever as far as umpire to signal the wide, and let a lot of expectation, isn't it? Sometimes the bowler have to deal with that expectation, and that's why a little bit of a feeling pressure as well. So starts with the wide. 10 for the loss of 1 wicket. Latish. Right arm delivers. This time well within the reach of the batsman, because Ashwin shuffled across the line of delivery. He wanted to get that one very fine. But again, the line is not that much of good for Latish. Again, that ball is a little bit down the leg stump. And batsman completely missed out. Second time in this over, Latish searching for the wicket. Right arm. Oh, what a delivery. This is the one delivery. This is the one delivery. He's created a lot of problem in the semi-final. The same line and length into the occasion. Even Ashwin Kumar is a very, very experienced campaigner. But this kind of line and length, this kind of pace in his bowling, I think is definitely going to be so difficult. So 10 for the loss of 1 wicket. Latish bowler, brother of Kiran bowler, bowling with the short run up. Right arm over the wicket to Ashwin. This time he got a bat. This time he's got batter Ashwin Kumar. Ashwin is so good in a sweep shot. He's a master of sweep shot. And I think it's a not change in that line, but something a change in that tactics from the batsman to get that one to his bat. I think he's just stretching his front foot towards the line of the delivery and just closing the pace of his bat, and got the direction towards a fine leg for the easy single. 11 for the loss of 1 wicket. The good contest between one good bowler against one good technical sound batsman, Pratap. Now cover point fielder. A little bit exchange in the field actually, because Kishore is one of the best fielder as far as the fielding department is concerned. He's standing at cover point now. He's going towards a short mid-wicket region. I don't know what the strategy behind this. Here is Latish. Bowls again, played at reverse sweep quite well. They're going for a quick single, and they completed quite easily in the end. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. Still a long way to go. And as far as winning this match is concerned, still they have to get another 34 runs to win this match. This time again, Ashwin Kumar pedaling that one by playing horizontal bat. And a good strategy from these two batsmen. That's what I'm talking about, the experience. I already mentioned when Ashwin Kumar walks towards the middle, I told that these two pairs definitely going to be a key for strikers if they wanted to become a champion. At the same time, Royal Army desperately wanted one of these two is very, very required, urgently required. This time, good thinking, very good thinking by the bowler, but not a good thinking there from Pratap. He thought it might be wide, but he's already made his mind to play the reverse sweep, and he's just changing the line cleverly. By call by umpire. Anyhow, they got a single for that. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. So after completion of over number 3, chasing 46 to become the champion. And still the battle is on from this batters of strikers. 14 for the loss of 1 wicket. So 30 ball remaining, 32 runs required for the victory for Royal for Mundala strikers. The match is going to be very interesting. It's going to be anybody's game. Royal Army required 1 breakthrough. Strikers required these two batsmen carry on the business. Along with the captain Ashwin Kumar, the two very experienced campaigner in the middle. Having these two batsmen in the middle, I think the captain of Royal Army never looks like he's in relaxing there.
never looks like he will going to relax. He's definitely going to implement each and every strategy. That's why Raghu himself came into ball. You know exactly the wicket, the importance of wicket, getting a wicket here for Royal Army. So bowling is final over. Royal Army wanted a wicket. Strikers wanted a partnership. Oh, it starts with the delivery, which is really punishable delivery, but the batsman not happy himself. He know exactly Pratap. And the previous match, league matches, I think he got 1-6 towards the deep backward square leg. The same and line he picked a ball. I think is against the bowling of Ashok. Attackers, Ashok of attackers, Pratap hit 1-6. The same line, but he missed it. This time he missed it completely. Drives it on, lack of placement, straight to the hands of Kishore. One of the safest pair of hands down at short mid wicket. Off stop, not a neat collection, but he able to restrict the single from these two batsmen. 15 for the loss of 1 wicket. Ball to ball run required for strikers. Raghu from the far end. Right arm over the wicket delivers. Sensible. Absolutely sensible. Watching the ball till the last moment. One of his favorite, Pratap. When he thinks that the delivery, which is very difficult to hit the ball, then he just push the ball soft and comes into play to pick the single. As scoreboard moves on to 16 for the loss of 1 wicket. Now, Raghu to Ashwin. Bowling with a short run up. Now Ashwin getting away himself from the line. Of course, before the bowler delivers the ball, he is not ready. So umpire straight away called that is a dead ball. And again the bowler backed his bowling mark. Raghu. Again playing that one delicately. Ashwin Kumar so good in that stroke. Playing the ball very late. And rotating the strikes. That was a strategy, game plan from these two batsmen, isn't it? They know that they're dealing with the final over of Raghu. They need to be very careful. If he completes this over, then they can choose one bowler from their side to get some acceleration of run rate. Raghu bomb the far end. Right arm over the wicket. Again, Pratap pushing the ball down at cow point, and they got a single for that. So completion of a little bit correction. One more run. So 18 for the loss of 1 wicket. So over number 4 in progress. 2 deliveries remaining. 18. 46 is a target. Another 28 runs required for the victory in 26 deliveries. Raghu. This time swinging his bat, but this time I think it's a ball. They're going to be a wide call by umpire. And Siraj looking that line of the delivery for the last moment, till the last moment. And got evidence enough to call that wide. With that, Texas scoreboard moves on to 19 for the loss of 1 wicket. Second wide of this over. Raghu. Right arm over the wicket delivers. This time again Ashwin nicely swept that one down to deep backward square leg behind the square. One more addition to total. 19 for the loss of 1 wicket. So 20 on the board, little correction. 20 for the loss of 1 wicket. The 5 deliveries, they got 5 runs. And little correction, 6 runs in fact, including 2 wides. And 1 dotted deliveries in this particular over. Raghu. Bowling right arm over the wicket. Oh, beautifully bowled. Perfect leg cutter in the negation. Defeats the outside edge of the bat of Pratap. Over number 4 completed. Half over completed. Half of the overs remaining in the innings of strikers. And before the next over will going to start, it's a time to ask Gopi to take over the microphone. Final time in this tournament, Gopi. And we really have had a very good tournament, isn't it? It's a great experience, even though this is the first tournament of our season, but it's the best tournament. And from MPL, once again, before I hand over microphone to you, I would like to give special thanks to the organizer for being the part of this cricket tournament as the commentators. And Gopi, 20 for the loss of 1 wicket, 26 to get from 24 deliveries. And a bit difference between run and ball is just a 2.
What do you think? Will it go into a big difference in this condition? That 2 runs, having these two recognized batsmen in the middle. What do you think? The percentage, winning percentage for both the teams in this situation, the middle stage of their innings. 50-50 सतीश, और जहां तक इन हालातों में under this condition it's going to be 50-50 at this situation. 26 to get from 24 deliveries, और पिछले मैच में 41 रन बनाने के बावजूद उस स्कोर को बचाने में सफल रहा था जो सेमीफाइनल में जो मैच खेला गया था, और वो टीम यहाँ पर भिड़ रही है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर 24 गेंदों में 26 रन जो बनाने हैं वो इन हालातों में कुछ हद तक मुश्किल साबित हो सकते हैं, लेकिन एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, क्लेवर पीस ऑफ बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त उन्हें मंजिल की ओर पहुंचा सकती है। और जहां तक रॉयल आर्मी का सवाल है, पहले 4 ओवर में उनके गेंदबाजों ने अपने क्षमता काबिलियत के अनुसार गेंदबाजी की, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रन। और जहां तक सवाल है, मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया कि डिफेंड किया जा सकता है, तो मैं कहूंगा डिफेंड किया जा सकता है अगर सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी, गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 24 to get, 22 balls remaining. The difference between run and ball is just a 2 at this situation. और गेंदबाज की गेंद, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर काफी पीछे मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड, और इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइक, और इस बार तीसरा रन भी मिल सकता है, कोई फील्डर वहां पर नहीं, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज, काफी थके मांदे नजर आते हुए, और इस बीच 2 मात्र रन मिलेगा। प्रताप और अश्विन जो कि दोनों बल्लेबाजी के आधार स्तंभ, जो कि स्ट्राइकर्स के, इस वक्त पारी की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए, बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर निभाते हुए। और जहां तक सवाल है इन दोनों बल्लेबाजों का, तो ये दोनों बल्लेबाज काफी हद तक इस वक्त थक चुके हैं, लेकिन अपनी हिम्मत उन्होंने नहीं आ रही है, और अभी भी एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए निस्संदेह ये साझेदारी रॉयल आर्मी के कप्तान के लिए सिरदर्द इस वक्त पैदा कर चुकी है, और उनके कप्तान निस्संदेह इस वक्त चिंताक्रांत है कि इस साझेदारी को किस तरह तोड़ा जाए। और उस कोशिश में, साझेदारी को तोड़ने की कोशिश में, यज्ञेश इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला, स्क्वायर रिलीज बार, थर्ड मैन की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, थ्रो पहुंचा, सिर्फ 1 मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच। 25, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन अंडर फ्लड लाइट्स। इस वक्त संघर्ष जारी है इस प्रतिष्ठित मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 का खिताब अर्जित करने के लिए। बाएं हाथ राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, इस बार स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ, बल्ले के मुंह को खोलते हुए शॉट थर्ड मैन पर प्रताप ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, 1 गेंद अभी भी बाकी, 19 रन चाहिए विजय के लिए। 20 रन और चाहिए, 20 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 19। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार स्वीप किया, पैडल स्वीप खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, सिर्फ 1 मात्र रन इस बीच मिलेगा। फील्डिंग की सजावट बेहतर सजाई है इस वक्त रॉयल आर्मी के कप्तान ने, बल्लेबाज जिधर भी स्ट्रोक खेलते हैं सिर्फ सिंगल ज्यादातर उन्हें इस वक्त प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर 27 रन बन चुके हैं, 7 रन इस ओवर में बने, 19 रन बनाने 18 गेंदों पर, 19 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा मैच बराबरी पर रुक चुका है। तो रात के 9:15 यहां पर बच चुके हैं, इट्स ऑलरेडी 9:15 इन द नाइट। और ग्रैंड फिनाले, क्लाइमैक्स इस श्रृंखला का यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ दिलचस्प रोचक मुकाबला यहां पर जारी है इस प्रतिष्ठित MPL 2022 का खिताब अर्जित करने के लिए। मुंडाला रॉयल आर्मी और मुंडाला स्ट्राइकर्स के बीच में, और यहां पर रन्स बनाने हैं 19, जबकि गेंदें बाकी हैं 18। दर्शक
रात के 9:15 हालांकि बज चुके हैं, लेकिन दर्शकों से लगभग ये मैदान भर चुका है। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट मंगलूर में, खासकर इस क्रिकेट काशी लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट उर्वा क्रिकेट मैदान यूसीजी पर कितनी जनप्रियता रखता है, पॉपुलैरिटी रखता है। और अब गेंदबाजी पर बुलाया गया है गेंदबाज रक्षित को, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अश्विन कुमार, जो कि सामना करने के लिए तैयार है। जहां तक प्रताप और अश्विन कुमार का सवाल है, इस श्रृंखला में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है। उनके इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश इस वक्त कर चुकी है। अब खिताब अर्जित करने से केवल कुछ दूर, इस वक्त एक सीढ़ी दूर कहना पड़ेगा, और यहां पर उस सीढ़ी को पार करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज प्रताप और अश्विन। और जहां तक सवाल है रॉयल आर्मी का, तो इस वक्त उन्हें इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि ये साझेदारी अब तक एक बेहतर साझेदारी जो कि निभा चुकी है। 23 रनों की साझेदारी, 23 runs already added now for the second wicket so far between these two batsmen. Slowly and steadily this partnership is now building up. ये गेंद इस बार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, थर्डमैन की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर आते हुए गेंद घने घास तले अपने रफ्तार को खोने के बाद, जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 28 विकेट के नुकसान पर 28 for the loss of 1 wicket, 18 to get, 17 balls remaining। धीरे धीरे कहना पड़ेगा मुंडाला स्ट्राइकर्स की गाड़ी जो कि बैक ऑन ट्रैक, सही पटरी पर इस वक्त आती हुई। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया विकेट कीपर ने। 18 रन 16 गेंदे, 18 टू गेट फ्रॉम 16 बॉल्स। स्टिल द मैच इज इन बैलेंस और बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है। अंडर फ्लडलाइट्स उर्वा क्रिकेट मैदान पर रन्स बनाना उतना आसान नहीं है, गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आती है। और इस बार गेंद को कनेक्ट किया है प्रताप ने और गेंद डीप, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग सेव मेड बाय द डीप मिड विकेट फील्डर। certainly that was a 6। और मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से गेंद को रोका गया था। मॉनिटर पर देखिए दिखाया जा रहा है, दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो निश्चित रूप से छक्का हो सकता था और इस छक्के को बचा चुके हैं जो फील्डर यहां पर खड़े हुए थे। वहां पर जर्सी नंबर 10 पहले वे जो फील्डर जिन्होंने इस छक्के को बचाया और अपने टीम को 5 रन बचाए, अगर ये छक्के के रूप में परिवर्तित होता तो निश्चित रूप से यहां पर लक्ष्य काफी आसान बन जाता था मुंडाला स्ट्राइकर्स के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्ड ऑफ पीस ऑफ स्टॉप made by the deep mid wicket fielder. Outstanding 25 runs partnership is now coming up between these two batsmen. ये गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट गेंद, 14 गेंदें बाकी, रन से चाहिए। ये 29 इनफैक्ट, रन चाहिए 17 और ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई लेकिन अपील को नकार दिया। लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाती हुई, 1 रन का इजाफा। 1 run added to the total, 30 for the loss of 1 wicket now। 26 runs already now added for the second wicket so far between these two batsmen, and this is turning out to be a fine partnership in Mundala strikers point of view। 6th over in progress, the equal battle is now continuing here। The pressure is now building up on both sides। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त रक्षित एक बार फिर से करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। प्रताप सामना करते हुए फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। स्वयं अपने आप से नाखुश प्रताप और इस बीच सिर्फ एकमात्र रन मिला। 31 सिर्फ 4 रन इस ओवर में गेंदबाज ने प्रदान किया। रक्षित ने एक बेहतरीन ओवर उनका समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। तो सतीश ये ओवर बेहतर रहा रॉयल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से। सिर्फ 4 रन रक्षित ने प्रदान किया। अब 12 गेंदे 15 रन, द आस्किंग रेट इज गॉन अप एग्जैक्टली 7.5 रन पर ओवर। और मैं समझता हूं एक और बेहतर ओवर अगर रॉयल आर्मी के गेंदबाज फेंकते जो इस वक्त शुरू होने जा रहा है तो निस्संदेह यहां पर मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ सकती, काफी हद तक बढ़ सकती है मुंडाला स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए।
As a better over only because of that fielder, Gopi. Otherwise, this is not a better over. It's expensive over, isn't it? What could be a certain six? Look at that effort that one fielder, Sudesh. I think it's a certain six. The timing of the jump is so important in that situation, isn't it? The saving that certain six, outstanding. And that will definitely going to lift the spirit of the other players and bowlers as well, Gopi. And because of that great effort, I think this 2 hours going to be more interesting now. 15 runs required from 12 balls, and the difference when I hand over microphone to you is 2 difference between run and ball. Now this time it's 3 difference. So that's what the Royal Army wanted to do. Each and every over they want to extend that difference at least by 1 run, 1 ball and a run. And that means the final over they wanted to take this match. Of course, 8 runs and 9 runs, which is required from final over. Definitely Royal Army has a golden opportunity to win the match. But here, Gopi, just look at the way these 2 batsmen are handling the pressure. They're very cool and calm. That shows the experience, isn't it? Playing under pressure. And that's what always I'm mentioning about Gopi. The experienced player is always going to be the one of the big weapon for any teams. And these 2 batsmen knows that if they are able to bat for another 2 overs, then they got opportunity to win this match. But I think Royal Army, they knows the importance of breaking this partnership as quick as possible. 15 to get from 12 balls, Gopi. Still this match is evenly poised because these 2 batsmen still there in the middle. Pratap as well as Ashwin Kumar. The more danger here for fielding team is that both the batsmen are settled down. The partnership, I think now it's a 25 plus runs, 27 runs partnership for the 3rd wicket. I think it's good going. And wait and see how well they will going to manage to handle the pressure now. The batsmen, 12 ball remaining and 15 runs required for the victory. This is going to be very important, Gopi, because I want to see Raghu, the captain of the side, when and how he will going to use this man, the bowler. As the man with the golden hand, man who turned the match around the previous match is none other than Latish. And this over is definitely going to be a very, very important year for Royal Army. If Latish bowls a good line and length, and certainly Royal Army will going to be a favorite of becoming the champion of this big mega final. बिल्कुल सतीश, लतीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले मैच में सेमीफाइनल में लतीश ने 2 ओवर में 4 रन प्रदान करते हुए, सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 4 बहुमूल्य सफलताओं को अर्जित किया था। हालांकि इस मैच में अपने पहले ओवर में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इस ओवर में उन्हें मौका है बाउंस बैक करने के। एक बेहतरीन ओवर के जरिए वो कम बैक करना चाहेंगे। देखते हैं क्या होता है। 12 गेंदे 15 रन चाहिए। प्रताप, पहली गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ अब मैं कहूंगा मुंडाला स्ट्राइकर्स आर नाउ बैक इन द मैच। प्रताप ने पहले ही भाप लिया था कि उन्हें रिवर्स शॉट खेलना है। जैसे ही फुल टॉस गेंद आई, शॉट थर्ड मैन फील्डर थोड़ा सा स्ट्राइटर तैनात थे विद अ ट्विस्टेड बैट। रिवर्स शॉट के जरिए इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। रिवर्स शॉट के जरिए थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ अब 11 of 11. Still they have to score for victory. और निस्संदेह, what a fantastic partnership is now progressing here between Pratap and Ashwin Kumar. और निस्संदेह अपने पूरे अनुभव का अनावरण वो यहाँ पर करते हुए अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फ्लिक किया इस वक्त शॉट फाइनल की दिशा में, तेजी के साथ फील्डर पहुंचे, थ्रो किया नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त रॉयल आर्मी के गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए। फिलहाल तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ मुंडाला स्ट्राइकर्स का, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है गेंदबाजों को रॉयल आर्मी के। और देखना यह है कि अगले गेंद पर गेंदबाज लतीश कौन सा अस्त्र यहां पर प्रयोग करते हैं। तो स्ट्राइक इस वक्त अश्विन के पास, प्रताप नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद, जो कि 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि अश्विन इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 12 रनों पर। तो ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह उनके टीम की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए। दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। लतीश तैयार, अश्विन कुमार के लिए फुल टॉस, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चुके, प्रताप रन लेना चाहते, अश्विन दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, वाइड का इशारा हो चुका है, और आखिरकार ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी टूट चुकी है।
प्रताप दौड़ पड़े थे, अश्विन शायद पहले रन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने देखा कि प्रताप उनकी ओर दौड़ कर आ रहे हैं, स्ट्राइकर एंड की ओर। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर का गेंदबाज के हाथ में। हालांकि गेंदबाज को अपने ऊपर की ओर छलांग जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट करते हुए ऊपर की ओर छलांग लगाने के बाद उन्होंने गेंद को विकेटों पर लगा दिया, गिल्लियां बेल्स चटका दिए, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर चुका। 33 रनों की साझेदारी यहां पर इस वक्त 33 रनों की साझेदारी टूट चुकी है। 33 रन्स, second wicket, fine partnership has been came to an end in the face of Ashwin Kumar after being playing a fantastic knock of 12 of 16 deliveries. Sensible knock came from him. He is backing to pavilion, and Mundala strikers lose their second wicket. It's 37 for 2. Number 4 batsman is now comes out to the middle wearing number 1 jersey at the non-striker end. रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए प्रताप वो जान चुके हैं इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट 6 से कम पर आ चुकी है। जहां तक सवाल है 9 गेंदें बाकी हैं, रन चाहिए 8, और यहां पर देखना यह है कि नए बल्लेबाज का जो आगमन हुआ है वो प्रताप का किस तरह यहां पर साथ निभाते हैं। दर्शकों की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होते हुए मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर यहां पर रुक चुका है। रनों की सख्त दरकार मुंडाला स्ट्राइकर्स के लिए, डॉट गेंद और विकेटों की दरकार इस वक्त रॉयल आर्मी के गेंदबाजों के लिए। गेंद को खेल दिया इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन का इजाफा। 39 for the loss of 2 wicket. 7 to get now. 8 balls remaining. Pratap, who is playing a sheet anchor's role for their side, back on strike. इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और लतीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हैं प्रताप के लिए, हल्के से गेंद को पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, निशाना चूका, बैकअप होता हुआ, और यहां पर 1 रन प्रताप पूर्ण कर चुके हैं। 40 for the loss of 2 wicket. 6 to get. 7 balls remaining. और जहां तक मुंडाला स्ट्राइकर्स का सवाल है, प्रताप की उपस्थिति उनके पारी के अंतिम गेंद तक उन्हें जरूरी है इस वक्त, अगर उन्हें मंजिल तक पहुंचना है तो प्रताप ये बात जानते हैं कि उनको क्रीज पर टिके रहना है, और यहां पर देखना है कि दूसरे बल्लेबाज किस तरह उनका साथ निभाते हैं। यहां पर 1 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नए बल्लेबाज नितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लतीश की ये धोखा निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच ऑफ MPL मुंडाला प्रीमियर लीग 2022 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। दर्शकों से लगभग मैदान भर चुका है, रात के 9:30 बजते हुए। इट्स ऑलमोस्ट 9:30 at night and the climax of MPL 2022 is now progressing here. और जहां तक सवाल है लतीश का, अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार नितेश के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, एंड नाउ अ डॉट बॉल बॉल, एंड नाउ 6 of 6 and the last over of the tournament is now coming up. तो रन्स बनाने थे 13, गेंदे बाकी थे 12 इस ओवर्स के शुरुआत से पहले। इस ओवर में 7 रन बने और एक विकेट भी गिरा अश्विन का, और 6 गेंदों में 6 रन बनाने हैं सतीश। और यहां पर मैं समझता हूं अभी भी दोनों टीमों के लिए समान अवकाश है यहां पर विजय के लिए। Absolutely, Gopi. The big difference in this over is that a boundary came from the bat of Pratap. When he played a first delivery, the full toss delivery, delicately played that one down to deep third man, and the 15 runs which is required, Gopi, when Latish came into attack. And that means 9 runs scored in that over. The big over, the point of view of strikers is concerned, that is a big over for strikers. And but if the big difference in this over at the same time, Gopi, dismissal of Ashwin. And dismissal of Ashwin, the new batsman just came into middle. I think the match is not completely out of the hands of Royal Army. They still got a chance here to win the match, because if the Kiran is Pratap is out of the strike, when the bowler is bowling to the new bowler, then always there is opportunity for the fielding team to bowl on or to dotted deliveries, put some pressure onto the batsman. Altogether, Gopi, the fantastic final, isn't it? Absolutely the fantastic final. The kind of a final which is the spectators want to see. The same kind of final is going on here. But they still, the match, I think it's going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फाइनल। हर कोई इस तरीके का फाइनल देखना चाहेगा, और नेल बाइटिंग फिनिश जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त मैच नेल बाइटिंग फिनिश की ओर बढ़ता हुआ। 6 गेंदे 6 रन चाहिए। तो ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज किशोर एफ स्टार्टिंग द लास्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड द बैट्समैन
is Pratap is now going to face. और देखते हैं यहाँ पर इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के अंतिम ओवर में विजय लक्ष्मी किसके पक्ष में जाती है। और जहां तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का, तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता। वन लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अब लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात, डीप कवर पॉइंट शायद मौजूद होगा, हमें यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक सवाल है 20 गज के दायरे के अंदर के फील्डिंग के नजरिए का, तो एज यूजुअल 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, शॉर्ट कवर इस वक्त मौजूद। तो 3 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। इस वक्त एक खिलाड़ी को आगे बुला लिया गया है कवर पॉइंट पर। तो एक खिलाड़ी को अंतिम क्षण में 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया, वरना निश्चित रूप से ये नो बॉल होता अगर गेंदबाजी करते 3 फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर तैनात करने के बाद। अब 4 खिलाड़ी मौजूद और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार प्रताप के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का इजाफा, 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5 of 5 नाउ। प्रताप इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज नितेश की ओर बढ़े, कुछ समझाया कि भैया आपको इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी करनी चाहिए, आपको मालूम है ना। और नितेश ने अपनी मुंडी यहां पर हिलाई, तो इसका मतलब यह है कि वो जानते हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी उन्हें बचे हुए 5 गेंदों में इस वक्त करनी चाहिए। तो यहां पर दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ। और गेंदबाज किशोर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नितेश के लिए दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, गेंद प्रताप के लिए रस्सी की मामला यहां पर, लेकिन मैं समझता हूं ही मेड इट, आई थिंक ही मेड इट। और यहां पर 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। अगर स्टंप्सों पर निशाना सही बैठता, डायरेक्ट हिट लगता, तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन यहां पर जब तक गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे और विकेट कीपर विकेट झटका है, प्रताप रन से बटोर चुके थे यहां पर बेहतरीन तरीके से। अब 4 गेंदें 4 रन। और सतीश इस वक्त दिल की धड़कनें दर्शकों की यहां पर तेज होते हुए, और मैं समझता हूं निस्संदेह वन ऑफ द बेस्ट फाइनल ऑफ दिस in this ground we are just watching here. Absolutely, and this is one more example of UCG cricket ground, isn't it? So many, if you go to the history of UCG cricket ground, there is a lot of example you can get that kind of big finals. And this match, I see Gopi, one more fantastic big final is going on. If the match will go into ended in a tie, I think it's going to be a super over. We're going to decide the champion of this MPL Mundala Premier League. And Gopi, and here I think now 4 balls remaining and 4 runs required for the victory, and there's still the opportunity for both the teams. And the opposition team wanted one dotted delivery or wicket-taking delivery, but sensible batting which is required here for strikers. Just a rotation of strike is enough for them to become the champion. Exactly, Satish. देखते हैं क्या होता है इस बीच। ये गेंद प्रताप के लिए, oh, back to the bowler की दिशा में, back to the bowler की दिशा में गेंद को ढकेला। And now 4 of 3 दर्शकों की इस वक्त आवाज गूंज यहां पर सुनाई देती हुई, सीटियों की गूंज यहां पर सुनाई देती हुई, दोनों टीमों के समर्थकों की, और मैच यहां पर रोमांचक मोड़ पर आकर रुक चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। 3 गेंदें 4 रन, 3 for tie, 4 for win and 3 deliveries now remaining। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, किशोर फील्डिंग में एक बार फिर से कुछ हद तक तब्दीली करते हुए, और यहां पर तैयार प्रताप। देखते हैं प्रताप इस गेंद पर क्या करते हैं। 4 of 3, here we go, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद प्रताप के लिए इस बार सीधे, oh brilliant, absolutely fantastic catch, this is an outstanding catch taken by the long off fielder, mid off fielder in fact, absolutely brilliant catch this time। आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए इस कैच को उन्होंने लपका अंतरराष्ट्रीय शैली में, और निस्संदेह मैं कहूंगा सतीश ये अंतरराष्ट्रीय कैच से कुछ कम नहीं है जो कैच मिड ऑफ के फील्डर ने लपका था। Absolutely, Gopi. I think it's a captain himself. I think Raghu is a man. Raghu is the fielder down at short mid off. Look at that one in replay, Gopi. It's been outstanding catch. Where the ball is landing never looks like it's very close to that fielder. Look at that one in replay. Where the fielder is standing, where the ball is landing here.
Look at that diving effort. Almost looks like ball is going to be landed. And here you go. What a magnificent. This has been outstanding and a spectacular catch, Gopi. One of the best catches we have seen in our commentary box when you're having a mic in our hand. And we are having a lot of spectacular catch. And this is the one more, Gopi. One of the best catches we have seen in our career, in our commentator career. This is one of the best catch, I want to say. Exactly, Satish. What outstanding catch taken by the mid-off-fielder. और कैच पकड़ते समय उनका संपूर्ण शरीर हवा में था और निस्संदेह इस बेहतरीन कैच की बदौलत अब मैं कहूंगा रॉयल आर्मी आर नाउ बैक इन द गेम. 4 to get, 2 deliveries to go, 3 for tie, 4 for win. Here we go. Next one from Kishore. Right arm over the wicket. Again, इस बार टिप किया. लगोल पर मौका हो सकता है. फील्डर पकड़ते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. And the tide is now totally turned. 4 of 4 at one stage they required, and now they have to get 4 of just a single delivery. This is only because of outstanding fielding effort of Royal Army, Gopi. Just I want to give 3 examples in this particular match. One is the 6 which is saved down at a deep backward square leg by one fielder, and one is outstanding catch which is taken by Raghu, and the last one is one catch which is taken by Yadnesh, I think so, who is standing at deep long on. It's not an easy, Gopi, because it's under pressure. It's not so easy, even though it looks like it's an easy catch running to front to take the catch, but it's under pressure because he knows that if he drops the catch, he need to drop the match as well. And he hold the catch and handle the pressure very well. And now it's a do or die situation here for the batsman. He need to get the boundary if they want to win the match. The 3 will going to tie the match, but the boundary is desperately required in the final over. And I think the Kishore, absolutely the magical bowling performance in the final over. But job is not yet over. One good delivery required, one big stroke required for strikers. Absolutely, Satish. अब ऐसा कहना पड़ेगा, मुंडाला स्ट्राइकर्स का भविष्य बल्लेबाज सूरज के हाथों में और मुंडाला रॉयल आर्मी का भविष्य गेंदबाज किशोर के हाथों में. और देखना यह है कि कौन से खिलाड़ी अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं. 4 of last ball. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप. दर्शकों की धड़कनें यहां पर तेज होते हुए. 3 for tie, 4 for win, and the last ball of the tournament is now coming up. Right arm over the wicket. Again, इस बार उछालना था, चूके. That's it. Mundala Royal Army becomes the champion of Mundala Premier League 2022, defeating Mundala Strikers by 3 runs in a thrilling victory. So absolutely fantastic match has been came to an end. और यहाँ पर अंतिम क्षण में रॉयल आर्मी विजय रहा सिर्फ 3 रनों से. सो निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच गेम स्टूडेंट. क्यों सतीश? What a match, Gopi. What a match we are experienced in this MPL. The kind of the final which is required, and the same kind of performance from both the teams. Winning and losing is a part of cricket, but I think both the teams, they won the heart of cricket lovers with a battle for the lifting the title of MPL. And at last, I think it's a Royal Army, the captain as a leading from the front, taken an outstanding catch of Pratap, and one magnificent save by the fielder at square leg. And Gopi, I think that 4 runs which is saved by that fielder, what could be a certain 6, and because of that 6 saved by that fielder, I think Royal Army that got opportunity to defend that runs in the final over. So altogether, it's an outstanding cricket tournament of MPL Mundala Premier League, and we are going back to presentation ceremony. Till then, we are saying goodbye from our commentary box. Thank you.
Mundala Premier League 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಂಗಳೂರು
Releases Ullal, best bowler Lakshya Ullal, man of the match Subhati Tukaram Karnal man of the series Sports World Mangalore, match ball Prasad Pujita. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆಟರ್ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಡಬದಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಳು, ಕೃಷ್ಣಕಾನ, ಪ್ರವೀಣ್, ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಹಲೋ ದಯಮದ್ದದ ಎದುರುದ ಚೇರ್ಡ್ ದಯಮದ್ದದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಂದಳು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದನೆ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂಡಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಮಾರಮ್ಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾದ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಕುತ್ಬುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಘುವೀರ್ ಬಾಬುಗೌಡರು. ಹಲೋ ಗುಂಡಗುತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ತರದಕ್ಕಾದ ಮಂಚಡಿತಿ ಮಾಯಲಿಗೆ ಮಾಯಡು ಮಲ್ದಿಪೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗೆ ಭಕ್ತಿಡು ಸುದುಬಂದು ಉರ್ವ ವೆಲ್ಸ್ಪೇಟೆ ಕೋಟದ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರದಕ್ಕಾದ ಅಂಚನೆ ಸಾನಿದೂರು ಪುನಃ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದಲೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ಯುವದಿಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಳ ಸಮಾಜದ ಪರ್ಮೆದ ಪುಗರ್ಪದ ಓಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ಯುವೇದಿಕೆ ಬಂದಲೆ ಕರಿನ 13 ವರ್ಷ 2010 ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ಬೇಗ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ದೀಪನ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ಯುವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರ 13 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಲೆ ಕರೆಯ 13 ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಚಿತ್ತಿನ ಬಡಪ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಚೌಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರದು ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆಲ್ಪುಗರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂಡಾಳ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಮುಂಡಾಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತಂದು ಇದರ ಚಿತ್ತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಂತಂದು ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಂದು ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ
ಇನಿ 15 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಗುರುಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ಅವೇತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅವಲ ಅವೇತು ಮುಂಡಾಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಚಿಂತೆ ಅದಾದ ಐನಿ ಇನಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉರ್ವದ ಗ್ರೌಂಡ್ MPL ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೇರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡನಾಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಾಯ ದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಗಳ ಸಹಾಯ ದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕಲಡ ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಎನ್ಮ ತಂಡಲಿತ್ತ ಆ ಎನ್ಮ ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂರನೇದ ದಿನ ಪಂಡ ವರ್ಮನ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಾಂಡದ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುವಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಆಕಾಶ ಬೆಲ್ಲೂರು ಗುಡ್ಪಾದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ರೆಡ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಿಟ್ಟು MPL ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನಿ ರೆಡ್ ಟೀಮುಡು ಇನಿ ಮುಂಡಾಳ ರಾಯಲ್ ಮೊಗಲು ವಿನ್ನರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಇತ್ತ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಳಿಡು ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಬ್ಬನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚ್ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಮಾದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ಜೋಗದ ಬಾಲೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಬಲೆಂದು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಳ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಗಂಡಾರಿನ ಪುಣ್ಯದ ಚಾವಡಿಡು ಕಲಕಾರಿಕನು ತೋಜಾದು ಕುಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಮೆರೆಯೊಂದು ಲಿಂಗಾದ ಮಾಯಾತಿನ ಮಹಾಮಲ ಶಕ್ತಿ ಬೊಬ್ಬು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಬ್ಬುನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚ್ಚೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಪ್ಪನಂತರು ನಮಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈಗ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಮೋಗಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಎದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಪರಂಗಪೇಟೆ ಮೇರೆ ಬಂದದ್ದು ಪೂರ್ವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಮಗೆ ಮಾದ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶುಭಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾದ ರೀತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀತಾ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲು ಬರುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಚೈತ್ರ ಡಿ ಮೇರೆ ಹೂಗೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀತಾ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವನ ಬೇರೆ ಹೂಗೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ರೆಡ್ ಅದಿತವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ದೀದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಅದಿತವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದು ಮೋಕೆಡು ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇರೆ ಹೂಗೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಉರ್ವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅರೆಲ್ಲ
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ KTC ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು BGC ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವನ ಮೇರೆ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮೇರೆ ಪೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ EOG ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶರಣ್ಯ ಮೇರೆ ಪೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಲ್ಲರು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಮೇರೆ ಪೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಗುಡ್ಮನ್ ಮಿರ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರ್ಲ EOG ಕೂಟಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಘುರಾಜ್ ಕತ್ರಿ ಮೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. EOG ಕೂಟಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿನ ಚಿತ್ತಿನ BJP ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಕೊಟ್ಟರಪಾಸ್ ಮೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೇರೆ ಕೂಗುಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿತ್ತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಉರ್ವ ನಿಶಾಂತ್ ಉರ್ವ ಮೇಲೆ ಕೂಗುಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟರಪಾಸ್ ಮಿರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ರವಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ಕೂಗುಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ EOG MPL ಟ್ರೋಫಿ నేను ನಮಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶ್ರೀಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ అయిన చిత్తిన శ్రీయుత ప్రజ్వల్ ఇని ವೇದಿಕೆ మళ్ళా ట్రోఫీతో చొందుండు అవు ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶ್ರೀಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಡು ಎದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ಕೂಗುಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿತ್ತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾಜಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಹೇಮಾನಂದ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಳೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗುಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೋಳೂರ್ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಂಧುಗಳೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅವಳ ಯುವ ಶಕ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಿದು ಇನಿ
ಮುಂಡಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಗೊಬ್ಬದ ಬಂತನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ರಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆ ಒಂದು ಆಂಡ ಐದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಚಿಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರೆ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ರಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇನಿ ಈ ಗುಬ್ಬದ ಕಾಲ ನಿಂತನಲ್ಲ ಅಂದತ ಒಂಜಿ ನೂಪುರ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತಿನ ಆವಡು ನಾಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಜಯಚಂದ್ರರು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೌಕೆಡು ಎದುಕೊರಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು ಅರು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಅರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಟ್ಟು ಜನಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಜಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಇನಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಅಖಿಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರವುದು ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕಲು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಸೇರಿನ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ಚಿಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಅವಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ರ ಪದಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಲನ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ఆయన ಜಿತನ ಅಜಿತ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ನಿಕಲ ಜೋರುಗ ಇಕ್ಕ ತಾಟಿಡು ಅಕಲನ ಅಭಿನಂದನೆ ತೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಲನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲಿಗಳ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರಗಲೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಜಿ ಸೋರ್ನರು ಅರೆ ಅಕಲಿಗೆ ರೂಪ ಕೊಡ್ತು ಅಕಲೆ ನಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದಲೆ ಎನ್ಮ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ಮ ತಂಡನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಕಲು ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತೆ ಗೌರವದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಇವು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ಟು ಏರು ಗೊಬ್ಬುದೇರ ಅಕಲಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಅಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಆ ಎನ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತದು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿಂತಿನ ಅಂಗಲಪು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆದ ಬಂದಲೆ ಎನ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ನಕಲೇನು ಇಂತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಅರು ನಿರೂಪಣೆ ಹೊಂತದು ಅಕಲಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ನಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಬೇಗಿಲ ಸುರುಕಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಂಡಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕರೈನ ಸಂಪತ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಬಂದ ರೋಷನ್ ತೊಂದೂರು ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗಳು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಡಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೋರದೊಂದಿ ತಾಟಿ ಸಾವಿರ ಬೆರಡು ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಡಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಮನೋಜ್ IOCL ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ MCC ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮುಂಡಾಳ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮನೋಜ್ IOCL ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಡಾಳ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ನೇತ ಮಾಲಕರಾದ ನಿತಿನ್ ಉರ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ಉರ್ವಾ ಮುಂಡಾಳ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕರಾದ ಉಮಾನಾಥ್ ಅಮೀನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ದಂಡಲ್ಕಾಡ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಡಾಳ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮುಂಡಾಳ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚನ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಅಂಗಡಿಗುಂಟೆ ಮಗಳು ಬಂದಿದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಾಳ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ KC ರೋಡ್ ತಲಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಬೋಳೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ KC ರೋಡ್ ತಲಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಬೋಳೂರ್
Mundala. Mundala Lions ನೇತ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂಪತ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂದ ನವೀನ್ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದ ನವೀನ್ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಪಚ್ಚಡಿ ಮುಂಡಾಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Telak. Pandai. Cepat.